go right up till the Ram temple, and we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है। दिस इज फ्री सर्विस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ राइड till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January, when the temple opens for public viewing. Ahead of Pran Pratishtha in Ayodhya, the demand of Ram Nami Gamcha and stole have gone up. Right now I'm at a shop on Rampad. This shop belongs to Pandeyji. In fact, these gamchas with Ram's name written on it all over, and the stoles are very much in demand and are in fashion in Ayodhya. In fact, not just in Ayodhya, in the entire country, but in Ayodhya there is a huge demand, because all Ram Bhakts want to wear it. And it's kind of a trend here in Ayodhya to wear it and get a photo clicked or a selfie clicked outside Ram Lalla's premises, मंदिर premises. I'm being joined by Pandeyji. Pandeyji, बताइए कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? कम से कम हम तीसरी पीढ़ी है इस दुकान की। दुकान की तीसरी पीढ़ी। तो ये गमछे की कैसे डिमांड ऊपर गई है? डिमांड ये रामनामी बिकने का, क्योंकि प्रतिष्ठा हो रही तो उससे ज्यादा डिमांड और बढ़ गए हैं। हाँ। इस समय पहले भी थी, लेकिन अब जैसे उससे ज्यादा काफी ज्यादा हो गई है। अब ज्यादा हो गए, क्योंकि अब एक ट्रेंड भी बन गया है कि इसको डाल के फोटो खिंचानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आजकल का फैशन बन गया। फैशन हो गया, इंस्टाग्राम पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना है। तो क्या कॉस्ट आती है इस नॉर्मल 50 रुपए के सेल होती है। ये 50 रुपए की सेल होती है। और क्या इसमें अलग अलग रेंज है? वैरायटी आती है, सिंथेटिक है ये सिंथेटिक है, कॉटन होता, मिक्स होता है। अच्छा, QR कोड जो है ये पूरे अयोध्या में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट यू विल फाइंड द UPI in every shop here in Ayodhya. I mean, that is something which is really exciting to see, because you won't find any difficulty when you want to pay money. If you're buying something, you want to pay money. That is a relief. Well, ahead of Pran Pratishtha in Ayodhya, there is also an increase in demand of Ramcharitmanas, Valmiki, Ramayan, and various other books that Geeta Press publishes. Right now I am at Trivedi bookstore, which is right opposite to the Kotwali in Ayodhya. बताया जा रहा है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा एक माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा और लोग आ रहे हैं, तब से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आसपास के जिलों में भी सप्लाई करते हैं। क्या कुछ बता सकते हैं इस बारे में? सर, जो बाहर से जो भक्त आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि लोगों तक रामचरितमानस पहुंचे, तो वो आ रहे हैं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और डिमांड इतनी हाई हो गई है कि गीता प्रेस में जो है शॉर्टेज हो गई है रामचरितमानस की। हमारे जो है लगभग 3 महीने में हम लोगों ने 3 ट्रक रामचरितमानस बेची है। 3 महीने में 3 ट्रक रामचरितमानस बेच दी है। ये मतलब कितनी कॉपीज हुई? लगभग ये मान के चलिए ये नियर अबाउट 60,000 के करीब। 60,000 कॉपीज सिर्फ त्रिवेदी बुक स्टोर ने बेची हैं अयोध्या और आसपास के जिलों में। इनका होलसेल का भी काम है और रिटेल का भी काम है। जी, दोनों काम है हमारा। और हमारे जो है ऑर्डर लगे ही हुए हैं, लेकिन वो जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी डिमांड आ रही है। I must say, सिद्धार्थ एंड शोमिल, आप लोग को यहाँ ग्राउंड पर ये गाना अच्छा लगा? नमस्ते। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले तो जिस तरह से आपने वहां पल पल में, युग युग में, कण कण में राम गाया है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, एंड देन फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये राम सिया राम आपके जहन में आया कैसे? Well, first of all, Anand, it's such an honor and privilege to do something like this. जब इतना हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है अपने देश में,
तो हमें बस यही करना था कि वी वांटेड टू क्रिएट अ सॉन्ग जो लिटरली हर घर में बजे, एंड उसमें यू गो इनटू अ ट्रांस ऑफ राम, एंड दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट. आई जस्ट सिंग 2 लाइंस टू स्टार्ट ऑफ. पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम. प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम. क्या बात है सौमिल, एक बात बताइए, हु थॉट अबाउट दिस हुक लाइन, प्रणाम सिया राम, बोलो राम सिया राम. अक्षत गुप्ता भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लिरिसिस्ट, लेकिन ये मीटर किसने पकड़ा? तो मैं और सिद्धार्थ जब कंपोज कर रहे थे, वी जस्ट थॉट इट विल बी ग्रेट टू स्टार्ट द सॉन्ग ऑफ विद अ चांट. जैसे सिद्धार्थ ने कहा, एक ऐसा चांट जो एक गाते गाते सुनते सुनते आपको ट्रांस में लेके जाए. तो फिर वी जैम्ड ऑन सम आइडियाज, और हमको लगा एक्चुअली अक्षत भाई जिन्होंने गाना लिखा है, उनको एक वॉइस नोट भेजा था हम लोग ने, तभी प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण नहीं सोचा था. हम लोग ने खाली उनको ऐसे बोला था, राम सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे समथिंग लाइक अ चांट. तो देन वी सेड प्लीज राइट समथिंग दैट फिट्स एप्टली, एंड ही हैज रिटन इट सो ब्यूटीफुली. तो बहुत बहुत मजा आया इस पे काम करके. श्रीनिधि घटटे हमारे साथ हैं, लेकिन अक्षत गुप्ता जी वहां हमारे साथ है. नमस्ते, प्रणाम अक्षत जी. क्या गीत के बोल लिखे हैं आपने? अपने अंदाज में हमें सुना दीजिए. ये लाइन से आया ये तो बताइए कि हो रहा है हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला. देखिए, जो मन से निकला वो सीधे सीधे आप तक पहुंचा है. ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि इस पे कुछ ड्रामेटिक करने की जरूरत नहीं है. इसलिए नहीं क्योंकि ये इस बात से हम लोग अंदर से सच में खुश और प्रफुल्लित हैं कि राम लल्ला लौट रहे हैं. तो हो रहा है ये हल्ला, लौटे हैं राम लल्ला. ये बिल्कुल हर घर में जो बात चल रही थी उसको शब्दों में और सिद्धार्थ भाई और सौमिल भाई के मीटर पे बिठाने का कोशिश किया हूँ. वो प्रणाम सिया राम करे विश्व कल्याण, तो हम लगातार बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और राम सबका कल्याण करते हैं. तो ऐसा ही है बस. बहुत ही सुंदर बोल लिखे हैं आपने. और श्रीनिधि, आपने क्या एंट्री मारी है इस दिन के इंतजार में से लेकर, जरा वो 2 लाइनें सुना दें प्लीज. इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई, आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है. गान गाए भक्त हनुमान. ये तो मेरे को लिरिक्स ही याद हो गए. मैं तो चाहता हूं कि सब लोग इस गीत को सुने, इस पर झूमे, नाचे, गाएं. सौमिल और सिद्धार्थ, कुछ आखिरी आप कुछ कहना चाहिए जी. आपका कंट्रीब्यूशन जो रहा है टू क्रिएट दिस सॉन्ग, योर कंटिन्यूस एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट हैज बीन वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस वाज पॉसिबल. और वी, सौमिल एंड आई बोथ, वी आर सो थैंकफुल दैट यू गॉट अस ऑन बोर्ड फॉर दिस. हमारे लिए दिस टू डू समथिंग, टू मेक अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू सच अ हिस्टोरिक डे इन आवर कंट्री, वी रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये करना, ये गाना बनाना. Well, a saffron tide has washed over Ayodhya, anticipation brewing for a historic moment. CNN News 18's Anand Narsiman gets you a virtual tour of Ram Nagri, Ayodhya. Let's take a look. इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब. सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन. नमस्ते. नमस्ते. देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं. देखिए, वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय. जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा.
अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहाँ नीचे नहीं, वहाँ ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूँ, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद हैं और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहां जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहाँ आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहाँ पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहाँ। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहाँ पहुंचे हैं? अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं
जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहाँ पहुंचे आप? मैं और मेरा ये लघु पुष्पक जी उड़कर आ चुके हैं श्री अयोध्या के आसमान में उड़ रहे हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार बेहतरीन तकनीक के प्रयोग से लघु पुष्पक हमें अयोध्या जी के दर्शन करा रहा है। ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं घाटों का एक पूरी श्रृंखला आप देख रहे हैं, वो राम की पैड़ी है। बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है, अद्भुत, वाह। सरयू जी के तट पर बनी ये पौड़ी शाम को और भी खूबसूरत हो जाती है। लाइट्स की चकाचौंध से एक अलग सी भव्यता दे देती है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे। ये देखिए, और फिर राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आस से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए भी आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण जैसा सम्मान और उसी के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए और यहाँ सरयू जी में डुबकी जरूर लगाएं। As we build up to the mega 22nd January event, but there's more that Ayodhya is in fact looking forward to, not just this one grand day, but the story that will be told many months and many years later. The story of Vikas as well as Vishwas that Prime Minister Narendra Modi has been speaking about. A few pilgrims have come here from as far as Fiji. What brings you to Ayodhya? Of course, Ram. Who else will bring us to Ayodhya? And we are very excited. And my wife and myself are here in Ayodhya ji, and we are very emotionally charged for this occasion. You come here at a time when the whole world is looking at Ayodhya. You're staying in Fiji. I mean, do you think Ram and his principles have anything to in a way appeal to people across the world? Because yesterday the Prime Minister released a book of stamps which spoke about Ram's impact across the world. Prime Minister Modi ji has given so many insights on Ramayana, and of course Goswami Tulsidas ji has written Ramcharitmanas in such an easy way that we in Fiji leave alone the rest of the world. We follow Ramcharitmanas and we say Maryada Purushottam Bhagwan Shri Ram, and उनके आदर्शों को हम सदैव पालन करते हैं, चाहे वो एक आदर्श बेटा हो, पुरुष हो, पति हो, राजा हो, जो भी हो। देखिए 22 तारीख को तो दर्शन प्रधानमंत्री के जाने का शुरू होंगे, पर 25 तारीख तक बंद है। आप कितने दिन तक रुकेंगे यहाँ पे दर्शन के लिए? अब अयोध्या आए हैं तो अब राम ही जाने, दर्शन तो करना ही है। Let me just show you that these are these vehicles that have been deployed into service, of course supported by the state administration. These vehicles are completely, electricity powered. Essentially it tells you the message as far as sustainability is concerned, tells you the message of having, green energy around as well. You're with me over here. You started this brand, you started this promotion. First tell me a little bit about your brand. So the brand is called MyV Plus. We are a Delhi NCR based startup. We started last year. We have about over 100 cars running in Delhi. So we wanted to be a part of the Ayodhya story. So we got in the EV cabs here. There are 15 cabs already running around the city, and the fleet is going to go up to 50 by the first week of February. And we want to get to about 200 cars by the end of March. Ayodhya is going to be a huge destination to watch out for. Is that your plan? Is that your larger plan? Because everybody speaks about not only a cost-effective means of travel, but something which is also contributed towards the cause of the environment. That's right, because it is sustainable. There's no emissions in the environment. It's always good for the people who are living here also, because as you know, 8 out of 10 most polluted cities in the world are presently in India. So we need to do something for our country. We need to do something for all the upcoming cities. So we want to be a part of the Ayodhya story. Sir, you have brought in Bhishma in the story of Ram. What is Bhishma all about? Bhishma is an acronym. This is Bharat Health Initiative for Sahyog, Hit and Maitri. So it was initially envisaged for us to help all our neighboring countries as per the declaration by Prime Minister of our India, Shri Narendra Modi ji. But now, once this whole project is developed, we have realized this can be used all over the country, in our own country, for multiple situations
the present one which we have deployed is for managing in the case of disaster. We are focused on crowd situations like stampede or some blast injuries and bullet injuries. So that is what we have deployed, but it has many versions, different versions for different situations. This is a mobile unit, a mobile hospital of sorts that everybody's been speaking about. What are the facilities that are available? Should anybody suffer a heart attack, do you have facilities to treat them? Should somebody need an ECG urgently, would that be available? Yes, ECGs are there. We have monitors, we have ventilators, we have multi-parameter monitors, we have ECG machines, we have defibrillators. All these things which are to save life. The medicines as well as the equipments, so that the patients are stabilized, and once stabilized, always this patient can be sent to a tertiary care or secondary care hospital. Well, a new story of Vikas and Vishwas dawns in Ayodhya. Will this ceremony mark a new chapter in the history of the holy city? We'll find out together here only on CNN News 18. But before we conclude, here is the News 18's anthem Pranam Siya Ram. Stay informed and stay tuned. Thanks for watching. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। जय भरी है। कहां आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद यह मंदिर निर्मित हुआ है और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहां पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहां। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहां पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहां पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहां 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहां पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? प्रभु श्री राम का मंदिर बरसों का संघर्ष, करोड़ों की आस्था के संगम और महान संयोग से मूर्त रूप ले रहा है। भव्य और दिव्य अयोध्या के पुनर्निर्माण का प्राण और उसकी आत्मा प्रभु श्री राम का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर अपनी अद्भुत शिल्पकारी के साथ धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हजारों के कुशल हाथ, करोड़ों की आस्था इसकी छटा निखार रही है। अयोध्या फिर से धन्य हो रही है। फिर से राम राज्य की कल्पना लोगों को साकार होती दिख रही है। नारे लग रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका एक और लंबा वनवास समाप्त होगा। अयोध्या की जमीन धन्य है, ये भूमि धन्य है, आकाश धन्य है। इस खूबसूरत नज़ारे के हम और आप साक्षी बनेंगे। हम लघु पुष्पक विमान में सवार है और आप अयोध्या धाम के दर्शन इस आखिरी पड़ाव में हैं। देखिए, जहां आपको मंदिर पूर्ण रूप में दिख रहा है, भव्य दिव्य राम मंदिर। प्रभु राम का मंदिर जब बनेगा तब अपने पूर्ण रूप में ऐसा ही दिखेगा दोस्तों। बस थोड़ा सा समय और बाकी है। भव्य मंदिर यहीं अपने पूर्ण स्वरूप में करोड़ों की भक्ति को राम के नाम से सराबोर करेगा। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब।
सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए, वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहां बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहां पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को यह भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा Good morning viewers, hello and welcome to the morning news show and the special coverage as the holy city of Ayodhya prepares to celebrate the historic event of 22nd January. I'm Koina Sharma and you are watching CNN News 18. Well, Ayodhya vibrates with faith and anticipation. Let's dive into the heart of his historic event. Now, before the Pran Pratishtha ceremony with golden bow and arrow, Ram Lalla's first complete look has now been revealed. Today, following the purification of the temple's sanctum sanctorum with the holy water of Saryu River, Vastu Peace and Annadivas rituals will be performed. Now, the original idols of Ram, Lalla, Virajman and his brothers will be installed in front of the new idol inside the Garbhagriha. Now, on Monday, a floral ceremony is scheduled at the newly built Ram temple. Uttar Pradesh is formulating a 6-month plan for the post-January 22nd period, anticipating a significant influx of daily pilgrims to Ayodhya. All ministers of Uttar Pradesh have now been directed to convene at the Ram temple after 1st February. Now, reporters have been on the ground capturing the essence of this entire momentous occasion, from the memories of the past to the excitement building up. Let's take a look. So behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी।
तो ये free सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them. In fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January, when the temple opens for public viewing. Ahead of Pran Pratishtha in Ayodhya, the demand of Ram Nami Gamcha and stole have gone up. Right now I'm at a shop on Rampad. This shop belongs to Pandeyji. In fact, these gamchas with Ram's name written on it all over, and the stoles are very much in demand and are in fashion in Ayodhya. In fact, not just in Ayodhya, in the entire country, but in Ayodhya there is a huge demand, because all Ram Bhakts want to wear it, and it's kind of a trend here in Ayodhya to wear it and get a photo clicked or a selfie clicked outside Ram Lalla's premises, Mandir premises. I'm being joined by Pandey ji. Pandey ji, बताइए कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? कम से कम हम तीसरी पीढ़ी है इस दुकान की। दुकान की तीसरी पीढ़ी। तो ये गमछे की कैसे डिमांड ऊपर गई है? डिमांड ये रामनामी बिकने का, क्योंकि प्रतिष्ठा हो रही तो उससे ज्यादा डिमांड और बढ़ गए हैं। इस समय पहले भी थी, लेकिन अब जैसे उससे ज्यादा काफी ज्यादा हो गई है। अब ज्यादा हो गई, क्योंकि अब ये एक ट्रेंड भी बन गया है कि इसको डाल के फोटो खिंचानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आजकल का फैशन बन गया। फैशन हो गया, इंस्टाग्राम पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना है। तो क्या कॉस्ट आती है इस ये नॉर्मल 50 रुपए के सेल होती है। ये 50 रुपए की सेल होती है। और क्या इसमें अलग अलग रेंज है? वैरायटी आती है, सिंथेटिक है ये सिंथेटिक है, कॉटन होता, मिक्स होता है। अच्छा, QR कोड जो है ये पूरे अयोध्या में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट यू विल फाइंड द UPI in every shop here in Ayodhya. I mean, that is something which is really exciting to see, because you won't find any difficulty when you want to pay money. If you're buying something, you want to pay money. That is a relief. Well, ahead of Pran Pratishtha in Ayodhya, there is also an increase in demand of Ramcharitmanas, Valmiki, Ramayan, and various other books that Geeta Press publishes. Right now, I am at Trivedi Bookstore, which is right opposite to the Kotwali in Ayodhya. बताया जा रहा है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा का पूरा एक माहौल है, प्राण प्रतिष्ठा और लोग आ रहे हैं, तब से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आसपास के जिलों में भी सप्लाई करते हैं। क्या कुछ बता सकते हैं इस बारे में? सर, जो बाहर से जो भक्त आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि लोगों तक रामचरितमानस पहुंचे, तो वो आ रहे हैं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और डिमांड इतनी हाई हो गई है कि गीता प्रेस में जो है शॉर्टेज हो गई है रामचरितमानस की। हमारे जो है लगभग 3 महीने में हम लोगों ने 3 ट्रक रामचरितमानस बेची है। 3 महीने में 3 ट्रक रामचरितमानस बेच दी है। ये मतलब कितनी कॉपीज हुई? लगभग ये मान के चलिए ये नियर अबाउट 60,000 के करीब। 60,000 कॉपीज सिर्फ त्रिवेदी बुक स्टोर ने बेची हैं अयोध्या और आसपास के जिलों में। इनका होलसेल का भी काम है और रिटेल का भी काम है? जी, दोनों काम है हमारा। और हमारे जो है ऑर्डर लगे ही हुए हैं, लेकिन वो जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट भी डिमांड आ रही है। I must say, सिद्धार्थ एंड शोमिल, आप लोग को यहाँ ग्राउंड पर ये गाना अच्छा लगा? नमस्ते। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले तो जिस तरह से आपने वहां पल पल में, युग युग में, कण कण में राम गाया है, लेट्स स्टार्ट विद दैट, एंड देन फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये राम सिया राम आपके जहन में आया कैसे? Well, first of all, Anand, it's such an honor and privilege to do something like this. जब इतना हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है अपने देश में, तो हमें बस यही करना था कि we wanted to create a song जो लिटरली हर घर में बजे, एंड उसमें you go into a trance of Ram, and that was the thought behind it. I'll just sing 2 lines to start off. पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम।
क्या बात है सौमिल, एक बात बताइए, हु थॉट अबाउट दिस हुक लाइन, प्रणाम सिया राम, बोलो राम सिया राम। अक्षत गुप्ता अभी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लिरिसिस्ट, लेकिन ये मीटर किसने पकड़ा? तो मैं और सिद्धार्थ जब कंपोज कर रहे थे, वी जस्ट थॉट इट विल बी ग्रेट टू स्टार्ट द सॉन्ग ऑफ विद अ चांट। जैसे सिद्धार्थ ने कहा, एक ऐसा चांट जो गाते गाते सुनते सुनते आपको ट्रांस में लेके जाए। तो फिर वी जैम्ड ऑन सम आइडियाज और हमको लगा एक्चुअली अक्षत भाई जिन्होंने गाना लिखा है उनको एक वॉइस नोट भेजा था हम लोग ने, तभी प्रणाम सिया राम किया विश्व कल्याण नहीं सोचा था। हम लोग ने खाली उनको ऐसे बोला था, राम सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे समथिंग लाइक अ चांट। तो देन वी सेड प्लीज राइट समथिंग दैट फिट्स एप्टली, एंड ही हैज रिटन इट सो ब्यूटीफुली। तो बहुत बहुत मजा आया इस पे काम करके। श्रीनिधि घटटे हमारे साथ हैं, लेकिन अक्षत गुप्ता जी वहां हमारे साथ है। नमस्ते, प्रणाम अक्षत जी। क्या गीत के बोल लिखे हैं आपने? अपने अंदाज में हमें सुना दीजिए। तो ये लाइन से आए ये तो बताइए कि हो रहा है हल्ला, बैठेंगे राम लल्ला। देखिए, जो मन से निकला वो सीधे सीधे आप तक पहुंचा है। ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि इस पे कुछ ड्रामेटिक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि ये इस बात से हम लोग अंदर से सच में खुश और प्रफुल्लित हैं कि राम लल्ला लौट रहे हैं। तो हो रहा है ये हल्ला, लौटे हैं राम लल्ला। ये बिल्कुल हर घर में जो बात चल रही थी उसको शब्दों में और सिद्धार्थ भाई और सौमिल भाई के मीटर पे बिठाने का कोशिश किया हूँ। वो प्रणाम सिया राम करे विश्व कल्याण, तो हम लगातार बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और राम सबका कल्याण करते हैं। तो ऐसा ही है बस बहुत ही सुंदर बोल लिखे हैं आपने। और श्रीनिधि, आपने क्या एंट्री मारी है इस दिन के इंतजार में से लेकर, जरा वो 2 लाइनें सुना दें प्लीज। इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई, आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। गान गाए भक्त हनुमान, ये तो मेरे को लिरिक्स ही याद हो गए। मैं तो चाहता हूं कि सब लोग इस गीत को सुने, इस पर झूमे, नाचे, गाएं। सौमिल और सिद्धार्थ, कुछ आखिरी आप कुछ कहना चाहिए जी? आपका कंट्रीब्यूशन जो रहा है टू क्रिएट दिस सॉन्ग, योर कंटिन्यूस एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट हैज बीन वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई दिस वाज पॉसिबल। और वी सौमिल एंड आई बोथ वी आर सो थैंकफुल दैट यू गॉट अस ऑन बोर्ड फॉर दिस। हमारे लिए दिस टू डू समथिंग, टू मेक अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू सच अ हिस्टोरिक डे इन आवर कंट्री, वी रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ये करना, ये गाना बनाना। Well, a saffron tide has washed over Ayodhya, anticipation brewing for a historic moment. CNN News 18's Anand Narsiman gets you a virtual tour of Ram Nagri, Ayodhya. Let's take a look. इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए, वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। अब मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं
जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहाँ नीचे नहीं, वहाँ ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूँ, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद है और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहाँ लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं? देखिए पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहाँ आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दें। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दें, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहाँ पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहाँ। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहाँ पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहाँ पहुंचे आप? मैं और मेरा ये लघु पुष्पक जी उड़कर आ चुके हैं श्री अयोध्या के आसमान में उड़ रहे हैं। टीवी के इतिहास में पहली बार बेहतरीन तकनीक के प्रयोग से लघु पुष्पक हमें अयोध्या जी के दर्शन करा रहा है। ये नीचे ये जो आप देख रहे हैं घाटों का एक पूरी श्रृंखला आप देख रहे हैं, वो राम की पैड़ी है। बहुत खूबसूरत, क्या दृश्य है, अद्भुत, वाह। सरयू जी के तट पर बनी ये पौड़ी शाम को और भी खूबसूरत हो जाती है। लाइट्स की चकाचौंध से एक अलग सी भव्यता दे देती है।
श्रद्धालुओं के लिए यहाँ स्नान करना एक अलग आनंद है। कहा जाता है कि प्रभु राम इसी रास्ते से चलकर पवित्र सरयू में स्नान करने आते थे। ये देखिए, और फिर राम की पौड़ी को लेकर एक पौराणिक कथा भी बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार जब लक्ष्मण जी ने सभी तीर्थों में दर्शन करने का मन बनाया तो श्री राम ने अयोध्या में सरयू किनारे तट पर खड़े होकर कहा कि जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व इस स्थल पर सरयू में स्नान करेगा उसे समस्त तीर्थ में दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धालु इसी आस से यहाँ शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए भी आते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण जैसा सम्मान और उसी के समान पुण्य की प्राप्ति हो। तो अगर अयोध्या धाम आए तो राम की पौड़ी जरूर आए और यहाँ सरयू जी में डुबकी जरूर लगाएं। As we build up to the mega 22nd January event, but there's more that Ayodhya is in fact looking forward to, not just this one grand day, but the story that will be told many, many months and many, many years later. The story of Vikas as well as Vishwas that Prime Minister Narendra Modi has been speaking about. A few pilgrims have come here from as far as Fiji. What brings you to Ayodhya? Of course, Ram, but who else will bring us to Ayodhya? And we are very excited. And my wife and myself are here in Ayodhya ji, and we are very, very emotionally charged for this occasion. You come here at a time when the whole world is looking at Ayodhya. You're staying in Fiji. I mean, do you think Ram and his principles have anything to in a way appeal to people across the world? Because yesterday the Prime Minister released a book of stamps which spoke about Ram's impact across the world. Prime Minister Modi ji has given so many insights on Ramayana, and of course Goswami Tulsidas ji has written Ramcharitmanas in such an easy way that we in Fiji, leave alone the rest of the world, we follow Ramcharitmanas and we say Maryada Purushottam Bhagwan Shri Ram, and उनके आदर्शों को हम सदैव पालन करते हैं, चाहे वो एक आदर्श बेटा हो, पुरुष हो, पति हो, राजा हो, जो भी हो। देखिए 22 तारीख को तो दर्शन प्रधानमंत्री के जाने का शुरू होंगे, पर 25 तारीख तक बंद है। आप कितने दिन तक रुकेंगे यहाँ पे दर्शन के लिए? अब अयोध्या आए हैं तो अब राम ही जाने, दर्शन तो करना ही है। Let me just show you that these are these vehicles that have been deployed into service, of course supported by the state administration. These vehicles are completely, electricity powered. Essentially tells you the message as far as sustainability is concerned, tells you the message of having, green energy around as well. You're with me over here. You started this brand, you started this promotion. First, tell me a little bit about your brand. So the brand is called MyV+. We are a Delhi NCR based startup. We started last year. We have about over 100 cars running in Delhi. So we wanted to be a part of the Ayodhya story. So we got in the EV cabs here. There are 15 cabs already running around the city, and the fleet is going to go up to 50 by the first week of February. And we want to get to about 200 cars by the end of March. Ayodhya is going to be a huge destination to watch out for. Is that your plan? Is that your larger plan? Because everybody speaks about not only a cost-effective means of travel, but something which is also contributed towards the cause of the environment. That's right, because it is sustainable. There's no emissions in the environment. It's always good for the people who are living here also, because as you know, 8 out of 10 most polluted cities in the world are presently in India. So we need to do something for our country. We need to do something for all the upcoming cities. So we want to be a part of the Ayodhya story. Sir, you have brought in Bhishma in the story of Ram. What is Bhishma all about? Bhishma is an acronym. This is Bharat Health Initiative for Sahyog, Hit and Maitri. So it was initially envisaged for us to help all our neighboring countries as per the declaration by Prime Minister of our India, Shri Narendra Modi ji. But now, once this whole project is developed, we have realized this can be used all over in our own country for multiple situations. The present one which we have deployed is for managing in the case of disaster. We are focused on crowd situations like stampede or some blast injuries and bullet injuries. So that is what we have deployed, but it has many versions. Different versions for different situations. This is a mobile unit, a mobile hospital of sorts that everybody's been speaking about. What are the facilities that are available? Should anybody suffer a heart attack, do you have facilities to treat them? Should somebody need an ECG urgently, would that be available? Yes, ECGs are there. We have monitors, we have ventilators,
we have multi-parameter monitors, we have ECG machines, we have defibrillators, all these things which are to save life, the medicines as well as the equipments, so that the patients are stabilized, and once stabilized, always this patient can be sent to a tertiary care or secondary care hospital. Well, a new story of Vikas and Vishwas dawns in Ayodhya. Will this ceremony mark a new chapter in the history of the holy city? We'll find out together here only on CNN News 18. But before we conclude, here is the News 18's anthem Pranam Siya Ram. Stay informed and stay tuned. Thanks for watching. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम सिया राम। मेरे सहयोगी आनंद कैसे करेंगे यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा। पूछा आपको धीरे धीरे यहाँ आना है, क्योंकि हम आपको वहाँ नीचे नहीं, वहाँ ऊपर देखना है, क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद है, और जब विमान के अंदर मौजूद है तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहां जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है, और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहां आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे, और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है, और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहाँ पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहाँ, साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर? सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप?
प्रभु श्री राम का मंदिर बरसों का संघर्ष, करोड़ों की आस्था के संगम और महान संयोग से मूर्त रूप ले रहा है। भव्य और दिव्य अयोध्या के पुनर्निर्माण का प्राण और उसकी आत्मा प्रभु श्री राम का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर अपनी अद्भुत शिल्पकारी के साथ धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हजारों के कुशल हाथ, करोड़ों की आस्था इसकी छटा निखार रही है। अयोध्या फिर से धन्य हो रही है। फिर से राम राज्य की कल्पना लोगों को साकार होती दिख रही है। नारे लग रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका एक और लंबा वनवास समाप्त होगा। अयोध्या की जमीन धन्य है, ये भूमि धन्य है, आकाश धन्य है। इस खूबसूरत नज़ारे के हम और आप साक्षी बनेंगे। हम लघु पुष्पक विमान में सवार है और आप अयोध्या धाम के दर्शन इस आखिरी पड़ाव में हैं। देखिए, जहां आपको मंदिर पूर्ण रूप में दिख रहा है, भव्य दिव्य राम मंदिर। प्रभु राम का मंदिर जब बनेगा तब अपने पूर्ण रूप में ऐसा ही दिखेगा दोस्तों। बस थोड़ा सा समय और बाकी है। भव्य मंदिर यहीं अपने पूर्ण स्वरूप में करोड़ों की भक्ति को राम के नाम से सराबोर करेगा। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए, वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम Good morning viewers, hello and welcome to our special coverage as the ancient city of Ayodhya prepares for a season of reawakening ahead of the January 22nd ceremony. I'm Koina Sharma and you are watching CNN News 18. Before the Pran Pratishtha ceremony with golden bow and arrow, Ram Lalla's first complete look has now been revealed. Today, following the purification of the temple's sanctum sanctorum with the holy water of Saryu River, Vastu Peace and Annadivas rituals will be performed. Now, the original idols of Ram Lalla Virajman and his brothers will be installed in front of the new idol inside the Garbhagriha. On Monday, a floral ceremony is scheduled at the newly built Ram temple. Now, Uttar Pradesh's government is formulating a 6-month plan for the post-January 22nd period, anticipating a significant influx of daily pilgrims to Ayodhya. All ministers of Uttar Pradesh have now been directed to convene at the Ram temple after 1st February. Our reporters have been on the ground capturing the sense of momentous occasion from the memories of the past to the excitement building up. Let's take a look. 18's Aman Sharma talks to. This is the house where the Kothari brothers, Ram and Sharat Kothari, were staying in 1990 when police opened fire just outside this house and both of them were killed on that day. That is why this entire street is known as the Shaheed Gali of Ayodhya. This is just near the Digambara Khada. उस दिन क्या हुआ था, क्या आपकी याद है उस दिन के बारे में, और क्या आप वो एक बहुत ही दुखद मेमोरी अभी भी है लोगों में यहाँ पे? जी हाँ, वो काले अंग्रेजों की कहानी थी। ये काले डायर ने जो किया वो उससे 10 गुना अधिक किया जी। क्योंकि 2 नवंबर को तो सारे राम भक्त इस तिराहे से और उस चौराहे तक, तब ये तिराहा था, अब योगी जी ने थोड़ा तोड़ मोड़ करके चौराहा कर दिया, उनकी कृपा से चौराहा हो गया। तो सारे राम भक्त बैठे थे, 2,500-3 हजार लोगों की भीड़ रही होगी, और बिल्कुल यज्ञ जपा यज्ञ अस्मि, तो जपी कर रहे थे,
जय श्री राम चल रहा था। क्यों कर रहे थे ये? क्योंकि 30 तारीख को पुलिस से एक समझौता हो गया था कि गोली नहीं चलाएंगे। तो नारे भी लगते थे, इनसे नहीं लड़ाई है, पुलिस हमारी भाई है। और फिर पुलिस ने दिखाया भी ऐसा, जब कार सेवक उनका पैर छूते थे तो पुलिस आगे खिसक जाती थी, बढ़ने नहीं, बैठ बैठ के खिसकते थे। वो चौराहे से यहाँ पुलिस थी ना, तो खिसका ले गए वहाँ तक। और ये केवल दर्शनार्थी थे, दर्शन करने ही जाना चाहते थे राम भूमि के। और राम लला के विराजमान के जो प्रकटे थे उस समय, जब खुदाई होने लगी तो अपने आप ही प्रकट हो गए। वो मुस्लिम वहाँ पर जो पहरे चौकीदार था उसने भी बताया। शंकरशनाचार्य जी यहाँ के महंत थे, वो लेकर के गए थे, गईती हुई थी खोदने के लिए। उनकी FIR भी थी, लेकिन उनके पास ईयन नहीं होता जी, आना नहीं होता, तो उन्होंने शंकर शरण FIR गलत हो गई जी। अब ये प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को जो हो रहा है, वो जो दुखद हादसा था, वो उस पे कुछ मरहम लग रहा है? हाँ, वो जो दुखद हादसा था वो दर्शनार्थी थे केवल। क्योंकि हमारे यहाँ पंच पुराण कहती है ना कि पद दर्शनम निर्णाम पाप राशि दाह। राम लला के चरण देख लो तो पाप राशि जल जाती है। तीर्थे सुलभ्यते साधु नाम रामचंद्र पायरायण। संतों के भी दर्शन हो जाते तो कुछ नहीं हुए, क्योंकि कर्फ्यू था। तो कोई संत गोली खाने निकलता, डंडा खाने, कोई नहीं निकल रहा था। तो वो सब बैठ के जप करने लगे। और जप कर तब छत से किसी ने ईंटा मारा। कोई अराजक तत्व था जो इन्हीं। Joining us from the ground are our two colleagues, Siddhant and Aman. A very good morning, Siddhant. Both of them will take us through overall sentiment and atmosphere. First, coming to you, Siddhant, can you describe the overall mood and atmosphere in Ayodhya leading up to the Pran Pratishtha ceremony? Well, let me give sense to our viewers of this Kar Sevak Puram. When there was nothing in Ayodhya in terms of temples coming up and several offices associated with Ram Janmabhoomi, it was Kar Sevak Puram which used to be the office of the Andolan. Perhaps it is still the office of Champat Rai. And this is a beautiful Kar Sevak Puram. In fact, they have also built tent city here to accommodate people from Sadhu Samaj, those who will be coming for the inauguration. So right now I'm going to show something very unique to our viewers. So this is a laddu. This is the laddu of 1265 kg, and this laddu has arrived from Hyderabad. It has taken 3 days for the creator of this laddu to take laddu to Ayodhya from Hyderabad. Now they are waiting outside Kar Sevak Puram for the arrival of Champat Rai, and they will hand over this laddu to Champat Rai ji, and this laddu is for Lord Rama, and I'm being joined by the person who is responsible for this fabulous job. Sir, ये बताइए कि कितने दिन लगे इस लड्डू को बनाने में, और इसके पीछे का जो थॉट था वो क्या था? हम लोग 2000 में श्री राम कैटरिंग बोल के हैदराबाद में स्टार्ट किया। करने का टाइम में हम संकल्प करा, अगर राम जन्मभूमि जब बनता, जब तक 1 किलो का हिसाब में, जब तक 1 किलो का हिसाब में इतना बड़ा लड्डू बना के भगवान को समर्पण करना बोल के सोचा था। इसलिए राम मंदिर बन गया। बनने के बाद इसलिए वो बात का ऊपर वो लड्डू बना के इधर लेके आया। तो ये क्या, इसमें प्रोडक्ट क्या यूज हुए, इंग्रेडिएंट्स क्या है लड्डू के? इसके अंदर 350 किलो आटा है, बॉम्बे आटा है, और 700 किलो शुगर है, 40 किलो काजू है, 35 किलो बादाम है, और 5 किलो किशमिश है, 5 किलो अपना जीडिपप्पू काजू है, और अपना शुगर है, घी है 40 किलो, जाफरान है। ये बताइए कि क्या चाहते हैं कि ये लड्डू का भोग भगवान को पहले दिन लगे? ये पहले भगवान देने का है, उसका लिए सेपरेट 4 लड्डू, छोटा लड्डू लाने को बोला अपना पंज संपत राय जी, वो लड्डू सेपरेट अपना कार में है, उसका लिए एक कार सेपरेट रखा हुआ है, वो अभी भगवान को देना है। कब से आप रामलला के भक्त हैं? हम तो कम से कम बचपन से, हम 2090 में हमारे गांव को अद्वानी जी आया और रथ यात्रा में 90 में 90 नहीं 80 में कुछ
80 में 2080 में हमारे गांव को आया था। हमारे गांव का बाजू उस दिन रात में ठहरा था। हम लोग पूरा उनको तो तब से आंदोलन से जुड़े हैं। सब उससे पहले भी आते रहे हैं अयोध्या? आया सब, इससे पहले भी आया। अच्छा, आप हैदराबाद से हैं, ये लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो राजनेता हैं वो कहते हैं कि राम सिर्फ नॉर्थ इंडिया के भगवान है। इसको आप कैसे काउंटर करना चाहेंगे इस नैरेटिव? वो नहीं है, सब थोड़ा लोग पॉलिटिकल वाला बोल रहा है ऐसा नहीं है। पूरा लोग का भगवान है, पूरा दुनिया का भगवान है। राम भगवान है, पूरा दुनिया का है। आप भी साउथ इंडिया से? हम तो साउथ इंडिया के छे, फिर भी पूरा का साउथ का नॉर्थ का पूरा है सब। थोड़ा लोग क्रिएट कर रहा सब, क्रिएट कर रहा जानबूझ के है सब। थोड़ा लोग पॉलिटिकल वाला ऐसा कर रहा, पॉलिटिक्स के लिए क्रिएट कर रहा। तो अभी ये लड्डू को कहाँ लेके जाएंगे? वो टेम्पल के अंदर लेके जाएंगे? टेम्पल का तो इतना बड़ा नहीं लड्डू नहीं जाता सब। 4 लड्डू बनाया, वो लड्डू अपने इधर हैंडओवर करते पूजा सामग्री के साथ, वो 4 लड्डू अंदर जाता। ये कौन खाएगा फिर? ये पूरा लोग इधर दे देते, डेली हजारों लोग खाना खा रहा ना सब। वो पूरा अलग अलग साथ में देखेंगे, खाना का साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते सब, जहाँ जहाँ भंडारा और वो भंडारा उसका पर। ब्यूटीफुल थॉट, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मेरा नाम नागभूषण रेड्डी है, हैदराबाद है। हमारे कारीगर का श्रीराम कैटरिंग सर्विस। श्रीराम कैटरिंग सर्विस के रेड्डी साहब हैं जिन्होंने ये 1200 किलो का लड्डू बनाया है रामलला के लिए। इनफैक्ट ही हैज आल्सो मेड few smaller laddus so that can be presented to God as a bhog. This particular laddu will be distributed all over Ayodhya in various bhandaras and langars, and right now they're waiting for the arrival of Champat Rai. So this laddu along with the laddus in the box, the smaller laddus, will be given to Champat Rai ji so that it can be presented as a bhog to Ramlala. Back to you. Right, Siddhant, thank you so much for bringing us that mouth-watering development on the Raj Bhog. But I'll request you to stay with us on the broadcast as we go and understand the impact of this entire ceremony on the citizens of the city from Aman Sharma, who's joining us live from Lata Chowk. A very good morning, Aman. As the city enters a new chapter, how do the people in Ayodhya actually view the Pran Pratishtha ceremony on the ground? Well, it is perhaps one of the biggest days for Ayodhya, to put it like that. If you speak to people here, especially the locals, nobody has seen this kind of crowd in Ayodhya ever. Thousands and thousands of people, nearly 40 to 50,000 people were there yesterday to pay their obeisance at the Ram temple. Now from today, of course, the Ram temple is closing for the next 2 days before it reopens on the 22nd for the Pran Pratishtha ceremony, and the general public will be able to visit the Ram temple on the 23rd now. But a big day because yesterday we also saw the new pictures of the new Lord Ram idol, which has been placed inside the Garbh Griha. And I was speaking to some of the saints and seers and showing them the photographs of the new Lord Ram idol. And interestingly, they've told me that the new Lord Ram idol, if you look closely and if you can show pictures of the new Lord Ram idol to our viewers on the screen, carries all the major elements of Sanatan Dharma, all the major features of Sanatan Dharma. They told me that if you look at the right foot of the idol, there is Lord Hanuman there. If you look at the left foot of the idol, there is Lord Garud there, who is the Vahan of Lord Vishnu. You will also see all the 10 avatars of Lord Vishnu on both sides of the statue. So they have been depicted, all 10 avatars of Lord Vishnu, be it Lord Krishna, Parshuram ji, everybody has been depicted on the sides of the statue. On the top of the statue, there is the sign of the Om, the Swastika, the Ganesh ji. There is the sign also, if I may read out what the details were told me, there is this. Cut again. Well, that was Aman Sharma getting us all the details from the ground and getting us live reports on the impact of the entire ceremony in the city. Now, Siddhant continues to stay with us on the broadcast. Siddhant, help us understand how are the people actually preparing for the event apart from the Raj Bhog that we have got updates on? Well, yes, that's right. So, people have started coming to Ayodhya, those who are participating or they have a bhog to present to Bhagwan. In fact, you can see the tea bhandara is going outside Pakar Sevakpuram, in fact, outside Champat Rai's office. And every morning, this is how, in Ayodhya, mornings start. With all the devotees and the officials, those who are associated with. I have people here with me. We'll speak to them. कहाँ से हैं? मैं बाराबंकी से ही हूँ। बाराबंकी से हैं। क्या यहाँ पे क्या विशेष दर्शन के लिए आए? नहीं, यहाँ पे हम लोग व्यवस्था में लगाए गए। व्यवस्था में लगाए गए। कहाँ, किसकी तरफ से लगाए गए?
ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप लोग यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं। हाँ, क्या क्या इंतजाम चल रहे हैं, कैसे मेहमानों की आवभगत होगी? अब सभी जो आ रहे हैं साधु संत, उनकी सेवा से उनका कायदे से स्वागत हो रहा है और उनको जहाँ पर रोकना है वहाँ उनको ले जाकर के छोड़ रहे हैं, उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, बहुत दिल से स्वागत हो रहा है, दिल से स्वागत हो रहा है सभी का, चरण स्पर्श करके उनको छोड़ रहे हैं उनके स्थान पे। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टेंट सिटी भी यहाँ पीछे ही है ना? हाँ, टेंट सिटी नहीं, ये व्यवस्था वाले लोगों के लिए है, जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए है, उनके लिए। टेंट सिटी ये तीर्थ क्षेत्रपुरम में है, वहाँ पर। Okay. So there are multiple tent cities also which have been created by the government for the officials and the devotees, those who are participating on the day of Pran Pratishtha. Back to you. Right, Siddhant, thank you so much for all those details. Those were our reporters getting us all the ground reports on this momentous occasion. Now, CNN News 18's Anand Narsiman spoke exclusively to folk singer Maithili Thakur. Let's listen in. मैथिली, आप तो अभी पटना में हैं, आपको तो यहाँ अयोध्या धाम में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मानस पाठ आज अगर किसी का प्रचलित है तो वो आपका और आपके भाइयों का है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वही है कि राम भजन ही बैठ के गा रहे हैं, चाहे वो हम अयोध्या में हो चाहे मिथिला में हो। हाँ, ये मिथिला का कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कि मिथिला का अयोध्या से क्या कनेक्शन है। आप लोगों के लिए तो भगवान राम अभी आ रहे हैं अयोध्या में, हमारे मिथिलांचल वासियों के लिए तो भगवान राम यहीं के हैं। हमने पाहुन बना के उनको रख लिया है, यहीं पे रहते हैं, वो हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। और सीता जी के नाते से इतना बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि हम पूरे देश में भले ही भगवान राम को आराध्य और भगवान राम को बहुत उनका नाम बड़ा संभल के लिया जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मिथिलांचल में भगवान राम को बहुत गाली भी दी जाती है और बहुत स्नेह किया जाता है और एक पाहुन की तरह उनको ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा भाग्य है कि हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूं, मैथिली में कोई गाना है, गीत है जो आप हमें सुना सकते हैं? पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। ऊपर से तो बड़े भोल भाले, ऊपर से तो बड़े भोल भाले, पर भीतर से नखरे निराले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। नारायण जो कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो, क्योंकि तुम जीजा हम साले, पड़े आज सखियन के पाले, पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियन के पाले। As we build up to the mega 22nd January event, but there's more that Ayodhya is in fact looking forward to, not just this one grand day, but the story that will be told many months and many years later, the story of Vikas as well as Vishwas that Prime Minister Narendra Modi has been speaking about. A few pilgrims have come here from as far as Fiji. What brings you to Ayodhya? Of course, Ram, who else will bring us to Ayodhya? And we are very excited. And my wife and myself are here in Ayodhya ji, and we are very emotionally charged for this occasion. You come here at a time when the whole world is looking at Ayodhya. You're staying in Fiji. I mean, do you think Ram and his principles have anything to in a way appeal to people across the world? Because yesterday the Prime Minister released a book of stamps which spoke about Ram's impact across the world. Prime Minister Modi ji has given so many insights on Ramayana, and of course Goswami Tulsidas ji has written Ramcharitmanas in such an easy way that we in Fiji, leave alone the rest of the world,
We follow Ramcharitmanas and we say Maryada Purushottam Bhagwan Shri Ram, and उनके आदर्शों को हम सदैव पालन करते हैं, चाहे वो एक आदर्श बेटा हो, पुरुष हो, पति हो, राजा हो, जो भी हो। देखिए 22 तारीख को तो दर्शन प्रधानमंत्री के जाने का शुरू होंगे, पर 25 तारीख तक बंद है। आप कितने दिन तक रुकेंगे यहाँ पे दर्शन के लिए? अब अयोध्या आए हैं तो अब राम ही जाने, दर्शन तो करना ही है। Let me just show you that these are these vehicles that have been deployed into service, of course supported by the state administration. These vehicles are completely, electricity powered. Essentially tells you the message as far as sustainability is concerned, tells you the message of having, green energy around as well. You are with me over here. You started this brand, you started this promotion. First tell me a little bit about your brand. So the brand is called MyV Plus. We are a Delhi NCR based startup. We started last year. We have about over 100 cars running in Delhi. So we wanted to be a part of the Ayodhya story. So we got in the EV cabs here. There are 15 cabs already running around the city, and the fleet is going to go up to 50 by the first week of February. And we want to get to about 200 cars by the end of March. Ayodhya is going to be a huge destination to watch out for. Is that your plan? Is that your larger plan? Because everybody speaks about not only a cost-effective means of travel, but something which is also contributed towards the cause of the environment. That's right, because it is sustainable. There's no emissions in the environment. It's always good for the people who are living here also, because as you know, 8 out of 10 most polluted cities in the world are presently in India. So we need to do something for our country. We need to do something for all the upcoming cities. So we want to be a part of the Ayodhya story. आप आज जमीन पे आए हैं, you've come to the ground, you've assessed the entire situation. How will you ensure that this is a safe and a wonderful experience for thousands and thousands of people, especially the media who's coming for this ceremony of the Pran Pratishtha? Yeah, media is of course our guest, but apart from that, because as you said, the thousands and thousands of Shraddhalus and devotees would be coming here, so we want to make it safe for everyone. So from the health perspective, the state government and central government are working together. We have created all the emergency facilities here. 2 hospitals have been dedicated for this event. Then a very important thing is that 2 Bhishma units, which are emergency response units created by Ministry of Defence and Ministry of Health, they have been deputed here. These units are simply world class. I would request that you go and visit them. They are modular units which can take care of about 200 patients in case of any emergency, whether it is stampede, whether it is a burn, whether it is a bullet injury or any other thing. They have an OT, modular OT, and doctors are there from the armed forces, so they are also here for this particular purpose. The one question that everybody, including the media, want to ask you, will we be allowed to go and get the darshan on that? Will we be allowed to go inside the temple premises? Is that something that you will be able to arrange? Here, of course, as you can see that we have made again a world-class sort of arrangement for the media. This media center, I'm sure you would take it to your viewers. And we are working with the state government so that there is a slot for the media to go to the temple after the main event is over, about 1.5 hours, where media can be taken with the cameras. Of course, one can understand that there will be security issues and a whole lot of issues, but we are trying for that. Well, it's time to slip into a break. Stay with us. News and updates continue on the other side. Hey, pal pal mein, yug yug mein, har kshan mein Ram, har tan mein, har man mein, khan khan mein Ram, Ram siya Ram. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम. राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम राम. राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम राम. जय श्री राम. पूजा यू लेफ्ट. मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में. बिल्कुल आपने सुना है. जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं. और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से. टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है. और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत,
तो वाकई यहाँ बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को ये भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद है और जब विमान के अंदर मौजूद है तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसे? Hello and welcome back. Thanks for staying with us. Well, Prime Minister Modi is currently undertaking a tour of the South India. During his visit, he intends to explore several significant temples in the entire state. Now, a key highlight includes his participation in the program at the Sri Ranganatha Swami Temple in Tiruchirappalli, where scholars will recite verses from Kamba Ramayana. In the evening, PM Modi will engage in Bhajan Sandhya at the Sri Arulmigi Ramanatha Swami Temple. Tomorrow, PM will offer prayers at the Koladra Swami Temple in Dhanushkori. Additionally, in the vicinity of Dhanushkori, he will also visit the Arkhal Munai. Let's take a look. Prime Minister Narendra Modi will be visiting 3 temples in Tamil Nadu, and just before the grand ceremony that's scheduled to take place on the 22nd, we are coming to you from Sri Rangam Temple in Trichy. Joining us is Kannan sir. Sir, you know, how many years have you been working here, and what is the kind of excitement that we are seeing here in the temple? I am working here for the past 6 years. Okay, we are excited, very much excited to receive Prime Minister Mr. Narendra Modi, because he is the first Prime Minister since India's independence going to visit this temple. So we are very much happy, especially Mr. Narendra Modi. So what is tomorrow's agenda? Because there are 3 temples that Prime Minister will be visiting ahead of the grand ceremony that will take place in Ayodhya on the 22nd. So what is the program planned here in the temple? Actually, I don't know about agenda, but this Lord Ranganatha was worshipped by Lord Rama. While Vibhishana crossing this place, this ideal was given by Lord Rama to Vibhishana. When Vibhishana crossing this line, he kept the ideal and then prayed that. After finishing your prayer, he is not able to lift that ideal, so he kept the ideal here. That is the one concept how Ranganatha is kept here. And you can see the kind of excitement here from 6 p.m. on the 19th of Jan till 2:30 p.m. on the 20th of Jan. This temple will remain closed for security reasons. The public will not be able to get darshan here at
Srirangam temple because Prime Minister will be arriving. So from 6 p.m. On the 19th of Jan till 2:30 p.m. on 20th Jan, this temple will remain closed for public. Tomorrow, after visiting the temple, a special program where there will be recitals here. After this, Prime Minister will be heading to Rameshwaram and will be visiting 2 other temples. This is going to be an interesting development from Tamil Nadu because 3 significant temples, 3 temples that have the Ramayana connect, will be covered by Prime Minister Narendra Modi ahead of his Ayodhya visit. We are coming to you from Sri Ranganatha Swami Temple in Trichy district. Prime Minister Narendra Modi will arrive here at around 11 a.m. today and will participate in a program that will be held inside the temple, and later will also listen to various scholars reciting verses from the Kamba Ramayana in the temple. Interestingly, just days ahead of the Ram Mandir inauguration in Ayodhya, Prime Minister will be visiting 3 temples in Tamil Nadu, and all these temples have a Ramayana connect. In fact, the temple that you see here is also one of the ancient temple complexes in the country, and the interesting background or the belief is that the idol of Lord Vishnu, which was worshipped by Lord Rama and his ancestors. Well, a new story of Vikas and Vishwas dawns in Ayodhya. Will this Pran Pratishtha ceremony mark a new chapter in the history of Ayodhya? We'll find out together here only on CNN News 18. But before we conclude, here is the News 18 anthem, Pranam Siya Ram. Stay tuned. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। जय brought to you by कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद, और यहाँ देखिए, ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है, और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। कहां आपको लेकर जाएंगे? जाहिर तौर पर हमने कहा कि अयोध्या दर्शन आपको कराएंगे, तो अयोध्या दर्शन आनंद आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं। 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है, और आपको बता दें कि निर्माण जो हुआ है तो कितना खूबसूरत है, कैसे इसके बनाया गया है, क्या कुछ खासियत है। लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 360 पिलर है यहाँ पर मंदिर में, इसकी जो ऊंचाई है 161 फीट की है। भव्यता आप देखिए यहाँ। साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई। यहाँ पर 5 पवेलियन बनाए गए हैं, 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसकी भव्यता को और निखारते हैं। 57.4 एकड़ ये टेंपल का कॉम्प्लेक्स है, यानी परिसर है। यहाँ 3 साल में इसका निर्माण हुआ है। हालांकि अभी ऊपर के हिस्से का निर्माण बाकी है, जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो 3 फ्लोर है यहाँ पर, 5 डोम्स इस मंदिर के अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे, तो आनंद कहां पहुंचे हैं अपने लघु पुष्पक विमान पर। सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं उन्हीं से। आनंद, कहां पहुंचे आप? प्रभु श्री राम का मंदिर बरसों का संघर्ष, करोड़ों की आस्था के संगम और महान संयोग से मूर्त रूप ले रहा है। भव्य और दिव्य अयोध्या के पुनर्निर्माण का प्राण और उसकी आत्मा प्रभु श्री राम का मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर अपनी अद्भुत शिल्पकारी के साथ धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हजारों के कुशल हाथ, करोड़ों की आस्था।
जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी कुटिया के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है. There's a reason why she's gone viral on Instagram, isn't it? There's a reason. And Insta Reel se real is fantastic. Swati, thank you so much for doing this for us and for joining us here. Thank you so much for having me. Well, I have to say hello. आपको तो hello कहना ही भूल गया. My name is Anand Narasimhan and we are here as part of our continuing coverage on Ram Mandir for India here on the News 18 network, and this is a very, very special panel. He's called Maryada Purushottam, but has he been fair to the ladies, especially the one big lady in his life, that is Sita? He's been a devoted son to his mother, listened to his stepmother, but did he stand by his wife? Did he do the right thing every time when it came to the women of Bharat of those times? Many questions to be asked, and of course we'll also celebrate Ram Mandir. With me are also two very, very how do I say, people I admire in the work that they have done, especially in the literary field. Neena Rai, author of the book Ayodhya, the splendid ancient city of Lord Rama. That's your book, isn't it? I love that book cover, Neena ji, fantastic. और आप उसकी हिंदी में भी ट्रांसक्रिप्ट आई है ना? तो दोनों बुक आपकी हैं. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you. And next to her is somebody who's also a very good friend, and we've had multiple run-ins when she unraveled the Mahabharata, then she's unraveled the Ramayana. Now she's unraveling many other things on Insta Reels, and then they are real fans also. So lovely ladies, thank you very, very much. So I'm the sore thumb in this all-women panel. सबसे पहले ये किसके भाव से लिखा है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे? तो कि ये शबरी के भाव से लिखा जा रहा है? हाँ, अमी जी बताइए किसके भाव से लिखा गया है गाना? जो भाव है, जो गाना सुना है, वो तो शबरी जी के ही भाव का है. और आपने जो टॉपिक की बात करी, आप सोचिए उनके जीवन में जितनी भी स्त्रियां आई, उन स्त्रियों ने उनसे बहुत प्रेम किया. उनके लिए वो ऐसे कहते हैं ना कि वो प्रतीक्षा करती रही उनसे मिलने की. तो ऐसे थे श्री राम, जिनके लिए उनके जीवन की प्रत्येक स्त्री उनकी कामना करती थी, उनसे प्रेम करती थी. But there are those who believe he was a chauvinist. Now, there's been so many things about that's been said about Ram. So one of the things is that he's been a chauvinist. Would you agree, disagree? I would absolutely disagree, and those who've read the book Ramayana Unraveled, I have very clearly explained why. And ये मेरा explanation नहीं है. अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, जो भी वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा, वो मेल शॉविनिस्ट इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही नहीं सकता. और अगर मेरे पास समय है तो मैं इसे थोड़ा सा विस्तृत में बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है श्री राम के विषय की जो ये भ्रांति है, ये दूर होना अत्यंत आवश्यक है. और अधिकतर ये बात तो है जो है वो तो सीता जी के परिप्रेक्ष्य में ही कही जाती है ना? तो उनके संबंध को समझना बहुत ही आवश्यक है. वाल्मीकि जी जब उनके विवाह के पश्चात के जीवन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं आख्यातम हृदयाम हृदय. उनके हृदय एक दूसरे से बात करते थे. सीता जी और श्री राम को शब्दों की भी आवश्यकता नहीं थी. हृदय से बात करते थे. ऐसी उनकी समझ थी, ऐसा उनका संबंध था. हाँ. अच्छा, उसके पश्चात जब वनवास जाने की बात आई, तो श्री राम नहीं चाहते थे कि सीता जी उनके साथ आए, क्योंकि वन का जीवन, कोई वो पिकनिक में तो जा नहीं रहे थे. वन का जीवन तो भयंकर होता है. और वो वही बात सीता जी से कहते हैं. सीता जी तब यहाँ तक कहती है कि अच्छा, आप मुझे डरा रहे हो, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? ये तो वही बात है कि जैसे मेरे पिताजी को तो शायद पता नहीं था कि रामम जमाताराम प्राप्त स्त्रियम पुरुष विग्रह. वो कहते हैं मेरे पिताजी को नहीं पता था कि शायद पुरुष के रूप में स्त्री के साथ मेरे पिताजी को जमाई मिला है, वो वैसा है. यहाँ तक सीता जी कह देते हैं. और श्री राम उनको आलिंगन करते हैं, क्योंकि सीता जी बहुत दुखी है. और वो कहते हैं कि देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपी न अभिरोचिए. हे देवी,
तुमको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तुम मेरे साथ अवश्य चलोगी क्योंकि तुम चाहती हो, परंतु तव अभिप्रायम अविज्ञाय वासम न रोचये अरण्ये, अगर तुम्हारा अभिप्राय ना हो, अगर तुम्हारा मत ना हो, तो मैं वनवास तुम पर थोप नहीं सकता। ये वनवास जाने की बात भी वो उनका ओपिनियन, उनकी मर्जी जानकर उनके साथ ले जाते हैं, और जब वो जानते हैं कि अच्छा ये मेरे साथ आना चाहती है, तो वो जो शब्द उन्होंने कहे है ना, वो भी बहुत सुंदर है। वो कहते हैं अनुगच्छस्व माम भीरु सह धर्मचरी भव, सह धर्मचरी भव। वो ये नहीं कह रही कि अच्छा तुम मेरी सेविका बन जाओ ऐसे कुछ, वो कह रहे तुम मेरे साथ धर्म में मेरे सह मित्र के भांति चलो, मेरे सहपाठी के जैसे चलो, है ना, सह धर्मचरी भव, इक्वल पार्टनर। और यही जो बात है वो उनके पूरे जीवन में दिखाई देता है। आप शुरुआत ही देखिए ना, अपनी माता जी को दिया हुआ वचन पालने के लिए जो पिताजी ने उनको दिया था, वो वनवास में जाते हैं। मतलब उनके साथ जो पहली जो घटना या दुर्घटना या जो भी कहो, वो तो एक स्त्री के कारण हुई है, और जिनकी आज्ञा उन्होंने मानी है। फिर सीता जी का स्वयं का ये ओपिनियन का ये मत था कि उनको जाना है वनवास, है ना। और आप थ्रू आउट देखो, उन पर ये जो लांछन लगता है मेल शॉविनिज्म का, वो केवल वो एंड के बाद के कारण लगता है कि लोग कहते हैं अरे ऐसे कैसे सीता जी के कैरेक्टर पे प्रश्न उठा दिया। करेक्ट। नाउ पॉज देयर, लेट्स आल्सो वेलकम द अदर गेस्ट हुज जॉइंड अस एंड देन वी कैन कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। द वन एंड ओनली मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, थैंक यू सो मच। आभार व्यक्त करता हूं आपका कि हम जब भी आपको आग्रह करते हैं आप सदैव आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वाति मिश्रा जी है, नीना राय एंड अमी गनात्रा। नीना जी, वांटेड टू से समथिंग क्विकली। मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में राम जी ने जगह जगह पे सीता को प्राण प्यारी कहा है। प्राण प्यारी का मतलब है कि जो मेरे प्राणों से मुझे ज्यादा प्यारी है। तो वो सीता जी को ऐसा ओहदा देते हैं अपने जीवन में। सीता जी को किडनैप रावण ने किया ही क्यों था, ये कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है। सीता जी को सिर्फ रावण ने इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो भी जानते थे कि राम जी का जो लाइफ है, जो जीवन है, वो सीता में बसता है। तो जब राम जी ने राक्षसों का वध किया, जो पहली बार जो राक्षसों का वध किया, जब जनस्थान टूट गया, उसके बाद एक राक्षस था जिसने रावण को जाकर के बोला कि विष्णु के अवतार जैसा कोई आया है जो पूरी की पूरी एंटायर क्रिएशन को क्रिएट कर सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है। सो ही कैन क्रिएट अ क्रिएशन एंड ही कैन डिस्ट्रॉय द क्रिएशन सिंगल हैंडेडली। यू डू नॉट स्टैंड अ चांस। तो रावण पूछता है अब हम क्या करें? उसने पूरा जनस्थान तो उजाड़ दिया है, सारे राक्षसों को, अकेला आदमी 14,000 राक्षसों को मार चुका है। कहता है आपके पास कोई होप नहीं है, तो अब क्या करें? तो रावण इतना बड़ा कायर था, तो रावण को वो कहता है कि राम जी की जो लाइफ है, जो प्राण है, वो उन सीता में बसती है। सीता को उठा ले आओ तो राम खुद मर जाएंगे। इस कारण रावण द कॉवर्ड किडनैप्स सीता and takes her away. So, and then you said, was he a chauvinist? Tell me something. राम जी को जब पता चला, पहले तो राम जी को पता नहीं था कि रावण उठा करके ले गया है। तो जब राम जी को पता चला कि रावण उठा के ले गया है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस छल जो मेरी प्राण प्यारी को ले गया। और ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं, लाइक वी आर टॉकिंग, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पे कि जब उनको जेवर मिले सीता जी के, तो वो जेवर को देख के लक्ष्मण को कहते हैं देखो देखो सीता के जेवर, और रोने लगते हैं, अपने हृदय से जेवर को रखते हैं और धरती पे गिर जाते हैं। कहते हैं उनका वक्ष स्थल भीग गया था रो रो के। कहते हैं जो छल मेरे साथ हुआ है रावण, तुमने जो मेरी पत्नी सीता को उठाया है, इस छल के कारण मैं पूरे राक्षस के रेस को वाइप आउट कर दूंगा। क्या ये एक मिसोजिनिस्ट आदमी कह सकता है कि मैं सिर्फ रावण को नहीं मारूंगा, मैं रावण के पूरे रेस, पूरे वंश सबको खत्म कर दूंगा? और इस कारण रावण, मतलब रामायण के बाद जब आप महाभारत के समय तक आते हैं, राक्षस गिन चुन के कम हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि जब रावण कहता है कि मैं कितना पावरफुल हूं, तो वो
पता नहीं, he says that there are around 30+ million Rakshas in the world. 30+ million Rakshas, that's the population of America today. Yeah. The third largest population. So Ram destroys the whole race of Rakshasas from the face of earth. जब आप महाभारत तक आते हैं तो आपको इक्के तुक्के राक्षस की कहानियां मिलती हैं. Is this the work of a misogynist or is this the work of a man who says that enough is enough and no more of this, and I love my wife so much, and he goes all over there. Well, that's a lot to say, but let's come back to another thing. सरजू तट पर हम थे जब 5 अगस्त 2020 को पूजा हुई थी, माननीय अवस्थी जी. अब वही सरजू तट पर आज भी है जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है. बिल्कुल याद है मुझे. बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोग का सबका सुनना. ये इसलिए क्योंकि मुझे इसलिए रोचक लग रहा था क्योंकि एक लंबे समय से राम कथा और भगवान राम का पति के रूप में उनका स्वरूप, उस पर बड़े सारे कह लीजिए बहस होती है, विमर्श होता है. और स्त्री विमर्श वाले तो प्रायः राम पर को बहुत आरोपित करते हैं इसको लेकर के. और इस स्तर पे कि कभी कभी बहुत वो एक असहज स्थिति तक हो जाती है. हाईएस्ट अथॉरिटी पे जो सीट है उसके दायित्व, उनकी जवाबदेही एक अलग स्तर की है जिसको वास्तव में जन सामान्य नहीं समझ सकता. बड़ा आसान है आलोचना करना, लेकिन सर्वोच्च सत्ता पे बैठे व्यक्ति की जवाबदेही और उसकी विवशताएं, जिस पर आज भी हम लोग कितने इतिहास पुरुषों पर आलोचना करते हैं, विवेचन करते हैं, लेकिन उसकी विवशता वही जानता है. वहां पर प्रजा को एक आंख से देखना और किसी के कहने पे पत्नी को छोड़ देना, ये बिल्कुल एक सतही बात, एक पंक्ति की तरह लगती है. मैं इसका दूसरा पक्ष आपके सामने रखती हूँ. क्या ऐसा संभव नहीं हुआ होगा कि एक ऐसी स्वाभिमानिनी स्त्री, एक ऐसी सक्षम स्त्री, सीता जी जैसी, जो इतनी सबल हैं, इतनी विलक्षण है, जिनके लिए पिता उस समय स्वयंवर रचते हैं कि जाति कुल के आधार पे नहीं, योग्यता के आधार पे मेरे पति का वरण होगा, जो उस कुल में इतनी विलक्षण है, इतनी असाधारण है कि उनके पति उनको एक पत्नी व्रत का वचन देते हैं विवाह की रात जी. इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते. उनके पिता की 3 रानियां थीं, बाबा की और भी ज्यादा रानियां थीं, और वो पहले होते हैं कि नहीं, जीवन में अब दूसरी स्त्री को मैं उठाकर आंख देखूंगा भी नहीं. तो सीता का सौभाग्य इसलिए परम सौभाग्य माना गया. हम अवध के, हम लोग क्या, तो आज भी सीता जी का सिंदूर भरा जाता है. सौभाग्य सुहाग गाया ही सीता जी का जाता है कि भाई ऐसा पति मिले, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, एक निष्ठ प्रेम. उसका वचन राम ने दिया जो निभाया. सीता जी इतनी स्वाभिमानिनी है कि जब ब्याह करके आती हैं, और स्वाभिमानिनी ही नहीं, इतने अपने मन की भी हैं कि जब वनवास होता है तो वो राम से कहती हैं कि इसीलिए विवाह करके लाए थे, अब तो हमने जीवन में सुख दुख संघर्ष इसका वचन लिया है, तो आपका वनवास आपका अकेले कैसा हो गया, मैं भी जाऊंगी. वहीं पे उर्मिला है, वो अयोध्या रहती है, सारी रानियां वन में रहती, वो जाती हैं. यानी अपना निर्णय स्वयं लेने वाली स्त्री थी, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं था. यहाँ पे अब दूसरी बात, किसी के कहने पे वन पे चली जाए. मुझे तो लगता है एक निष्ठ प्रेम उनका था, तो सीता जी का प्रेम क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि यदि, मतलब मैं सिर्फ इसको यदि के ही रूप में कह रही हूँ, विमर्श है तो विमर्श है, कि आलोचना होती देखी हो, पति को असहज, राजा को, पति को नहीं, अपने उस प्राणों से प्रिय पति को, राजा को यदि असहज स्थिति में देखा हो, तो स्वयं वन को क्यों न गई हो. मेरी जैसी यदि पत्नी होती तो हम लोग तो कई बातों को नहीं कह पाते कि किसी मर्यादा के पालन के लिए हम लोगों को बहुत असाधारण त्याग करने पड़े जी. बहुत असाधारण संयम रखने पड़े, जो कभी जग जान नहीं पाया. तो सीता की कहानी तो कोई नहीं जान पाया कि क्या पता कि सीता ने सत्य की रक्षा करने के लिए, पति के सम्मान की रक्षा करने के लिए, अयोध्या के राजा की नीति की और सम्मान की रक्षा करने के लिए कि तुम यहां रहो, मेरे कारण समस्या, मैं जाती हूं. लेकिन इस पक्ष की कोई बात नहीं करता. मुझे लगता है जिस तरह, और जब राम जाते हैं तो वो स्वयं कहते हैं कि अब मैं संतुष्ट हूं कि अब लव कुछ तुम्हारे पास गए, मैं अब जाती हूं वापस. एक हम लोग क्या, लेकिन लोकगीतों में सीता का पक्ष रखा है समाज ने, क्योंकि वो स्त्रियों ने गाने रचे. उसमें बड़ा एक गीत मिलता है कि जब
वशिष्ठ जी आते हैं, गीत में है कि मनाने के लिए सुनाएंगे सुनिए, ऐसे ही बता रही हूँ मैं कि वो एक वशिष्ठ जी आते हैं मनाने के लिए। वो कहते हैं कि तुम कितनी समझदार थी सीता, क्या हो गया है तुमको, पति ने यज्ञ रखा, तुम्हें मैं ले जाने आया हूँ। आश्रम आते हैं तो वो कहती हैं, त्योहार कहा मनबय गुरु, परग दुई चलिबय हो, जियत जी मुंह अयोध्या के नाहे दिखबय हो। गुरु जी आपका कहना मानूंगी, 2 पग चल के जाऊंगी क्योंकि आपने एक आदेश दिया है, लेकिन अब जीते जी अयोध्या का मुंह नहीं देखूंगी। ये चूंकि हम इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि राम सीता की कहानी हर एक भारतीय की कहानी है, हर स्त्री की कहानी है, तो अपना अतीत, अपना भोगा हुआ जीवन का दंश भी लोगों ने सीता के दंश में देखा, राम की कथा में देखा। हर परिवार में एक राम होता है जो कि पूरे परिवार को ढोता है, वहन करता है। पिता की गलती हो तो भी परिवार को एक करके रक्षा करता है। ऐसे में सीता को यदि निकाल दिया हो, पहले उस जमाने में पति, भाई हम लोगों ने 70 साल से पहले देखा है 2-2 ब्याह, 3-3 ब्याह, भगवान ने भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम रखे हो, तो यदि सीता को निकाला हो और ऐसी किसी भी स्त्री को निकाला हो तो वो सीता की कहानी का सच हर स्त्री का सच बन गया। ऐसे बहुत सारे गीत मिलेंगे जिनमें कि सीता के विरह का ये पक्ष, वन में जाने का पक्ष मिलता है, और इतने कारुणिक पक्ष हैं कि उनको आप सुने तो आपको लगता है कि ये अलग राम कथा लिखी जानी चाहिए। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ, वो लोक में जो स्त्री का कष्ट और व्यथा व्याप्त थी, उन्होंने सीता को नायिका मान के अपने जीवन को उनमें देखा और इस प्रकार की बड़ी कथाएं लिखी। ऐसी कथाएं लिखी हैं कि उनको लक्ष्मण जी वन लेके जा रहे हैं, राम ने निकाल दिया है और उनको वन में लेकर के जा रहे हैं लक्ष्मण जी, और जब उनको प्यास लगती है तो वो उनको वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं और लौट करके आते हैं। और तब सीता जी कहती, लक्ष्मण तुम विपत्तिया के साथ ही, बोलते हैं कि मेरी विपत्ति के साथ ही लक्ष्मण तुम कहाँ हो, तो बस वो जल पिलाते हैं और पलट करके चले जाते हैं। सीता जी कुछ कहती नहीं है और उन्हें धोखा सा लगता है कि वो वहीं बैठी रही, चले गए। ऐसे अनेक गीतों के प्रसंग हैं, ये कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उपकथाएं। किसी ने अपने आप बीती को उस गीत का रूप में, नायिका सीता जैसे हर नायक राम है, तो ऐसी बहुत कथाएं मिलती हैं। लेकिन इस विमर्श में मुझे लगता है कि सत्यता शायद कम है। ये विरह यह अवश्य हो सकता है कि सत्य की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, राम को अपने प्रिय की कहीं ना कहीं रक्षा करने के लिए यदि ऐसा अधर्म में देखा हो, संकट में, धर्म संकट में, तो सीता ने स्वयं अपने प्राणों से प्रिय पति को बचाने के लिए अयोध्या छोड़ दी हो, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। अच्छा, आपको मैं और एक बात बताती हूँ जो मेरा पर्सनल अनुभव है। मैंने कुछ टाइम इंडोनेशिया में काम करा है, तो वहाँ जावा करके एक जगह है जिसका उल्लेख रामायण में आता है। जब सीता जी के खोज के लिए सुग्रीव अपनी सेना को भेजते हैं तो ईस्ट की तरफ वो कुछ वानर सेना को भेजते हैं, तो और वो उसमें श्लोक है कि यावा द्वीप, सुवर्ण द्वीप वगैरह, उसका श्लोक में मेंशन है। और आज भी अगर आप जावा जाओ तो भले वहाँ के लोग तो कन्वर्ट हो चुके हैं, पर वो आज भी अपने आप को मानते हैं कि हम तो उनके हैं, वो हमारे पूर्वज रह चुके हैं। वहां से जो लोग आए, आपके भारत से जो लोग आए, अच्छा इंडोनेशिया में वेस्ट डायरेक्शन को बारात बोलते हैं, वेस्ट डायरेक्शन को बारात। तो इंडोनेशिया के वेस्ट में क्या है, भारत है ना। सो दे कॉल दिस इज बिकम लाइक वो जेरोक्स फोटोकॉपी हम बोलते हैं ना, वैसे वेस्ट इज बिकम भारत फॉर देम, ठीक है। और वो कहते हैं कि यहाँ से जो सुग्रीव के लोग आए थे, हम तो उनके लोग हैं, वो अभी भी मानते हैं ये बात। तो सुग्रीव के वंशज मानते हैं अपने आप को। एग्जैक्टली, मतलब सुग्रीव के सेना के वंशज, ऐसा वो मानते हैं। देखिए ये ना, मेरे पास समय बहुत अल्प है, इसलिए आई हैव टू वाइंड दिस अप। स्वाति जी, दिस हैज बिकम अ कॉन्वर्सेशन दैट कैन कैरी ऑन एंड बट आई होप यू एंजॉयड मेकिंग ऑल द एफर्ट। इतनी मेहनत करके आप आई, कुछ तो आपने गाने भी सुनाए, बट कुछ इनके इतना ज्ञान मिला मुझे यहाँ से, इसकी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। इसके लिए मैं आपको थैंकफुल आपके लिए हूँ कि मुझे इतना सब कुछ जानने को मिला, और ऐड ऑन करूंगी अपने नॉलेज में ये सब कुछ। और आगे जब मैं थोड़ी और बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी अगर बोलूँ तो आप सब जैसा बोल सकूं आगे चल के कभी ऐसा। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्यों भजन गाना चाहती हैं? Why do you want to, in your career, in your music, I know you sing a lot of things, you got a lot of, but why, what attracts you to this?
अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि आप भजन क्यों गाती हैं, क्यों गाना चाहती हैं, व्हाई डू वांट टू सिंग भजन। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ और यूपी बिहार में जितने लोग हैं रिलेट कर पाएंगे कि ये वांट नहीं है, ये आई थिंक ब्लड में है कि बचपन से हम हर चीज में पूजा देखते आए हैं। कभी देख रहे हैं मम्मी कुछ प्रसाद बना रही हैं, छोटे छोटे आटे के प्रसाद बना रही, मम्मी से पूछो मम्मी ये क्या है, तुम क्यों बना रही हो, तो बोलेगी मैया जी की पूजा होगी, कि मैया जी की पूजा होता तो उसके लिए। कभी शिवरात्रि की पूजा हो रही है, कभी सूप डबडबा के और अलक्ष्मी को भगाते हैं सुबह सुबह। हर जगह पूजा है, हर जगह भक्ति है, तो भक्ति तो इनबिल्ट ही है। ऐसा लगता है कि ये हमारे ब्लड में है भक्ति। So it's not something that you want to do or have to do. It's just you do. It's just in my blood. Yeah. हो जाता है जी। तो इस कार्यक्रम को शेष करने का भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फाइनल समथिंग दैट यू कैन सिंग फॉर अस प्लीज। श्योर। हो रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। ओ रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे। राजा राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे। ओ रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे। इस जग के पालनहार हो तुम, इस जग के पालनहार हो तुम, भवसागर तारणहार हो तुम, भवसागर तारणहार हो तुम। तुम इष्ट सभी के दाता हो, तुम इष्ट सभी के दाता हो, भगवान तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। हो रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, रघुनंदन दीन दयाल हो तुम, श्री राम तुम्हारी जय होवे, राजा राम तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। निखार रही है, अयोध्या फिर से धन्य हो रही है, फिर से राम राज्य की कल्पना लोगों को साकार होती दिख रही है। नारे लग रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका एक और लंबा वनवास समाप्त होगा। अयोध्या की जमीन धन्य है, ये भूमि धन्य है, आकाश धन्य है। इस खूबसूरत नज़ारे के हम और आप साक्षी बनेंगे। हम लघु पुष्पक विमान में सवार है और आप अयोध्या धाम के दर्शन इस आखिरी पड़ाव में हैं। देखिए, जहां आपको मंदिर पूर्ण रूप में दिख रहा है, भव्य दिव्य राम मंदिर। प्रभु राम का मंदिर जब बनेगा तब अपने पूर्ण रूप में ऐसा ही दिखेगा दोस्तों। बस
थोड़ा सा समय और बाकी है। भव्य मंदिर यहीं अपने पूर्ण स्वरूप में करोड़ों की भक्ति को राम के नाम से सराबोर करेगा। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सब। सभी को नमस्कार, मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, हम एक बहुत खास जगह और आपको बताते हैं हम कहां हैं। देखिए, वो दूर आप देख रहे हैं ना, वो है राम मंदिर, भव्य और दिव्य, विशालकाय। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा। अभी प्रभु राम का मंदिर अपनी निर्माण अवस्था में है, लेकिन हम उसे आपको पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। हम उसे जहां से देख रहे हैं, ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मणि पर्वत है। मणि पर्वत की बहुत सारी कथाएं हैं, आपने सुना होगा मणि पर्वत के बारे में। बिल्कुल आपने सुना है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से। टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ऐसा दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। और आनंद, जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत, तो वाकई यहां बहुत मेहनत लगी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है। पहले तो इस जगह के बारे में जान लीजिए जहां हम खड़े हैं। ये जगह है अयोध्या का मणि पर्वत और इसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। इस पर्वत के बारे में यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसीलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। और भी इसके बारे में कथाएं हैं पूजा। बिल्कुल, और भी कथाएं हैं, वो भी दर्शकों को बताते हैं। मान्यता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहां पर गिरा और यही वो टुकड़ा है आनंद जहां हम इस वक्त खड़े हैं। लेकिन दर्शकों को यह भी हम बता दें कि असली अयोध्या की यात्रा तो अभी बाकी है। टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनंद। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये वही आपको बताएंगे। जी हाँ, बताऊंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा पूजा, आपको धीरे धीरे यहाँ आना है क्योंकि हम आपको वहां नीचे नहीं, वहां ऊपर देखना है क्योंकि कुछ बहुत खास आ रहा है। ये कोई पक्षी है? जी नहीं, ये पक्षी नहीं, पुष्पक विमान है, वो भी लघु पुष्पक विमान। इतिहास में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हम देखिए धीरे 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 ये भव्य सुंदर टेक्नोलॉजी से निर्मित पुष्पक विमान आ रहा है। आराम से भैया, धीरे से लैंड करना, टच डाउन। ये देखिए ठीक हमारे बगल में आके लैंड हो गई। आ जाइए, देखिए सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर लग रहा है आनंद, लेकिन करने क्या वाले हम इस पुष्पक विमान का? सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूँ। कैसे जाऊंगा वो भी देखिए। मैं वहां जाऊंगा और द्वार खुल जाएंगे। खुल गए, देखिए। अब इसकी एक खासियत है पूजा जी। पुष्पक विमान के बारे में पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता था कि इसमें कंट्रोल्स नहीं होते, ये मन से जुड़ा होता था चालक के। मेरे भी ये मन से जुड़ा है, ट्यूनिंग की गई। अब बताइए क्या कर रहा हूं, मेरा मन क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है आपका मन? अरे ये तो दरवाजे बंद हो गए, क्या अब ये उड़ान भी भरेगा? भरेगा, जरूर भरेगा, बहुत जल्दी भरेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दरवाजे बंद हो गए। आनंद इसमें सवार है, लघु पुष्पक विमान के अंदर वो मौजूद हैं और जब विमान के अंदर मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे ये जरा हम आनंद से पूछ लेते हैं। आनंद, पुष्पक विमान में मौजूद हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, कहां जाने वाले हैं? देखिए, पुष्पक विमान की अलग ही फीलिंग है। यहाँ मुझे किसी सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक बार हम यहाँ खड़े हो गए तो एकदम फर्स्ट क्लास फिट हो गए। और मन की बात है, ये जानता है, और एक बहुत खास जगह लेके जा रहा हूँ आपको। खास जगह जा रहे हैं आनंद और यहाँ देखिए, ये विमान तो ऊपर आसमान में जा रहा है और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहाँ पर भांपकर इस विमान ने उड़ान भरी है। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर कण में, हर मन में, कण कण में राम, राम सिया राम सिया राम। Namaste ladies and gentlemen, you're watching the CNN News 18, specifically the breaking news show now with me Sakshi Singh Litoria. As you can clearly see, CNN News 18 studio is all decked up for the big day on January 22nd. And at the top of this bulletin, we have some breaking news for you coming up. We are learning that Prime Minister Modi is chanting at 3:40 a.m. every day in the ritual
For 11 days, the Prime Minister does a special lesson of chanting mantras received from some accomplished men of the spiritual world every day in the morning in Brahma Muhurta for 1 hour and 11 minutes straight. It is a resolution to chant this for 11 days, the upcoming days, in the lieu of big day of January 22nd. We have News 18's Amitabh Sinha joining us on the broadcast. अमिताभ जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी 11 दिन के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं। क्या मंत्र हैं ये और वो कितने बजे सुबह इतनी जल्दी 3:40 पे उठ के ये मंत्र का जाप करते हैं, क्यों? देखिए, ये जो 11 दिनों का अनुष्ठान है उससे जुड़े हुए तमाम ये रिचुअल्स हैं जिसको जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में हमारे जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन सब से जुड़ा हुआ है। और 11 दिनों के अनुष्ठान के लिए ये इन कठिन रीति रिवाजों का, इन रिचुअल्स का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। और प्रधानमंत्री एक जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा हुआ है और जो सदियों से पुरातन सनातन परंपरा में चला रहा है उसको पालन कर रहे हैं। उसी कड़ी में जब हमने आपको पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री किस तरह से मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे गायों को खाना खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री वस्त्र दान कर रहे हैं, और उसी कड़ी में ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री अब हर रोज सुबह 3:40 पर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 1 घंटा 11 मिनट एक मंत्रों का जाप करते हैं। ये जाप 11 दिन करने का प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है और ये जाप 11 दिनों के अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना। और ये सुबह 3:40 पर। अगर पीएम के कई आध्यात्मिक जगत के गुरुओं से, धर्म गुरुओं से काफी पुराने संबंध रहे हैं, उनके अच्छे स्नेह रहा है, तो प्रधानमंत्री उन सब सिद्ध पुरुषों से प्राप्त मंत्रों का जाप कर रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री के 11 दिनों के अनुष्ठान का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। अपना जो हेक्टिक शेड्यूल है उनका, जिसमें लगातार वो टूर कर रहे हैं, उस बीच प्रधानमंत्री का 3:40 पर जाप करना बताता है कि कैसे वो पूरे जो टफ रिचुअल्स है उनका फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल अमिताभ जी, हमसे जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। So that's the big breaking news of the hour that we are receiving about the preparations for January 22nd. Prime Minister of this country himself is chanting at 3:40 a.m. every day in the ritual for 11 continuous day. The Prime Minister does a special lesson of chanting mantras, as that has been told by our correspondent Amitabh Sinha as well, that the learning of these specific mantras has been received by Prime Minister Modi from some of the accomplished men in the spiritual world. They taught him the lesson about these mantras, and every day in the morning in Brahma Muhurat for around 1 hour and 11 minutes straight from 3:40 a.m. Prime Minister wakes up and does the chanting. It is a resolution to chant this for 11 days till January 22nd, ladies and gentlemen. That's the big breaking news about the Prime Minister Modi and his dedication towards the Ram Mandir, towards the Ram Janmabhoomi. He is waking up at 3:40 a.m. Every day for 11 days to perform this particular ritual, which is for the Pran Pratishtha day. He learned some of the mantras from some of the accomplished men of the spiritual world. In fact, he's chanting these mantras for 1 hour and 11 minutes straight. He wakes up at 3:40 a.m., which is the Brahma Muhurta. Brahma Muhurta remains till 4 a.m. in the morning. He wakes up at 3:40, continuously chant these mantras for 1 hour and 11 minutes straight. It is a resolution to chant this particular mantra for 11 days. We have CNN News 18's Shivani Gupta joining us straight from Ayodhya. Shivani, a very good morning to you. Tell us what's the mood like there on the ground. We are flashing some of the live visuals on our viewer screen as well. Tell us more about it. Yes, absolutely. You know, the anticipation is building up. We've seen images of the Ram temple now absolutely decked up with a lot of flowers and things like that. And all the preparations are really in their final stages. You know, because before the Prime Minister arrives, a lot of things have to be sanitized. Therefore, a lot of the preparations have to be finished a little bit in advance. So it's very, you know, the public here and obviously the people, but even everybody else who's here to report on this massive occasion, you know, looking at those images, I'm not sure if we're running them, but looking at those images of the Ram temple and all of its pillars and facade being decked up, you know, that is now finally giving the feeling that they're approaching what is a massive occasion as far as the Ram Mandir Pran Pratishtha is concerned. And let me also tell you, you know, the idol and its significance that has been, you know, that has come out, and the
various motifs that have been depicted as far as the idol is concerned. So on the idol, of course, there are 10 avatars of Vishnu that have been depicted. On the top of the idol are symbols of Hindu Dharma like Om, Sheshnag, the Surya, Gada, the swastik. There is, of course, a Dhanush in the hand of Lord Ram. There is a Abha Mandal around him. And on the feet of Lord Ram, on one side is Hanuman, on the other side is Garud. And the 10 avatars of Lord Vishnu, Ram being one of them, are on both sides of the pillars that is there in the Ram Lalla idol as well. So lots of significance, lots of thought that has gone in. I had been to the temple, I had been inside the temple 2 months ago, and the temple today is looking, almost complete, nearly complete, at least as far as the ground floor is concerned, to the extent that the entire flooring has been done, and all the temple walls, at least on the ground floor, etc., and the facade are being decked up with flowers. So that was a major preparation that was ongoing last evening. The temple premises were being decked up, the lighting has been done, the flowers have been put up, and now it's just about 48 hours to go. So the excitement is certainly building up in Ayodhya as well. Definitely. Shivani, thank you so much for bringing us all the detailings about the temple as well as the intricacies of this temple from inside the Garbhagriha and outside, of course, the decoration. We have some of the... All right, our correspondent Siddhant Mishra and Aman Sharma are joining us live on the broadcast as well, straight from Ayodhya. They have been tracking this story from very, very close now. Very good morning to both of you. Siddhant, first coming to you, what's the mood like there on the ground? Where are you reporting from? Tell us everything that you have covered so far for us. Well, right now I'm at Karsevakpuram, and in fact, this very special lock and key has arrived from the city of locks, which is Aligarh, and this lock is of 400 kgs, and these two keys are of 30 kgs each. Now, this is a special gift that has been brought in to Ayodhya for Ram Lalla ahead of Pran Pratishtha. I am being joined by Sadhvi ji. Will speak to her. आप कहाँ से आए हैं और ये क्या कल्पना थी, ये ताले और चाबी को राम लला को भेंट करने की जो कल्पना थी, ये कहाँ से ये आइडिया आया? देखिए, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी, महंत माँ बगलामुखी मंदिर अलीगढ़। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। डेफिनेटली अलीगढ़ जो है वो ताले के लिए फेमस है, तो ऐसे में हमें यही लगा कि अलीगढ़ वासियों की ओर से जो है ये जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताला है, हमारी जानकारी में वो बनाया जाए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताला है? जी जी जी, हमारी जानकारी। रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अभी तक? जी, अभी तक तो सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के चरणों में करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए लेके आए हैं, और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद समूचे अलीगढ़ वासियों को मिले, वहाँ के उद्योग जगत को मिले, क्योंकि वो ताले के लिए फेमस है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको एक पहचान मिले जब यहाँ के म्यूजियम में ये रखा जाएगा। और अब क्योंकि अयोध्या जो एक इंटरनेशनल धार्मिक स्थल बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो ऐसे में इस ताले को जब लोग देखेंगे तो हमारे अलीगढ़ को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान मिलेगी। तो बहुत भारी है, 30 जी जी, 30 किलो की चाबी है, ये आप देख सकते हैं। है, बता रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चाबी है ये, और इस चाबी से खुलेगा ताला, वो ताला जो कि राम लला को भेंट में अलीगढ़ के लोगों ने दिया है। और साध्वी जी, ये आप लोगों की ही कल्पना है जिसकी वजह से जी जी, हमारा ऐसा मतलब मैसेजिंग क्या, पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है इसमें? नहीं, प्लीज डोंट कोरिलेट दिस थिंग विद द पॉलिटिक्स, बिकॉज अगेन आई एम गोइंग टू कोट दीज वर्ड्स फॉर द पीपल हु वर बार्किंग लाइक दैट, व्हेन विल बी द राम मंदिर, व्हाट इज द डेट, दिस इज द ओनली पॉलिटिकल एजेंडा। दीज पीपल वर जस्ट कोरिलेटिंग माय राम, उनके मुंह पे ताला लग चुका है, उनके मुंह पे ताला लग चुका है, इसलिए ताला भेंट किया जा रहा है राम लला के लिए। ब्रिजेश जी यहाँ पे है। ब्रिजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह से ये भेंट आ रहा है राम लला को लेके, ताला आ रहा है, लड्डू आ रहा है, कैसे देख रहे हैं अयोध्या को? भेंट आ रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद जगह भी कम पड़ जाएगी, एक और म्यूजियम बनाना बिल्कुल बिल्कुल जगह कम पड़ जाएगी। और इस समय पूरा अयोध्या एकदम राममय, क्या अयोध्या का पूरा विश्व इसमें राममय हो गया है। और सबसे बात जो अभी साध्वी जी ने कहा, ये सबसे बड़ी बात है। जो विरोधी अभी तक पूछ रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण कब करेंगे, डेट बताएं, उनके मुंह पर ये
ताला मानी साध्वी जी ने जो कहा है कि उनके मुंह पे ये ताला लग गया उनके है। मुंह पे ताला लग चुका है. So we are here at Car Sevakpuram. In fact, we'll go to. We have more things to show to our viewers. Lot of things have come for Ram Lalla. In fact, Shabri ke Bear is a famous story in Ramayan, and you can see Shabri ke Bear has also come. Now ये बेर बहुत खास होते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक जगह पे ही पाए जाते हैं. कहाँ से बेर आए हैं? जी ये बेर भगवान प्रभु श्री राम जी के ननिहाल जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण से आए हैं. ये बेर सिर्फ वहीं मिलते हैं जो शबरी ने राम को खिलाए थे? जी ये बेर वहीं मिलते हैं और इनकी एक खासियत ये है कि हम उन बेर के साथ साथ एक वट ब्रिज भी लाए हैं जो पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा. ये है सिर्फ और सिर्फ ये वट ब्रिज है जो और कहीं नहीं मिलता. जी और कहीं नहीं मिलेगा. ये कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में? ये शिवरी नारायण में मिलेगा. शिवरी नारायण में मिलेगा और शबरी की माता जहाँ से हैं और वहीं पे उन्होंने बेर खिलाए थे. तो ये खास बेर आए हैं जो कि भोग में चढ़ाए जाएंगे भगवान को. ये बेर हैं. So this is the same bear which has been given to Lord Rama by Shabri, and it is and this plant is only found in Chhattisgarh's Shivri Narayan district, and these people have come with these bears so that these bears can be presented to Lord Rama as a bhog. Back to you. Definitely, Siddhant. Thank you so much for bringing us all those interesting details about the spade work that has been laid out ahead of the big day. We have CNN News 18's Aman Sharma with us on the broadcast as well. Aman, a very good morning to you. Tell us more about the Rammai mood straight from the Lata Mangeshkar Chowk where you are reporting from. Also, you got us report from Shaheed Nagar yesterday. Could you tell us more about that as well? Well, I have moved now to the Ram Lalla Ram Temple premises now from Lata Mangeshkar Chowk, and behind me you can see a huge rush of people today. From today, the Ram Temple is closed for public viewing. We are at the Ram Temple premises, and from today and tomorrow, 2 days, the Ram Temple will remain closed for public viewing because the temple is being decked up, temple is being prepared for the Pran Pratishtha ceremony on the 22nd. But still, a huge number of people still here today at the main gate trying to get in. The police is trying to tell them, look, the temple is closed. You won't be able to get the darshan of Lord Ram today. But still, people want to still go inside and, just go around the temple maybe if they are not able to get inside. That is the mood in Ayodhya right now, because people who are coming here, are also waiting to see the new idol of Lord Ram. But till the new idol of Lord Ram is not available for them, they want to see Ram Lalla Virajman. But today the darshan of both Ram Lalla Virajman and Lord Ram, the new idol, are closed for 2 days. It will remain closed. On 22nd we'll open the temple again for Pran Pratishtha, and then on 23rd public viewing will start. The new Lord Ram idol, which was installed in the Garbhagriha 2 days back, and yesterday we saw the first pictures of it. If you look closely at this Ram Lalla statue, and I've spoken to some saints and seers about it, they tell me this statue is perhaps all the characteristic features, all the clear dynamics of the Sanatan Dharma, all the clear, whatever needs to be, perhaps one of the most detailed Lord Ram's statue deities ever made. If you see on the right hand, right foot of the statue, you will see Lord Hanuman. If you see on the left foot of the statue, you will see Garud, who is the Vahan of Vishnu. If you see the around the sides of the statue, you will see all 10 avatars of the Lord Vishnu, Krishna, Parshuram ji. Everybody's depiction has been made around the head of the statue. You can see all the characteristic symbols of the Sanatan Dharma, from the Om to the Swastik, to the Ganesh, to the Shankh, to the Chakra, and around the Ram Lalla's face is the Surya Mandal. Because Lord Ram was a Suryavanshi, and Surya is an important part of the Sanatan Dharma and the Hindutva traditions. So around his head you can see the Surya Mandal, the entire Abha Mandal is there. This is the level of detailing that has gone into this statue made by Arun Yogiraj, the Mysuru sculptor, and we all know that's a 51-inch tall statue. The right hand of the idol is in an Ashirvad mode. Right hand holds an arrow. The left hand holds the bow of Lord Ram. Another bow and arrow, a depiction of Lord Ram, the most famous depiction of Lord Ram, has been taken care of in this statue. So the detailing which has got in
that is what people here are telling me, that this is perhaps one of the most detailed idols of Lord Ram, and we have so many people here with me. तो आज राम लल्ला के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, बंद हैं, पर फिर भी आप लोग आए हैं। हाँ, दर्शन करने के लिए आए हैं हम। तो दर्शन तो आज से बंद हो गए हैं। बंद हो गया है, क्या करने। और 10 बजे मन होगा तो दर्शन पाएंगे, नहीं आगमन होगा तो दर्शन नहीं पा सकते हैं। कहाँ से आए हैं? नेपाल से आए। नेपाल से आए हैं। तो जानकी जी के यहाँ से आए हैं आप? जानकी माता की नगर से आए हम लोग। जनकपुर से आए हैं। जनकपुर से आए हैं। सीतामढ़ी से आए हैं। सीतामढ़ी जानकी माता को जन्म भूमि है, वहीं से हम लोग आए हैं। You can see people coming from near and far, even from Nepal, Janakpur. People have come here. Back to you in the studio. Definitely. Aman and Siddhant will request you to please stay with us. Some breaking news coming in with regards to the security in Ayodhya, matter of concern certainly. This is CNN News 18's mega exclusive, ladies and gentlemen. We are learning that Ayodhya security has been put on high alert. This is after a threat coming in from Jaish towards the Ayodhya temple. Top sources have told CNN News 18 that Jaish-e-Mohammed has issued a threat last night to Ayodhya temple. In a statement, they said that Mandir is going to be inaugurated after killing innocent Muslims, and hence they have issued a threat towards the temple, because of which Ayodhya security has now been put on high alert. We have CNN News 18's Yash Goyal joining us on the broadcast. Yash, give us... All right, I think we lost connection with Yash over there. We'll try to reconnect those lines, but right now this is CNN News 18's mega exclusive that tells us that Ayodhya security has been put on high alert because of the threat that has come in from Jaish-Mohammed straight. We have CNN News 18's Yash Goyal back with us on the broadcast. Yash, give us more detail about this particular threat that has been issued and the security that has now been put on high alert. See, Sakshi, the very first thing to understand after this input is that the intel sources tell us that the situation is under control, and in fact all precautionary measures are being taken. Well, in fact, what top sources are suggesting as of now is that this threat has been directly issued by Jaish-e-Mohammed. In fact, there was a statement which was given where they said that that inauguration after killing innocent Muslims is being done. So that is why this very thing becomes very important. And in fact, it's not just the Ram temple inauguration, but if we look at entirety, 26 January is also nearing. So the obvious and in fact the protocols are already in place. In fact, the highest security is being kept at all the important places. So these two things come at very near to each other. Well, on the 22nd of January, Pran Pratishtha ceremony is there, and in fact on the 26th January we'll be celebrating the Republic Day. So as of now, the intel sources suggest that all the protocols are in place, in fact, and the situation is being monitored all across the country. It's not just about only couple of reasons, because security in these sorts of events becomes very important at each and every point in the country. Definitely, Yash. Thank you so much for bringing us all those crucial details with regards to the pulled up security in Ayodhya. We are right now taking a short commercial break. Stay with us. We'll come right back. Hey, pal pal mein, yug yug mein, har kshan mein Ram, har tan mein, har man mein, khan khan mein Ram, Ram siya Ram siya Ram. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भरा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भरा, राम सिया राम सिया राम। जय Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप?
जय श्री राम। तो कैसे कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और ट्रस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used. And it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Welcome back and thanks for staying with us. With Ramay mood, we are leading into a breaking news now coming in. We are learning that Ram Mandir will be featured as the biggest reach out by the BJP. Prominently, they are trying to reach out to the youth and will circle around Ram Mandir ahead of the 2024 Lok Sabha elections. We are also learning from the sources that BJP has told its leader to focus mainly on the reach out to the youth using traditional methods and modern technology as well. We'll give you more details about the kind of technological use that BJP is going to do in order to reach out to the youth, and the point that they are making, very sure that they will circle around Ram Mandir ahead of the 2024's Lok Sabha election. But right now, this is the biggest news of this segment, that Ram Mandir is going to be featured as the biggest reach out by the BJP, and they are prominently planning to reach out to the youth and will circle around the Ram Mandir ahead of the 2024 Lok Sabha election. So they are somewhat trying to connect the Ram Mandir pitch as well as the pitch for Lok Sabha election 2024 with Ram Mandir in consideration. Now, BJP has told its leader to focus mainly on the reach out to the youth using all the traditional methods and modern technology as well. There are BJP leaders who have been advised to tell youth how relevant the principles of Ram are in modern day and age as well. We have CNN News 18's Payal Mehta joining us live on the broadcast straight from Ayodhya's Lata Mangeshkar Chowk. Payal, a very good morning to you. Could you tell us more about the specific techniques that BJP is planning to use, the traditional methods and modern technologies amalgamation in order to reach out to youth? Well, the BJP is in fact form a committee which will reach out to the youth and to the women, and in particular the first time voters and the youth, because they are the future, as the Prime Minister has been saying all along. But why is Ramayan still important? Why is it important to understand the principles of Ramayan and Prabhu Ram beyond what we see in the textbook? That is something which the BJP will do. So obviously they will be deploying a lot of technology. They'll be using a lot of modern techniques that are available. They'll be possibly using, because it's very important to keep the youth engaged. The youth in order to keep the youth engaged, it is important to use modern technology, to use artificial intelligence and all of that. That is something which the BJP is going to do in the run-up to 2024. Now, I am in Ayodhya right now, and a lot of people are on with me, and most of these people are from Prime Minister Narendra Modi's home state, Gujarat. Let's try and understand from them. आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, आपके लिए राम मंदिर के बारे में जानना और राम के जो प्रिंसिपल्स के इसके लिए जानना युवा के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है राम मंदिर के बारे में जानना, क्योंकि राम
जी बहुत पहले से है, इसके लिए जानना बहुत जरूरी है राम मंदिर के बारे में। लोग कहते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं, क्या कलयुग में राम के प्रिंसिपल्स के लिए कोई जगह है? कलयुग नहीं है, सतयुग ही है। सतयुग ही है, कलयुग अभी चालू ही नहीं हुआ। जगह की जरूरत पड़ेगी नहीं राम जी की। कितना जरूरी है कि राम ने ये जताया है कि जो आखिर में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, ये कितना जरूरी है आज के दिन में? उनको अनुसरण करेंगे तो वही तो रामायण में दिखाया गया है और जानना जरूरी है। भाजपा जो है 24 से पहले इसको एक बड़ा कैंपेन बनाने वाली, युवाओं को रीच आउट करने वाली है, खास करके रामायण के बारे में। आपको लगता है कि ये काम करेगा? करेगा, जरूर करेगा। और हर एक सनातनी को, हर एक हिंदू को रामायण जानना बहुत जरूरी है और राम के बारे में भी जानना जरूरी है। घर घर भगवा लहराएगा। किताबों में तो हम पढ़ते हैं कि प्रभु राम की कहानी है, उसके अलावा मॉडर्न डे में लोगों को जानना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं भगवान श्री राम का मंदिर के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे ही नहीं पूरे विश्व के राम हैं और हमें उन पर बहुत गर्व है। बोलो जय श्री राम। आप बताइए, प्रभु राम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? राम से हमारे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। हम बड़ौदा से यहाँ आए हैं प्रभु श्री राम के लिए और यहाँ अपना निःशुल्क हम सेवा करना चाहते हैं। Well, of course, you've heard from the young faces over here. Essentially, they are the important factor as far as any election are concerned, and more importantly, in 2024, the BJP is going to solely focus on them in a big way to try and lure them, to try and bring them to the voting table, and also tell them what plan the country has ahead for them. Back to you. Definitely, Payal. Thank you so much for bringing us all those ground details. State as far as the Ram Mandir being used as the biggest reach out by BJP, specifically targeting the youth of the country, keeping the Ram Mandir into consideration, of course. With that, we have completely run out of time on this bulletin, but stay with us. We'll come right back with more on the other side. Brought to you by Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है। दिस इज फ्री सर्विस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ राइड till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing.
Namaste, Jai Hind. We are here at the Adi Yogi in Coimbatore at the Isha temple in the presence of the one and only Sadhguru. Namaskaram, Prabhu. Namaskaram. Lovely to see you, sir. And plenty of things that I want to ask you. But first up, let's start with something which is close to your heart and matters to all of us. It is the campaign to save soil and the message that you took at the recently concluded COP28. See, when we say COP, it is a meeting of all the parties, which means the nations. So if we want to effect any policy changes worldwide, global policy change of our concerns about the global well-being, individual nations have their own stuff. But there are certain aspects of our life, one is definitely the environment, where our concern cannot be addressed individually or even in national terms. It needs to be addressed globally. So COP is the place. There are different types of COPs. There is one for desertification, one for climate change. COP28 was CCC, that is UNCCC, which is for climate change. In 2022, in the month of January, there was a COP26 in Glasgow. When I spoke to various people who attended that, including a few environmental ministers of environment of different nations, they said, Sadhguru, how come the word soil was not even mentioned? I said, you are the ministers of environment, you must ask this question. Why soil is being ignored? Because the agenda is being set by certain activists for whom oil and coal is the only issue. I'm not saying that they are not an issue, they are an issue. Emissions are a serious issue, no question, it must be addressed. But how can you ignore soil and address climate issues on the planet? So today, we have, after that, within 2 months, I started the Save Soil movement. On 21st of March, 100 days, we managed to touch 3.91 billion people in those 100 days. Why this number is important is, governments will sit up and act in a democratic nation only if 60% of the population pays attention to something or says something about it. But in the world, individual human beings, citizens of the world have never stood up and said anything of, serious concern to us. Petty things we always fight. Things that matter to us, things that matter to the future generations on this planet, has never been said. Once there is a certain attention from the public, governments cannot ignore. See, where in COP26, they are not even spoken about soil. In 27 in Egypt, we were official observers. In COP28, which is this year, they titled an event called Soil the Superstar. Lovely, what a change. So from being absent, it became a superstar. So European Union declared that soil regeneration is an important part of mitigating climate change. At least 40% of climate mitigation can be achieved through soil regeneration. When I say soil regeneration, essentially what this climate mitigation is we are trying to catch the carbon molecules in the air. How will you catch them? You have no way. You are only trying to stop the excess emission. You stop the emission, but still you cannot catch it. Who catches it? It is the green leaf. So every extra green leaf that you put on this planet is one more step
towards climate mitigation. And every extra green leaf will produce a whole system of root system and a whole agency of organisms. It's amazing that even in scientific communities, 80% of them are unaware. I'm sorry I'm saying this because this is not to deride scientific community, but lot of things are driven by activism, not by pursuing what is there. 80% of the people do not know a tree or a plant cannot get its nutrients from the soil without the agency of organisms. It is they who facilitate that. The same is true within your body to a large extent. Without organisms, you cannot exist. But that is depleting at a pace that you cannot imagine. If we have to strengthen that, we have to put it back into the soil. Carbon is not poison. We are all carbon life. Correct. From a worm to an insect to a bird to an animal and a tree and you and me are all carbon. Only thing is, carbon is in the wrong place. It should be in the soil, it's floating up in the air. There was a law in this country, in most states, even now, some of the states have that. If you grow a tree in your own land and later on for your use you cut it, they can come and arrest you. Arrest you. So no farmer wants to plant a tree. And then they say, all the valuable trees you cannot plant. You can plant something else. You can't plant sandalwood. This is the land of sandalwood, why can't I plant it? No, this will happen, that'll happen. Now what are you doing? You are importing sandalwood from Australia. Yeah. Okay? Over 1 lakh crores worth of timber you are importing, but you won't let the farmers grow. So this is what we try to change. This is not afforestation. This is farming happening along with tree plantation, because everything grows better when the soil is properly plowed by the roots, not by the tractors. COP16, which is the UNCCD COP, is happening in Riyadh. They have requested us to help them to structure the event itself around soil. Fantastic. So from not being considered at all to soil becoming the it's gone superstar. that far thanks to all the millions of people or billions of people who stood up and raised their voice. So I'm requesting you must keep your voice up till it happens, because it's still only in the narrative. Action is yet to happen. Action is yet to happen. At least you brought it into the narrative, and let's hope action happens. Now Sadhguru, from science, soil, to spiritualism and Shiva. So I want to ask you, we are on the cusp of something very historic for us here at Bharat, that the Janbhumi of a great Shiva Bhakta is now going to be celebrated as a temple is going to be consecrated. So let me ask you, who is Ram to you? For us he is Rama. See, this is very important. People are using these words without knowing the significance. Today, this thing is coming into everywhere. People are referring to him as Maryada Purushottam. So clearly you are saying that he is a Uttama among the Purushas. Uttama Purusha. Yeah. So he is a great human being. They did not say he is God. Yeah, they did. They said he is a great human being. So this is the fundamentals of our civilization. We are not looking for people to descend from heaven and become great here. We are looking for people who are born here, normal birth, who rise, and they're raised to such a point that you could not identify him as a human being. You started thinking he is divine. So here divinity is cultured, divinity is grown within the human being. Divinity does not descend from heaven because we know the planet is round and it's spinning. We don't even know which is up and down. True. So we are always looking at how to grow divinity. So we call him Maryada Purushottam. That means as where you thought a human being will not go, he went. See, if you look at his life events, it's a serial disaster. Lot of pain. At the age of 19, he is coronated as a king. Some political something, he is dislodged and he has to go to forest. Well, forest means, because you see in the television shows, you think forest means it's honeymoon, you went with your young wife and golden deer came, all that. This is all literature, all right?
Sent to the forest means it's sent as a punishment. And his wife is not some Adivasi girl, she's a princess, not fit to live in the forest, I'm saying. Because people don't know what is forest. I have lived in jungles by myself. If I went out for a week in the jungle and came back, even my mother wouldn't recognize me, head to toe, insect bites, all right? Everything is swollen. And it's not easy, it's fantastic, but it's not easy, all right? So this was not sent so that he can have honeymoon in the forest. He was sent to the forest as a kind of a punishment. Whatever led to that, let's not go into the story. Knowing that it's going to be so hard, his brother leaves his wife and goes with the brother because he knows it's going to be extremely hard. So, after that, as if that was not enough, somebody kidnaps his wife. Then he's not that kind of man. After all, he's a king, he could have found solutions in the neighborhood. He's not that kind of man. He loves his wife, walks down 3,000 kilometers and goes and fights, burns down a beautiful city. All these are painful things to do. For any sensitive man, even if it's your enemy's city, burning it down is not a pleasure. Only for somebody very crude, they will enjoy it. Others will feel pain. Then he brings back his wife. Then when he comes back to his kingdom, again some political issue, and then again he has to send his wife to the forest. She's pregnant. See, for an emperor or a king, by then he's an emperor, for him his progeny is very important. Now there is no sonogram, he doesn't know whether it's male or female children. Then she goes into the forest, he endures that. Then she delivers 2 boys, he doesn't know. When they're around 12 years of age, he almost kills them. If something really negative should happen to somebody's life, in terms of situations, the worst thing that can happen to you is, knowingly or unknowingly, you kill your own child. He almost did it. Fortunately, it did not happen. Then his wife dies there, he never again gets to see her. This is a serial disaster. But why he is Maryada Purushottam is, no matter what life does to him, he never became full of angst or anger or hatred. He fought when he has to fight. Out of dignity he fought. Out of what he thought is right, for that he fought, but never became hateful. And he kills his enemy who kidnapped his wife and whatever nonsense. Then he comes and repents for 1 year in the Himalayas. So for this you bow down, because in this civilization, let's get this very clear, in this civilization, God is not supreme to us. Mukti, liberation, moksha is supreme to us. So when he is alive, he is in Jivan Mukti, that is, no matter what life hits you in whichever way, you are unaltered, you are the same person. This is the only thing that we value, and he displayed that in a tremendous way. Because of that, even now, till recently, after 5,000–6,000 years, he still had real estate issues. Fortunately, it's settled now, thanks to everybody who made that happen, and I'm sure this means a world to multitude of people. But why should we have this real estate issue, Sadhguru? And if Ram is in our consciousness and he's across Bharat, Rama, why the fight for why is the Janbhumi so important? Be it the Krishna Janbhumi or be it the Ram Janbhumi. And also Kashi Vishwanath. So, 3 important pillars for why means, see, the faith of Hindus. Right now in the Indian law, I'm saying, you came here and you stole my car and went away. You parked it in your house. I can't come and slap you and take it back. Then I will become a criminal, okay? Now I have to go to the court. And it may take 12 years to get my jeep back, okay? To get my jeep back, it may take 12 years. In that 12 years, my jeep may get junked. Unfortunately, this is the kind of laws that human beings have everywhere, particularly in our country. But like Ram, let's not become bitter
Let us work towards it and make it happen, because that's what he did. That's why we appreciate him, that's why we worship him, that's why we look up to him. Let's emulate him, that's most important. But he's also a Shiva Bhakta. The other issue is let me ask you this. How I am not a Shiva Bhakta. He's my 50% partner. He's a 50% partner. But he does nothing, makes me do everything. So let me ask about the sleeping partner and his seat in Kashi, the oldest of the cities mentioned in the… See, being a sleeping partner is a damn good thing, you know. You don't have to do anything, but still you are 50%. This entire conversation, the Prime Minister also made a reference that things are coming a circle. There is a rising consciousness about who we are as a people and what matters to us in our civilizational ethos. Do you think that is happening? That's true? And that's the reason why matters like Krishna Janmabhoomi, Gyanvapi, Ram Janmabhoomi are coming to the fore and they're now being openly spoken about and listened. The politics of negativity, that if I don't like you, even if you say the best things, I will anyway banish you, I'll bombard you, that kind of politics is changing. But I think this is largely a consequence of technology and social media, that a single media is against you. A single media cannot set the narrative anymore. You say whatever you want in your show, people will do their own thing. So essentially, there's no official voice anymore. It's only gossip which rules. Social media is gossip gone global, you know. Gossip has gone global, and gossip is always the most powerful communication. With technology, you can gossip with somebody in Timbuktu, not with your neighbor. I think this is powerful. This is why it's coming back, that in many ways, that nobody can set the narrative. People are setting the narrative, slowly it's building up. And I think it'll build up much more. It should have happened much sooner. But if something happened with official push, then it would always be seen as a negative force. But I'm glad it's happening because of people building up the narrative. It's buzzing everywhere. See, the crowds how they are. It's buzzing everywhere. But why is the Adiyogi so special? Why is Shiva so special for us here in Bharat and also… See, somebody asked me a few years ago when I was in United States, a journalist asked me, don't stand there like that, please. A journalist asked me, Sadhguru, there are so many people who represent human consciousness in the East. Who would you think is very important in the West? Without batting an eyelid, I said, Charles Darwin. What consciousness? He was a biologist. I said, see, till Charles Darwin came, the West completely believed God made you this way and this is it. For the first time, life can evolve from one level of life to another level of life. This idea came into your mind only because of this man. Over 15,000 years ago, Adiyogi spoke the same thing. The people don't understand these 10 avatars we are talking about is evolutionary theory. Yes. Put it in a subjective manner, let me not go into that. But essentially, what Charles Darwin is speaking and what they spoke over 15,000 years ago are in parallel. It's just spoken in a subjective manner, that's all. You look at the progression of the 10 avatars, it is exactly the same. But once you become human, you have the privilege and you have the capability to evolve consciously. A monkey did not decide it should become Anand. It cannot decide. Nature. Yeah. But Anand can decide what he wants to be tomorrow. He can evolve into something else. Evolution does not mean just knowledge. Evolution does not mean more capabilities. Evolution means life itself progressed from one level of existence to another. This is the fundamental basis of Adiyogi, and then he taught us a science through which we can use to hasten our evolution. This today is called yoga or yogic systems or yogic sciences, but because
Today for most young people, yoga is a rebound from the American West. They think Madonna invented yoga, you know. Because of that, they think only twisting and turning is yoga. Twisting, turning is not yoga. Yoga means union. There's a very beautiful story in one of the Tamil Nadu temples. One English officer came and they were controlling all the temples. Even now, unfortunately, the government is controlling all our temples. This needs to change because this is apartheid, if you ask me. This is sheer apartheid. The HRNC. That your places of worship is controlled by the government. Now, at that time, the English… places of worship. English took over. And why? Because there was a lot of money and wealth. And one officer came to see and in that accounts book he's checking. 1 rupee 50 paisa per month for sapadu for Vannu Pannada Swami. A Swami who does nothing, for his meal, 1 rupee 50 paisa per month. He said, why? Why are you feeding a man who does nothing? Let him do something. Let him sweep the temple, let him clean the temple, let him do something, otherwise no sapadu for him. They tried to tell him, the trustees, sir, it's not like that. This man really does nothing, you know, not lazy man. He just does absolutely nothing. He said, I don't care. Just no sapadu for him, cut it off. That is not allowed in the account book. Then they said, you must come and see him. Let's just sit with him for one moment. He came and looked at him. Yogi was simply sitting like this. They said, you just sit with him for 5 minutes, just like him. He just sat there and something hit him so hard. He said, okay, feed this guy, I don't know what he is. So I'm saying there is a whole science as to how to evolve this being to a higher level of significance and being, not just doing. And this science is the basis of this civilization. What you see as Sanatan Dharma is a mass application of yogic science. See, right now, there is a thread inside. Nobody wears a mala for its thread. You can put various flowers on it, you can put pearls on it, you can put diamonds on it, you can put whatever on it. But the fundamental is the sutra. But nobody wears it for the sake of its sutra. So Yoga Sutras are just a thread. You're supposed to build the right thing from your inner experience. In the Bhagavad Gita, he also says that I am… I am not so well read. No, Prabhu. So, even there Krishna also says that I am the sutra or the thread that is invisible, but I keep everything together. So, is this entire language thing, Ram or Rama, we know who we are talking about, but why is this suddenly, or is it something which just keeps flaring up time and again, the north-south divide, Tamil versus Hindi? See, it's all because of you guys. Us? Okay. Yes. Sir, Tamil, sir, Hindi pe rahe. No, I'm saying, one guy says something, one silly statement, you make it like the whole nation is speaking. No, it's just one guy. And either out of ignorance or because of some vested interest, somebody says something. Is that the way the people experience? No. But I don't want to discount this. If you run a campaign like this, it could become a public discourse after some time. It definitely will happen. So we have to watch ourselves there, we cannot ignore this. The thread of languages, if you look at it, even the European languages, now research is saying it came from Sanskrit base. Tamil language evolved separately, but there have been cohabitation for thousands of years, it's all mixed now. You cannot separate it anymore. It is the way you express the language. In some places, it's closer to Sanskrit language, so we speak one way. In some places, it's little away from that. Before Sanskrit language was transmitted, was there no other language? No, there were languages. In the northeast, there were many languages. There, the influence of Sanskrit is very minimal. Even in the south, the Tamil language, the influence of Sanskrit is minimal compared to Kannada or Telugu or Malayalam, like this. But the influence is there. All languages, nobody can sit down and make up a fantastic language. It evolves over a period of time. But scientifically, studies across the world have shown that Sanskrit language is the only language
which gives you full vocal capabilities and activates the brain in many ways. If people do not know this, most of the elite schools in UK, Sanskrit language is compulsory for the children because it stimulates the brain. Studies have been done. It stimulates the brain and gives you a full range. See, if you are born in a certain culture, you start speaking in a certain way. You are from Malayalam background or Tamil? I'm a Palakkad Iyer, sir, so I saddle both. Okay. If you are a Malayali, you will pronounce certain things in a certain way which we think is funny. If you are a Bengali, you will pronounce even the national anthem wrong and we think it's funny, though national anthem came from Bengal. All right, or at least from a Bengali. But the thing is, these are the different inflections which are there. If you don't enjoy this difference, you're a bloody fool, all right? Life becomes interesting because the same thing you will say it differently. We think it's funny and we can laugh. Otherwise, if I can't laugh at you, how can I be with you? We'll all become dead serious and fight about everything. Correct. So, these language inflections are fantastic, how human beings found ways. But the restriction of pronunciation happens because we are enclosed in that culture. This is something we need to understand. If we get enclosed, our very speech gets limited. Yes. It gets curtailed within that boundary. If our speech gets limited, our minds also get limited. It's very important to understand our culture molds us in a certain way. Only those who raise beyond that cultural and family and other influences become Maryada Purushottams. Fantastic message, sir. Sadhguruji, always a pleasure speaking with you. Thank you very much. Time always seems less when we are in conversation. Look forward to the next one very soon. Namaskaram. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing.
Namaste, ladies and gentlemen. You're watching the breaking news show on CNN News 18 with me, Sakshi Singh Litore. And over the next 30 minutes, I'll be walking you through all the latest news and headlines from the nation and across the globe. As you can take a closer look of CNN News 18's news studio, it's all decked up for the big day on January 22nd. Just 2 days left for the Pran Pratishtha ceremony. And before the ceremony, the golden bow and arrow, Ram Lalla's first complete look, has also been revealed today following the purification of temple sanctum sanctorum with the holy water of river Saryu. Vastu peace and Anna Divas rituals will be performed as well. Now the original idols of Ram Lalla Virajman and his brothers will be installed in front of the new idol inside the Garbhgriha on Monday. A floral ceremony is scheduled at the newly built Ram temple as well. Uttar Pradesh is formulating a 6-month plan for the post-January 22nd period, anticipating a significant influx of daily pilgrims to Ayodhya. And high alert in Ayodhya in view of the ceremony has been invoked. All the entry routes of Ayodhya have been sealed. Ban has been imposed on entry of vehicles of Ram devotees in Ayodhya from today onwards. We have CNN News 18's Aman Sharma joining us live from Ayodhya. Aman, a very good morning to you. We just told our viewers about some of the bans that have been imposed. The entry of vehicles have been banned from today onwards. Could you just walk us through all those details? Well, Sakshi, the Ram temple is closed from today. For today and tomorrow, the Ram temple is closed for public darshan. This is also because, pilgrim rush was a bit too much over the last few days, and also because preparations have to be done at the Ram Mandir ahead of the Jan 22nd Pran Pratishthan function. So for 2 days, Ram Mandir is closed. That is why there are restrictions coming in, because devotees should not go to the Ram temple if it is not open. So obviously Ayodhya is being sealed. We will see tomorrow even tighter restrictions, and on 23rd we'll only see the invited people for the Pran Pratishthan ceremony being allowed to enter the yellow zone of the Ram Janambhoomi premises. There is no restriction right now on coming to the Lata Mangeshkar Chowk where I am right now. There are a number of people here who are here, various kinds of devotees, various saints and seers are all here. So there is no restriction on coming till here. But ahead, if you go forward from this, on this road, the yellow zone starts towards Hanumangadi. Also you can go, but going towards the Ram temple is now a bit difficult because the Ram temple is closed. Also, what we are learning is that the Ram Lalla Virajman idols, the original idols of Ram Lalla, they could be shifted either today or tomorrow to the new Garbhgriha of the temple. So in the on 23rd, when the Pran Pratishthan happens, the Ram Lalla Virajman, and idols of his brothers Bharat, Shatrughan and Lakshman, the original idols, will also be a part of the Pran Pratishthan ceremony on the 23rd when the Prime Minister is here, along with that of the new idol. The new idol of Lord Ram, we have now closely, we have looked at the Ram Lalla idol, and we have spoken to saints and seers. Some very, very interesting features of the idol are now coming in front. It shows it's perhaps the most detailed statue idol of Lord Ram ever prepared. That's what some saints have told me. It depicts all the significant symbols of the Sanatan Dharma. If you see on the right foot of the new idol, you will see Lord Hanuman. If you see on the left foot of the new idol, you will see Lord Garud, the Vahan of Lord Vishnu. If you see on the sides of the idol, you will see all the 10 avatars of Lord Vishnu, from Lord Krishna to Lord Parshuram to Lord Kartikeya. All of them you can see on the sides of the idol, and on the top of the idol, near the head of the idol, you can see all the significant signs of Sanatan Dharma, from the swastik, the Om, the Chakra, the Gada, the Shankh, the Surya Narayan. The Lord Ram's idol also has a huge, very nice Abha Mandal around it. This is the Surya Abha Mandal because Lord Ram was a Suryavanshi. Such intricate details have been taken care of while making the Ram statue, and lots of devotees here. If I can speak to a few people maybe on what they feel about waiting these 2 days also for the Ram temple and what they feel will be. तो राम लल्ला के दर्शन होने में अब 2 दिन बचे हैं. नए राम लल्ला के दर्शन होंगे. कितनी बड़ी बात है ये अयोध्या के लिए. आपने फोटो देखा नए राम लल्ला का?
जी बहुत प्रसन्नता की बात है। अभी तो फोटो नहीं देगा, फोटो तो हृदय में है, सब तो चारों तरफ है जी। फोटो तो हमारे पास है, हम आपको दिखा देंगे। पर ये जो अयोध्या, आप अयोध्या के वासी हैं कि आप बाहर से आए हैं? हम तो इस समय अयोध्या के ही वासी। तो अयोध्या में कभी इतनी भीड़ देखी आपने लोगों की? भीड़ तो अक्सर त्योहारों पर होता ही रहता है, लेकिन विशेष भीड़ है, सुंदर लग रहा है, बहुत आनंद है। बहुत आनंद आ रहा है। पीपल एज साक्षी हियर सेइंग, ऐसा जो इतनी भीड़ अयोध्या में, लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ये माहौल अयोध्या में आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आया हूँ जी। मैं पहले भी कई बार आता रहा और आज हमारी अयोध्या नगरी श्री राम जी की नगरी भव्य एवं दिव्य बन चुकी है और अब समय आ गया है, समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम, मिल के बोलो खोल के बोलो जय श्री राम जय श्री राम। मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम, मंदिर भव्य अयोध्या नगरी विश्व में हो गया नाम, साधु संत और राम भक्तों के मन को मिला आराम, कई वर्षों के कठिन दिनों से दिन ये आए महान, मिल के बोलो खुल के बोलो जय श्री राम जय श्री राम। That is the feeling in Ayodhya right now. Back to you, Sakshi, in the studio. Definitely, Aman. We'll request you to please stay with us. We have Payal Mehta joining us on the broadcast as well. We'll try to get some information from Payal as well. Payal, a very good morning to you. Tell our viewers, where are you reporting from? What's special about the location where you are currently reporting from? Well, I'm currently locating from this location called as Hanuman Gufa. It is just one, choraha away from Lata Mangeshkar Chowk. And what you can see behind me is, tons and tons of flowers. This entire setup that you see over here is only flowers, and these flowers have come in, from 7 states. There are 550 volunteers who brought it from 7 states. And this entire coordination has happened from Prime Minister Narendra Modi's home state, Gujarat. Of course, they've collected 25 to 30,000 kgs of flowers from 7 states. And what they will be doing is that they'll be decorating the whole city of Ayodhya. And what you can also see is that people are tearing these flowers into small, particles. And that is going to be used, and that's going to be, in fact, showered upon the Lord Ram temple on the day of the Pran Pratishtha. सर आप मुझे बताइए सर आप मुझे बताइए कि सर क्या प्लान है, आप फूलों को तोड़ रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हम लोग बड़ौदा से टीम रिवॉल्यूशन स्वेजल भट्ट की ओर से स्वेजल भाई की ओर से है। ये पूरा टीम रिवॉल्यूशन है और आफ्टर काफ़ी समय के प्रयास के बाद हमको बड़ौदा वालों को अयोध्या नगरी सजाने का मौका मिला है। जब 500 साल के बाद राम जी पधार रहे हैं, ऑल ऑफ दी वी आर वेरी हैप्पी एंड हमारी तरफ से फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी हम यहाँ अर्पित कर रहे हैं। और ये these 550 volunteers have come in from various places in Baroda. I'm going to try and speak to a couple of more people. There are multiple instructions being given as to how the fool needs to be broken down. Make sure that there are there's no thorn or etc. anything left. आप बताओ कि कहाँ से लेके आए हो ये फूल? बड़ौदा। जय श्री राम। हमारी पूरी टीम वडोदरा से फ्लावर डेकोरेशन का काम करने के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और निःशुल्क यहाँ पर हम लोग सेवा कर रहे हैं और टन्स ऑफ टन्स है यहाँ पर क्विंटल में हम लोग फूल लेके आए हैं और राम मंदिर के डेकोरेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। कौन से राज्य से कौन से फूल आए हैं? ये गुजरात से आए हैं, बड़ौदा से, और ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,000 किलो फूल आए हैं। So obviously there is a lot of excitement because most importantly not only will they decorate Ayodhya but they will make sure that on the day of the Pran Pratishtha they will also have these flowers being showered on the temple using a helicopter. Let's try and get in some more details on that as well. Sir आप बताइए कि जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से ये फूलों की पंखुड़ियों को गिराया जाएगा, उसकी क्या तैयारी है? बस ये आप देख रहे हैं आपके सामने, ये सब उसकी तैयारी चली है। सब हमने इकट्ठा होकर यहाँ पे एक जगह पे फूल रखे हुए हैं। हमारे सब जो भी कार्यकर है वो सब सेवा में लग गए हैं। आपने गुजरात से कौन से फूल लाए हैं? गेंदे। हम बड़ौदा से आए हैं। गेंदे और आसोपालव है, फिर सेवंती है, सब वो 4-5 साल और फ्लैश फ्लावर भी है। आप कह रहे हैं कि लोगों ने वॉलंटरीली फ्लावर्स का डोनेशन भी किया। आप कह रहे हैं कि करीबन 4,000 किलो के आसपास गुजरात से हैं, बाकी सब राज्यों से हैं। बाहर से सब फूल आए हैं, तो आधे गुजरात से है, आधे बाहर से, कोलकाता से गेंदा करके एक गाँव है उधर से फूल आए हैं। ये सबका आयोजन बड़ौदा का स्वेजल व्यास
नाम का एक बंदा है, टीम रेवोल्यूशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हो रहा है। काफ़ी साल से उनकी मेहनत थी कि अयोध्या हम सजाएंगे, और आज वो घड़ी सच में बदल गई, वो सपना सच साकार हो गया और अयोध्या आज सज रही है हमारे हाथों से। Well, what you can also see everywhere is that there are multiple flowers. Of course, right now the priority is to assemble the flowers that can actually be, can be given. में मेन बड़ौदा से कारीगर सब Right, can be actually showered on the temple on the day of the Pran Pratishtha. But other than that, 25,000 kg flowers will be used to decorate it all over Ayodhya. That's the kind of effort that has been made. 550 volunteers, all coming in from Prime Minister Narendra Modi's home state Gujarat, and in particular from Baroda, from where Prime Minister Narendra Modi was elected to Parliament in 2014. Right, that's massive, Payal. That's really massive. We'll keep coming back to you. Please stay with us. We have Siddhant joining us live on the broadcast as well. Siddhant, tell us about the location that you are currently reporting from and the significance of the place as well. Well, that's right. I'm at Karsevakpuram, and in fact, lot of gifts are coming for Bhagwan, and these gifts will be used as a bhog, as an offering to Bhagwan. At the same time, they'll also be kept in the museum. Like lock will be kept in a museum which is being built. Right now, I'm standing near to this place in Karsevakpuram, and in fact, these people have brought in camphor, the kapoor which is used in Aarti and Puja of Ram Lalla. In fact, this group has come from Telangana, and you can see on their box it's written Jai Siya Ram. प्रथम आरती सेवा में 108 किलो कपूर समर्पण किया है इन्होंने भगवान को। आप लोग तेलंगाना से आए हैं? जी हाँ, हम लोग आपकी कैम्फर की फैक्ट्री है? जी हाँ, हम लोगों की कैम्फर की फैक्ट्री क्या है। यूनिकनेस है इस गिफ्ट में जो भगवान को आप दे रहे हैं? ये भगवान को ये दे रहे कि ये शुद्ध कपूर जो है क्या इसका निर्माण हुआ है बिना किसी रसायन के, केमिकल से। इसको केवल जो है क्या वन मूलिकाओं द्वारा जो है क्या इसका निर्माण हुआ है, और ये शुद्धता जो है क्या है राम लल्ला जी को समर्पित हो, इसके लिए हम वहाँ से निकले हैं। 2 दिन से हम लोग बिना रात और दिन बिना जो क्या है कहीं रुके हम लोग यहाँ आए हैं, और हम लोगों का ये सौभाग्य है। 108 किलो कपूर आप दान कर रहे हैं? ओके, एंड देयर यू सी देयर इज अ ड्रम व्हिच हैज बीन गिफ्टेड टू राम लला। इन फैक्ट दे आर टेकिंग दिस ड्रम टू बी केप्ट इन द म्यूजियम। भाई ये ड्रम आया है गिफ्ट में, कहाँ से आया है? तबला है, गुजरात से आया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा धीरे कर दीजिए, इसको जाने दे जल्दी में। तो ये कहाँ से आया? कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से आया। यू कैन सी दबगर समाज के द्वारा 500 किलोग्राम का है, 500 किलो का ये तबला है। सो यू कैन सी द तबला which has been brought in as a present for Ram Lalla. It has come from Gujarat, and now they are taking it to be kept in a museum that is being built for Ram Lalla. Back to you. Right, Siddhant, please stay with us. We have Shivani joining us live on the broadcast straight from Ayodhya as well. Shivani, फूल आ चुके हैं, लड्डू आ चुके हैं, तबला भी आ चुका है straight from Gujarat. There is a huge lock that we saw. Flower shower is going to be there on Pran Pratishtha Day. What else? What special arrangements can we expect on Pran Pratishtha Day apart from these things that we already saw? Well, a lot of this is happening all around the city and in fact all around the country. So it's not just, few elements of gifts that have come from all across the country. There's every state that wants to participate. There are gifts for both Ram. There are gifts from, from Janki, Sita's family, home place and city. All of these things are coming. Jewelers from across the country are making, jewelry in silver and gold and sending for the temple that is going to be used. Everybody wants to contribute. And that's the sentiment really, because this is not being seen as an occasion, only for one city anymore. This is an occasion for the entire state here. Chief Minister Yogi Adityanath himself was here yesterday itself and is going to be, keeping a tap on the developments, on the progress, on the arrangements that are being made. This is an occasion for the entire country. In fact, from people from across the world as well, who are sending stuff in some form or the other to be associated and to be part of this movement. And let's not forget, that has been the spirit of the Ram temple from the very beginning. After the judgment came, this temple, the trust, the Teeth Shet Trust was formed, and the trust invited donations. The entire temple itself, the entire temple complex itself has been funded by donations. So
it's a movement of contribution and of devotion of thousands and thousands and crores of people, and that spirit continues till today. Now, as far as the January 22 program is concerned, most of the work has already happened as far as the temple is concerned. Even the new idol has been placed. The existing Chal Murti of Ram Lalla will be brought to the new temple as well. Some people had doubts what will happen to that idol. It has been clarified, and we brought here on CNN News 18 2 months ago itself that both the idols are going to be in the Garbhagriha. They're going to be prayed to together all the time. So it's not like, the new idol will take precedence or anything like that. So both the idols are going to be in the Garbhagriha. The final set of rituals are going to take place before January 22. Other than that, as far as the temple complex is concerned, we've seen lighting go up. We've seen all kinds of decorations in terms of flowers go up. All the sanitation work has been taken care of. Very soon the compound is going to be locked down because of the Prime Minister's arrival on January 22. And around the temple, the red zone that has been declared is also going to be virtually on lockdown. Movement is going to be very, very difficult. Then around the red zone, there are other zones, and movements are going to be relaxed only as per need. So those are the preparations that are going on ground. It's going to be a very big event to pull off, not just because of the fact that 7,000 dignitaries are coming. They have to be placed at different locations. There is a massive media center. A lot of the media from not just the country, around the world is coming for this event. So a lot of people are going to be descending onto Ayodhya. It's not a very large city. Despite the kind of upliftment and development work that Ayodhya has seen, we have to keep it in mind that it is indeed a very small city, a very small town. And while it is used to seeing lakhs of devotees come, last time I was here was 2 months ago, and at that time, a festival was being celebrated and Kosi Parikrama was being done. So I saw lakhs of people on the street. So they're used to that, but then they of course were doing a parikrama. They're used to a certain type of condition. But when people will be coming in for the January 22 Pran Pratishtha, a different set of facilities, a different set of conditions will have to be made. And that really is the big challenge. As it stands, the city is really geared up for it. The people are geared up for it. They know they're putting Ayodhya on the map. They know that they're putting, on a show for all visiting dignitaries, for the Prime Minister himself and others that will be coming. So yes, the city is all geared up. It's also all decked up. All the major hotspots have already been given a facelift. The roads I saw that lead up to the Ram temple, they've all been relaid. There's been often in such small towns and cities, especially even holy towns and cities in India, there's been a problem of just how much road space is available. Encroachment has been an issue. Drainage and sanitation has been an issue. So all of those things have been taken care of. And of course, that work is going to be ongoing. Right. But roads, nice fresh roads have been laid. Drainage facilities have been upgraded. There are obviously new types of transportations that is being provided. E-rickshaws, there are electric buses that are going to be ferrying people. Because I think from today onwards, sometime today onwards, the darshan in the old temple, the makeshift temple is going to stop. Because the idol from the makeshift temple is also going to be brought into the main temple. And there no darshans are going to be allowed till January 23rd now for the general public after the Pran Pratishtha, a day after. So now from this sometime today onwards, the darshans will stop, but people still live around that area. They will have to need the transportation, etc. And a lot of strict perimeters have been set. So keeping all of that in mind, arrangements have been made. People are extremely excited. I can tell you that much. People in Ayodhya are extremely excited. I saw many people who had come from across the country here. They are extremely excited, and they're all just waiting for January 22 now. Definitely. And Shivani, as you said, that Ayodhya is all decked up, it's all adorned. It's not just Ayodhya, but the entire nation is ready to witness that grand day of Pran Pratishtha on January 22nd. A lot of facilities to be seen, a lot of ground reports to be seen. But right on the other side of this short commercial break here on CNN News 18, ladies and gentlemen. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया
Muthoot Finance. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Welcome back and thanks for staying with us. Next up, let's talk about Prime Minister Modi's developmental push for South India. He is currently undertaking a tour of South India. During his visit, he intends to explore several significant temples in the state. A key highlight includes his participation in a program at the Sri Ranganatha Swami temple in Tiruchirappalli, where scholars will recite verses from Kamba Ramayanam. Now, Prime Minister Modi has in fact reached Sri Ranganatha Swami temple already. In the evening, he will engage in Bhajan Sandhya at Sri Arulmigu Ramanatha Swami temple as well. And tomorrow, he will offer prayers at Kotan Dharma Swami temple in Dhanushkodi. Additionally, in the vicinity of Dhanushkodi, he will visit Arichal Munai as well. We have CNN News 18's Purnima Murli joining us on the phone line. Purnima, very good morning to you. Could you tell us more about these significant temples that Prime Minister Modi is going to be visiting today as well as tomorrow? Well, in fact, Prime Minister's first stop is Sri Ranganatha Swami Temple in Trichy. Right now, PM had arrived and entered the temple a short while ago. There will be a special, he will be participating in a program and will also listen to scholars reciting the Kamba Ramayana. Remember, the significance of Sri Rangam Temple in Trichy is that Lord Vishnu's deity that is there at Sri Rangam Temple was in fact worshipped by Lord Rama and his ancestors for generations, and later it was given as a gift to Vibhishna, and that idol was fixed at Sri Rangam while Vibhishna was trying to take it to Lanka. The idol somehow was fixed at Sri Rangam. The belief goes this way, and apart from that, the Kamba Ramayana was first presented to public
inside the temple premises, and therefore scholars will be reciting verses of Kamba Ramayana as well. That's the plan of action at Trichy. We are coming to you live from Rameshwaram temple here in Rameshwaram. The significance of this is that the linga that is inside the temple was worshipped by Lord Rama and Sita. It has one of the longest corridors and a beautiful architecture, and that's what this temple is famous for, and the linga inside was worshipped by Lord Rama. So Prime Minister will reach here at around 2:10 p.m. will take a snan, and then there will be special darshan and puja held inside the temple. There will be bhajans also, and apart from that there will be programs inside the temple till about 6:30 p.m. is what we are given to understand. So the belief here is that the linga inside was worshipped by Lord Rama and Sita. Therefore Prime Minister will come here, will take a snan, and then go inside, and then special programs have been arranged between 3:30 to 6:30 p.m. later today inside the temple premises. Definitely. Thank you so much, Purnima, for bringing us all those exhaustive and exclusive details straight from Rameshwaram. We'll keep coming back to you for more details through the day, as Prime Minister Modi is currently in South India visiting some significant temples. With that, it's my time up for this particular segment, but stay with CNN News 18 as we'll coming right back with more news and more ground reports coming in straight from Ayodhya. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January, when the temple opens for public viewing.
Namaste, Jai Hind, and welcome to this very special presentation under our continuous coverage on Ram Mandir for India. 22nd of January, the Pran Pratishtha of Ram Lalla at Ram Lalla Virajman will take place. But the conversations are, what does this imply? What does this signify? What does this stand for? Is this a renaissance of Bharat, the Hindu culture, the Hindu way? And how does one answer those who are continuously taking pot shots at the Hindu way of life, be it the Sanatan Dharma or the Hindu religion as a faith or as a way of life as our courts have ordained? Bharat is Hindu. Ram is integral to Bharat. So Ram, Bharat and Hindutva. Let's try and understand this. This is the first of our many series of conversations or a mini series of conversations around these issues, and we'll try and bring out certain aspects where there is a lot of misinformation and of course the narrative push that's happening. Joining us now is Swami Vijnananand. He is somebody who's educated in a Gurukul. He's a B.Tech, so he's got a science background, but he's also a Sanskrit Vidwan, understands Vedic Parampara. So he will answer a few questions. कुछ प्रश्न उनसे तो पूछेंगे तो along with a lot of other hats that he wears. But इस discussion में तो यही आपका ठीक है ना, परिचय दे रहा हूँ स्वामी जी. अच्छा है. Professor Nachiketa Tiwari is a scholar himself. He's teaching at the IIT Kanpur. He quit a fantastic job and a great academic career abroad and he's come back to Bharat to do his seva here. Then Dr. Jagmohan ji is a Sanskrit scholar himself. So Sanskritam as a language, will it be revived? He is a professor at Hindu College in Delhi. तो चलिए आप सबसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो विवाद हो रहा है, यहीं से शुरू करते हैं. ठीक है. कुछ का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा खंडित मंदिर में नहीं होना चाहिए, कुछ का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा पीएम को नहीं करना चाहिए, कुछ का ये कहना है कि विश्व हिंदू परिषद राम तीर्थ छठ ने इसको अपने आप कर लिया है, राम तो सबके हैं, फिर ये इसको क्यों नियंत्रित कर रहे हैं. इन सब का क्या उत्तर है स्वामी जी? पहले चीज है, देखो एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है ना, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है. जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको कलशाभिषेक से कम कहते हैं, है ना. और जिसको दक्षिण में उसको कुंभाभिषेक हम कहते हैं ना. अभी तो फर्स्ट बन गया है. जैसे आप देखते होंगे जिसका पास घर नहीं होता है तो पूरा जब भर बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर भी बन जाए तो आदमी गृह प्रवेश कर जाता है ना. तो कम से कम फर्स्ट फ्लोर मंदिर का तैयार हो गया तो भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है. इसमें कोई विवाद नहीं है. यही आपने देखा होगा कि सोमनाथ में हुआ. सोमनाथ में पूरा मंदिर बनने में तो वर्षों लगा, लेकिन जैसे ही फर्स्ट फ्लोर बन गया तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी. और राजेंद्र बाबू ने ही किया था. और इसमें कोई ऐसा अशास्त्रीय विधि नहीं है, सब शास्त्रीय विधान से हो रहा है. ये जो लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उनको शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान नहीं है. पहले चीज तो ये है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. मंदिर जब पूरा बन जाएगा तब कलशाभिषेकम, हम उत्तर भारत में कहते हैं, जिसको दक्षिण भारत में कुंभाभिषेकम हो, वो भी होगा. अभी तो पहला चीज शुरू हुआ. फर्स्ट फ्लोर पर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी. जो नया मूर्ति अभी शिल्पकारों ने तैयार किया है, शिल्पी लोगों ने. और वहां साथ साथ ये जो लोग कहते हैं कि रामलला विराजमान की मूर्ति का, वो भी मूर्ति वहां रखी जाएगी. वो भी मूर्ति वहां रखी जाएगी. तो एक चर और एक अचर मूर्ति, ऐसा विग्रह. हाँ, जो चल अचल कहा जाता है कि क्योंकि ये जो फिक्स मूर्ति हो गई तो कहीं जा नहीं सकती. जो भगवान रामलला विराजमान है वहां, वही भी वहां रहेंगे, उनकी भी पूजा होगी. और जब कभी वार्षिकोत्सव होगा, जैसे आपने देखा मंदिरों में नगर दर्शन होता है, वैसा उनको घुमाया जाएगा. तो दोनों की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर स्थापना होगी, दोनों का ही आसन रहेगा और जो नया जो मूर्ति उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा. तो ये पहला विषय है. दूसरी चीज है कि लोग बोल रहे हैं कि शंकराचार्य दूरी बनाए रखे हैं, विश्व हिंदू परिषद घेर लिया है. कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिसाइज करके राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं. पहले चीज तो ये कहना समझना चाहिए, जो शंकराचार्य बोल रहे हैं, देखो ये सब शंकराचार्य को कोई कभी भी हिंदू मॉडर्न हिंदू समाज ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया. इन जो बोल रहे हैं ना, ये सब शंकराचार्य ने अपने आप को डिस्क्रेडिट कर दिया है. कभी हिंदू मूवमेंट में, कभी हिंदू की रक्षा करने में, समाज की रक्षा में, धर्म रक्षा में इन लोगों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया.
ये तो जो अभियुक्त रामेश्वरानंद बात कर रहे हैं, उनके गुरु स्वरूपानंद जो थे, वो तो राम जन्म मूवमेंट का हर समय सबोटेज करते रहे, तो कांग्रेस पार्टी के खास एजेंट रहे हैं, वो तो खुद ही कहते थे। उनके रिप्रेजेंटेटिव, वो तो उनसे कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। मैं निश्चलानंद जी का बता रहा हूँ, तो निश्चलानंद जी घोर कास्टिस्ट व्यक्ति हैं, खुद आप उनसे जाके बात कर लीजिए, आप दूसरों की बात नहीं करें। इसलिए ऐसे लोगों का आज के समय में कोई महत्व नहीं, इन्होंने अपने आप को खुद डिस्क्रेडिट कर दिया है। बट हिंदुइज्म इजंट इट कास्टिस्ट? नहीं नहीं, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इन प्रोफेसर नचिकेता जी दैट हिंदुइज्म इज, दे से हिंदुइज्म मींस कास्टिज्म। अब वो SB 403 in the US, that entire thing about ancestral rights and ancestral habits, and that's where they try to say that Hinduism itself is casteist. इसीलिए जो यहाँ से आता है वो दिमागी रूप से ही कास्टिस्ट होता है, इस तरीके से वो कह रहे हैं, तो ऐसा ही है। तो इसको दो प्रकार से इस प्रश्न को देखना चाहिए। पहला तो कि जो हमारे यहाँ जो लिटरेचर है, हिंदू लिटरेचर, उसमें क्या इस चीज़ को सैंक्शन दिया गया है, और दूसरा समाज में जो है वो कहाँ से आया है। ये दो प्रश्न हैं। तो अगर आप हिंदू साहित्य देखें, हिंदू वाङ्मय देखें, और आप वेदों से शुरू करें, तो वहाँ ये कास्ट टाइप का कोई कॉन्सेप्ट उसमें डजंट कम एट ऑल। So Vedas don't talk about casteism. No. But there is a talk about varna and jati, right? Yes. In Veda, even this varna in very limited context it appears. Because Krishna also says Chaturvarna Maya Shrishtham, no? I will add here. I want to just add here. देखो हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत क्लियर है, कहते हैं कि शरीर है ना पंचभूतों से बना हुआ है ना, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, है ना, आकाश है, 5 तत्वों से बिना, तो सभी का शरीर एक ही चीज है। फिर कहता है सबका आत्मा एक ही है, तो कोई भेद है नहीं हमारे, हमारा इस तरह का कोई कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात रही नहीं। अब बहुत अच्छा महाभारत में इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है, कि जब ये डिस्कशन होता है तो कहते हैं कि देखो सब लोगों ने अपने अपने समय के अनुसार अपना अपना प्रोफेशन अडॉप्ट किया, है ना। Correct. उस प्रोफेशन के साथ साथ ये लोग बन गए। और रही बात मॉडर्न टाइम में, तो देखो आपने देखा थर्स्टन था, अल्बर्ट थर्स्टन, जिन्होंने एक पुस्तक लिख दी कास्ट एंड ट्राइब इन सदर्न इंडिया, और कहीं बिना आउट ऑफ बॉक्स कहीं नो। Welcome back and thanks for staying with us. We are flashing the live visuals of Prime Minister Modi currently in Tamil Nadu. He will be visiting some significant temples there in Tamil Nadu. It comes as the developmental as well as the infrastructural push straight by Prime Minister Modi for South India. Remember, he is currently undertaking a tour of South India, and during his visit, he intends to explore several significant temples, and currently we are flashing live visuals of Prime Minister Modi entering one such temple. A key highlight includes his participation in a program at Sri Ranganatha Swami Temple in Tiruchirappalli, where scholars will recite verses from Kamba Ramayan. Prime Minister Modi has even reached Sri Ranganatha Swami Temple. We are flashing the live visuals on your screen as well. In the evening, he will engage in Bhajan Sandhya at the Sri Arulmigu Ramanatha Swami Temple, and tomorrow he will offer prayers at Kotan Dharma Swami Temple in Dhanushkodi as well. Additional in the vicinity of Dhanushkodi, he will visit Arichal Munai as well. We have CNN News 18's Purnima Murli back with us on the broadcast. Purnima, tell us more about Prime Minister Modi's arrival at the temple. He has already entered, we believe. We are flashing the visuals of his arrival and his entrance at the temple as well. As you can see the visuals on your screen, Prime Minister Narendra Modi has entered the Sri Rangam temple in Trichy. That's the first temple visit as per the schedule. Will be there till about 12:30 and participating in a special program. Scholars will be reciting the Kamba Ramayana. The Kamba Ramayana was first, that book was presented to the public inside the temple complex, and that's one of the significance, and that's why Kamba Ramayana will be recited by scholars in the presence of Prime Minister Narendra Modi. That will happen till about 12:30, and after 12:30, Prime Minister will leave from Trichy and will come to Rameshwaram, and here at the Ramanatha Temple, Prime Minister is scheduled to be here from 3:30 till about 6:30. He will go take a snan, come inside and participate in a special puja and darshan. The significance of Sri Rangam Temple is the belief is that Lord Rama had given a gift to Vibhishana, the idol that we find.
I think we lost connection with Purnima over there, but let's talk about the temple that Prime Minister Modi is currently in. It's a very significant temple of Tamil Nadu. Apart from that, the Sri Arulmigu Ramanatha Swami temple, where Prime Minister Modi will be visiting tomorrow, is another significant temple of Tamil Nadu. Ladies and gentlemen, the Prime Minister is visiting Tamil Nadu, in fact the entire South India. Remember, this is his third trip to South India. It comes as a developmental push for South India and run up to the Lok Sabha elections 2024. It's extremely crucial as well, because Pran Pratishtha ceremony is all slated to happen on January 22nd. And amidst that, Prime Minister Modi is currently touring the South India. And currently, he is at Sri Ranganatha Swami temple. We have Purnima Murli back with us on the broadcast. Purnima, could you tell us more about the significance of this particular temple, as we are also expecting Prime Minister to visit Sri Arulmigu Ramanatha Swami temple tomorrow as well? Well, currently the visuals on your screen, they are live from Trichy district. Right now, Prime Minister is inside the Sri Rangam temple, will be participating in a program. There will be scholars reciting the Kamba Ramayana there, and that will take place till about 12:30 p.m. So currently, Prime Minister is inside the Sri Rangam temple, and the Ramayana Connect of the Sri Rangam temple is the belief is that Lord Rama and his ancestors worshipped an image of Lord Vishnu. That in fact was given as a gift to Vibhishna, Ravana's brother, and while Vibhishna was trying to take that idol to Lanka, in the middle at Sri Rangam, the idol was fixed, and that's the idol that will be worshipped today by Prime Minister Narendra Modi, and that's the Ramayana Connect. And another interesting part about the temple is the Kamba Ramayana. The first Kamba Ramayana was presented to the public in the presence of poet Kamban inside the temple premises, and therefore Kamba Ramayana will be recited by scholars in the presence of Prime Minister Narendra Modi. That's the Ramayana Connect as far as the Sri Rangam temple goes. And here we are coming to you live from Rameshwaram, and this temple is also significant, is also connected with the Ayodhya inauguration. Prime Minister will be arriving here at around 2:10 p.m. will take a snan, and there will be special puja and darshan arranged inside. There will be bhajans, and the program will go on till about 6:30 p.m. And the belief here is that the Shivling that is placed inside the Rameshwaram temple here was worshipped by Lord Rama and Sita, and that's why this temple again has the Ramayana Connect, and this will be significant because Prime Minister will be visiting this place. There will be special Ram chants, and there will also be a special bhajan that will take place in the later part of the day. And after this, tomorrow Prime Minister will be visiting Danishkodi, another significant temple. So we'll have to wait for more details as to how it pans out. But all these temples have played a significant role. They have the Ramayana Connect, and therefore ahead of the grand 22nd event, Prime Minister's visit to temples in Tamil Nadu, in Kerala, in Maharashtra and Andhra Pradesh are very significant. Heavy barricades in place, heavy police security. It's not open for public because the Prime Minister will be arriving here at around 2:10 p.m. So all these places, people are happy that Prime Minister is visiting these places, and it could perhaps boost spiritual tourism in places like Rameshwaram and Trichy, Sri Rangam, where Prime Minister is making his visit. People are starting to read about the significance of these temples, and people here are ready to welcome Prime Minister Narendra Modi as well. And Purnima, apart from boosting the spiritual tourism, as you just mentioned, this visit of Prime Minister Modi is, as we are learning, is the third visit to South India, and his visit is coming ahead of the Grand Pran Pratishtha ceremony on January 22nd. How crucial is this South visit going to be? Well, ahead of the grand 22nd event, the 3 temple visits in Tamil Nadu, each of these temples does have a significant Ramayana Connect, and therefore Prime Minister's visit is significant, especially Sri Rangam temple. That particular image was worshipped by Lord Rama. The deity there was worshipped by Lord Rama and his ancestors, was given as a gift which was supposed to be taken to Sri Lanka, but it found its way inside the Sri Rangam temple premises, and therefore that
that is a very significant temple as far as the Ayodhya inauguration on the 22nd is planned. And here at Rameshwaram temple as well, the Shivling here, it's one of it has a beautiful architecture. The temple has a beautiful architecture, one of the longest corridors that you can see as far as the temple architecture is concerned. And and this is also significant because the Shivling inside, people believe that it was also worshipped by Lord Rama, and therefore ahead of the 22nd event, temples like these which do have the Ramayana connect, which do have a connect with the Ayodhya, and also significant because Prime Minister will be visiting these places, will be taking a stand. There will be a special program here from 3:30 to 6:30 p.m. All these have an Ayodhya connect, and that's why Prime Minister's visit to these temples ahead of the grand ceremony planned is very crucial and significant. You can see police presence here, barricades in place. This is the entrance through which Prime Minister will be entering the temple, and then will take a snan, and there will be a special puja and darshan held here. So heavy police presence, and 2:10 p.m. is when Prime Minister will reach this place. And Purnima, if we were to talk about the mood like there at the ground, since Prime Minister Modi is there currently inside the temple, what is the mood like there on the ground with regards to the Pran Pratishtha ceremony on January 22nd? How excited people are there where you are currently reporting from? Well, in fact, when we traveled to Trichy earlier and spoke to people, people were excited because they said that after 500 years, Ram Mandir is finally being constructed, and that's the sense that we got from the ground. The excitement is evident from people because they are waiting for the 22nd event, and Prime Minister's visit to these temples are also significant. Every resident of Rameshwaram and Srirangam are ready to welcome Prime Minister Narendra Modi, say that they've been waiting for the construction of Ram Mandir, and finally it's happening after 500 years. That's all the right, sense Purnima, that we've got. I apologize to interrupt you over there. We'll keep coming back to you, but right now we are flashing the live visuals of Prime Minister Modi praying to elephant there inside the Sri Ramanatha Swami temple. Pardon. ये बहुत ही खास तस्वीरें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से, और ये मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर वैष्णव धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो इस मंदिर में जो पूजी जाने वाली मूर्ति है उनका और अयोध्या के बीच भी संबंध का उल्लेख है। ये वैष्णव धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो यहां जिस मूर्ति की पूजा की जाती है उनका और अयोध्या के बीच भी संबंध का काफी उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की जिस मूर्ति की पूजा भगवान श्री राम और उनके पूर्वज किया करते थे उसे उन्होंने लंका ले जाने के लिए विभीषण को दे दिया था, और फिर वही मूर्ति रास्ते में Coming back to you, Purnima, we just saw Prime Minister Modi praying to elephant. He is currently there inside the temple. Could you tell us the significance about the statue, the idol inside the temple? Because we are learning that it holds a special significance as far as its connection with Ayodhya is concerned. Alright, I think we lost connection with Purnima over there. We'll try to reconnect, but let's talk about the temple that Prime Minister Modi is currently in. We are getting the visuals of Prime Minister Modi's arrival at the temple, him praying the elephant as well. Located in Srirangam, Trichy, where Purnima Murli has been giving us all the live updates from. This temple is one of the most ancient temple complexes of the country, and in fact it finds a mention in various ancient texts as well, including the Puranas and the Sangamera text as well. We are learning that Prime Minister Modi is on his third visit to South India. It can be considered as his
developmental as well as infrastructural push as well. We saw a grand road show held by Prime Minister Modi yesterday, Khelo India being launched there as well, him meeting the Chief Minister as well. Now talking about currently the temple he is in, because certainly as it was told by our correspondent Purnima Murli earlier, that it is going to give a big boost to the spiritual tourism of the sector, of the state particularly, and how excited the people from South India are as far as the Pran Pratishtha ceremony of January 22nd is concerned. We have Purnima back with us on the broadcast. Purnima, my question to you was, could you tell us the significance of the particular idol that has been kept inside this temple where Prime Minister Modi is currently at, and the mention that it has as far as its connection with Ayodhya is concerned in the Puranas and in fact the Sangam era texts? Sri Ranganatha Swami Temple is one of the ancient temple complexes in the country. In fact, it has a very grand architecture. Inside the Sri Ranganatha Swami Temple, there is an idol of Lord Vishnu, and that is believed to have been worshipped by Lord Rama and his ancestors, and later it was given as a gift to Ravana's brother Vibhishna, and Vibhishna was all set to take that idol or the deity to Sri Lanka, but on the way the idol found its way at Sri Rangam and it was fixed there, and then the temple was built, and that's the belief that that the temple has. Apart from that, Kamba Ramayana was that particular book was in fact presented to the public inside at some place inside the temple complex, and that's why today's scholars will be reciting the Kamba Ramayana. So these are some of the interesting connections that we've seen as far as Sri Ranganatha Swami Temple is concerned. It's in Trichy. The idol, the idol and the deity kept there was worshipped by Lord Rama, and that is the idol that found its way inside the Sri Rangam temple, and that's the belief and the and that's what people say, and they are very proud of the fact that yes, just before the Ayodhya grand ceremony, Prime Minister will be visiting the Sri Rangam temple in Trichy, and they are very happy. They welcome. They say it's a proud moment. It's only going to boost spiritual tourism. A lot of people have been reading up on the temples that Prime Minister has been visiting. As you rightly said, in the south of India, Prime Minister has already visited temples before that have a Ramayana connect in Kerala and Andhra Pradesh, and now in Tamil Nadu there are 3 significant temples with a Ramayana connect that Prime Minister will be visiting. He'll be participating in a program at the Sri Ranganatha Swami Temple in Trichy, and will also listen to scholars reciting the Kamba Ramayana in different languages, and then will head to Rameshwaram, and this is the Ramanatha Swami Temple in Rameshwaram. You can see there's no public movement here. Prime Minister will be reaching here at around 2:10 p.m. This is also this temple is also a very significant one, because the Shivling that is kept inside, that is placed inside this temple, was worshipped by Lord Rama as well as Sita, and that's the belief about the temple, and it has one of the longest corridors, and it's one of the beautiful architectures that we've seen as far as the ancient temples are concerned, and this is also a very famous temple. A lot of tourists come here, and now with Prime Minister visiting the Rameshwaram temple here in Rameshwaram, it is going to boost spiritual tourism, is what the public here, the residents here believe in, and they are happy that many people will know and read up about these temples and the history of these temples, the significance of these temples, and this is also going to boost spiritual tourism across the country, and places where Prime Minister is visiting, spiritual tourism will also increase, is the belief of people we've been speaking to since yesterday. Definitely. Purnima, we'll request you to please stay with us. We have CNN News 18's Payal Mehta joining us on the phone line as well. All right, I think we lost connection with with Payal over there. But Purnima, coming back to you, we are learning that there are going to be several projects and Prime Minister Modi in fact is going to lay the foundation stone of those projects. Could you just quickly give our viewers some details about that as well? Well, the plan till the 21st, which is till tomorrow, is only darshans and special pujas at these places. For example, the Ramanatha Swami temple here, Prime Minister will take a snan, will get inside. There will be special programs held, there will be bhajans held, there will be recitations of the Ram Katha in 8 different languages, where Prime Minister will listen to those Ram Kathas, and then there will be a special bhajan session as well. Till 6:30 p.m. Prime Minister will be here
here. After that, Prime Minister tomorrow will head to Dhanushkodi, which is about 25 kilometers from here. That's the plan of action. And at Dhanushkodi, Prime Minister will visit the Rameswaram temple, and that is where Lord Rama, that is where Lord Rama with a bow will be seen in Dhanushkodi's temple. So these are the three temples that Prime Minister will be visiting today and tomorrow first half, and then will leave from Dhanushkodi. So this is the schedule that the Prime Minister's office has released, and it's purely a visit before the grand ceremony, and these temples with the Ramayana Connect will be significant because Prime Minister will be visiting, will be holding special pujas and darshans before the grand ceremony that's planned in Ayodhya on the 22nd. Definitely. Purnima, as we are learning that Prime Minister Modi. All right, Purnima, we'll keep coming back to you. Please stay with us. Right now, it's time to slip into a very short commercial break. We'll keep coming back with more updates right on the other side. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और ट्रस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Welcome back, and thanks for staying with us. We are flashing the visuals of Prime Minister Modi currently at Sri Ranganatha Swami Temple there in Trichy. We have Purnima Murli back with us on the broadcast as well. Purnima, if we were to talk about the connection between Ayodhya and Tamil Nadu, we are learning that special granite has been sent out to Ayodhya for the construction of the temple. Apart from granite, do we know anything else that has been sent out to Ayodhya? If the devotees have sent out anything for Lord Ram in Ayodhya?
Well, special trains are being arranged for devotees to visit Ayodhya, and that's done on behalf of the BJP state unit. Apart from that, there are temples that have donated silk saris for the deity at Ayodhya, but there have been several other states that are planning to send silk saris for the deity there. But a lot of devotees are trying to contribute as much as possible. But the doors and windows from Mahabalipuram, at least 48 sets have gone from Mahabalipuram, is what we are hearing. So these are some of the interesting developments as far as preparations for the grand ceremony are concerned, and contribution from Tamil Nadu for Ayodhya is concerned. Right. Purnima, you just told us that the main deity inside Sri Ranganatha Swami temple is of Lord Vishnu. Lord Ram used to pray to that idol. Could you just give us a little bit of context about the history of the temple as well? Well, Sri Ranganatha Swami temple is known for its grand architecture. In fact, the belief is that the idol of Lord Vishnu was worshipped by Lord Rama and his ancestors, and in fact that idol was given as a gift to Vibhishana, Ravana's brother. Vibhishana was all set to take the idol of Lord Vishnu to Sri Lanka, but in the middle the idol was fixed at Sri Rangam and the temple was built around it. That's the belief. The other interesting fact about the temple is that Kamba Ramayana was presented publicly somewhere inside the temple complex. Remember, Ranganatha Swami temple is one of the ancient temple complexes in the country, and it's got a very grand architecture, and the significance of that is that the idol that's there was worshipped by not just Lord Rama but by his ancestors as well, and that's the significance, and that's the Ayodhya Connect, and that's why Prime Minister is participating in a program. Kamba Ramayana will be recited by scholars till 12:30. That will take place. That program will take place, after which Prime Minister will leave from there. So that's about the temple, Sri Ranganatha temple. Yesterday we've been speaking to a couple of people, because yesterday the temple was open for public. A lot of them are happy, and they in fact were happy to welcome Prime Minister Narendra Modi. Now they say with Prime Minister's presence, Sri Rangam temple will not just be famous across the country but across the globe. A lot of people will start reading about the significance, the history of the temple, to know the Ayodhya Connect. That's what people have been saying, and they were very proud of the fact that Prime Minister is visiting the Sri Rangam temple, and that they believe will promote tourism, will promote spiritual tourism. Many people, not just from the country but across the globe, will now show interest in such ancient temple complexes in the country. And Purnima, not just the temple in Trichy, he'll be visiting Rameshwaram as well. Could you tell us more about the Sri Arulmigu Ramanatha Swami temple there in Rameshwaram, where Prime Minister Modi is slated to visit? Well, we are coming to you live from the Rameshwaram temple here. If I can ask my camera person to show you the kind of preparations that you can see. A lot of security presence here ahead of Prime Minister's visit. Prime Minister will reach the temple at around 2:30 p.m. is what we are hearing. But to give you a background and the Ayodhya Connect of this particular temple, the main deity here is the Shivling, or a form of Lord Shiva, and the belief is that the main lingam in this temple was installed and worshipped by Lord Rama and Sita. Remember, the corridor inside the temple is one of the longest corridors, and is also one among the 12 Jyotirlingas, which is why it is significant. You can see preparations in full swing ahead of Prime Minister's visit. 2:10 Prime Minister will come here. He will go take a snan and then come back. There will be a special puja and darshan held here inside the temple. There will be Ram Katha recited in 8 different languages, and after that there will be a bhajan session also conducted till about 6:30. There are programs scheduled inside the temple, so very significant, because the lingam it is believed to have been installed and worshipped by Lord Rama and Sita. So a very significant temple, which is why for 3 hours there are quite a number of programs that will be held inside the temple. Prime Minister will reach here at around 2:10 p.m. as per the schedule, and then all action will take place inside this temple, which also has an Ayodhya Connect.
Definitely. Purnima, please stay with us. We have CNN News 18's Aman Sharma joining us on the phone line as well. He's currently in Ayodhya. Aman, coming to you with the question of the scheduled visit of Prime Minister Modi to the significant temples there in South India. We are learning that this is his third trip to South India and the kind of developmental push that Prime Minister Modi is actually aiming to. How significant his trip this time to Tamil Nadu is going to be as far as the Lok Sabha elections of 2024 are concerned? Well, right now he's on, as you correctly said, his third visit to South India this year already. First he was in South India on 2nd and 3rd of January, then he went again last week, and now again today. He's completing his second day of his South India visit. He's there tomorrow as well before returning to Delhi. This trip of the Prime Minister significant because this is the series of visits he's doing to South Indian temples, which are closely associated with Lord Ram, with the Ramayana. As we all know, Purnima was just saying, he's at the Sri Rangatha Swami temple in Tiruchirappalli today. Their scholars will be reciting verses from the Kamba Ramayana. As Prime Minister Modi comes there, he will also be visiting later today Rameshwaram to provide darshan and puja in the Sri Arimagu Ramatha Swami temple. And then, there also tradition of attending Ramayana, chanting in various languages will be done when Prime Minister will participate in this Sri Ramayana Parayana at this temple. He's also scheduled to conduct darshan and puja at the Kunthanadu Swami temple in Dhanushakodi. This is in proximity to Dhanushakodi. He'll also visit the Arichal Munai, believed to be the location where the Ram Setu was constructed. So clearly the Prime Minister, we have seen him earlier also going to temples in Andhra Pradesh, in Maharashtra. He went to Panchvati to start his 11-day Anushthan from there. And all these temple visits, Sakshi, of the Prime Minister in the last few days, and 3 of them today itself, are a part of his 11-day Anushthan, in which he is travelling across the country to soak in his devotion for Lord Ram. Before he comes to Ayodhya on 22nd of January, PM is taking this religious kind of a pilgrimage across the country to various temples to ensure that his Anushthan is pious, his Anushthan, 11-day Anushthan, in which he's not only drinking coconut water, sleeping on the floor by laying a blanket, nothing else. And this is the kind of Anushthan that the PM is keeping, and these trips to various temples show his devotion towards Lord Ram, because he will be the Mukhya Yajman at the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya on January 22nd. Sakshi. Right, Aman and Purnima, thank you so much for bringing us all those crucial details. We'll keep coming back to you for more updates as far as Prime Minister Modi's tour to South India is concerned through the day. Right now, we are shifting focus. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भरा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भरा, राम सिया राम सिया राम। Well, before the grand Pran Pratishtha ceremony, the golden bow and arrow, Ram Lalla's first complete look, has exclusively been revealed today following the purification of Temple Sanctum Sanctorum. The holy water of river Saryu, Vastu Peace and Anna Divas rituals will be performed as well. The original idols of Ram Lalla Virajman and his brothers will be installed in front of the new idol inside the Garbhagriha. On Monday, a floral ceremony is scheduled at the newly built Ram temple as well. Now, Uttar Pradesh is formulating a 6-month plan for the post-January 22nd period, anticipating a significant influx of daily pilgrims to Ayodhya. High alert in Ayodhya, in fact, in view of the ceremony, has been imposed. All entry routes to Ayodhya have been sealed as far as we are receiving the information from the reports. Ban has been imposed on entry of vehicles of Ram devotees in Ayodhya from today onwards. The entire mood in Ayodhya is Ram sabke hai aur sabke liye Ram hai, and everybody is trying to bring in whatever they can to contribute to this big Pran Pratishtha ceremony. Prime Minister Narendra Modi is coming here on the 22nd of January, but before that, his home state is already here. There are 550 volunteers who have come in from Baroda, from where Prime Minister Narendra Modi was elected to Parliament in 2014. And what they brought with them is something very, very landmarkish. They brought flowers from various states as well. There's
they have bought about 25,000 kgs of flowers, and these flowers have been sourced from as many as 7 to 8 states. And what they plan to do is they plan to decorate the whole of Ayodhya as well. A very, very well coordinated effort that you can see. Actually, there is a lot of people around, youth there. They've come in from Baroda. They want to actually decorate the whole town of Ayodhya, in a way make their own contribution as far as this Ram Mandir push is concerned. This is a beautiful Kar Sevak Puram. In fact, they have also built tent city here to accommodate people from Sadhu Samaj, those who will be coming for the inauguration. So right now I'm going to show something very unique to our viewers. So this is a laddu. This is the laddu of 1265 kgs, and this laddu has arrived from Hyderabad. It has taken 3 days for the creator of this laddu to take laddu to Ayodhya from Hyderabad, and this laddu is for Lord Rama, and I'm being joined by the person who is responsible for this fabulous job. Sir, ये बताइए कि कितने दिन लगे इस लड्डू को बनाने में, और इसके पीछे का जो थॉट था वो क्या था? हम लोग 2000 में श्री राम कैटरिंग बोल के हैदराबाद में स्टार्ट किया। करने का टाइम में हम संकल्प करा, अगर राम जन्मभूमि जब बनता, जब तक 1 किलो का हिसाब में, जब तक 1 किलो का हिसाब में इतना बड़ा लड्डू बना के भगवान को समर्पण करना बोल के सोचा था। इसलिए राम मंदिर बन गया। बनने के बाद इसलिए वो बात का ऊपर वो लड्डू बना के इधर लेके आया। तो ये क्या, इसमें प्रोडक्ट क्या यूज हुए, इंग्रेडिएंट्स क्या है लड्डू के? इसके अंदर 350 किलो आटा है, बॉम्बे आटा है, और 700 किलो शुगर है, 40 किलो काजू है, 35 किलो बादाम है, और 5 किलो किशमिश है, 5 किलो अपना जीडिपप्पू काजू है, और अपना शुगर है, घी है 40 किलो, जाफरान है। Well, right now I'm at Kar Sevak Puram, and in fact this very special lock and key has arrived from the city of locks, which is Aligarh, and this lock is of 400 kgs, and these 2 keys are of 30 kgs each. Now this is a special gift that has been brought in to Ayodhya for Ram Lalla ahead of Pran Pratishtha. I'm being joined by Sadhvi ji. Will speak to her. आप कहाँ से आए हैं और ये क्या कल्पना थी, ये ताले और चाबी को राम लला को भेंट करने की जो कल्पना थी, ये कहाँ से ये आइडिया आया? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। डेफिनेटली अलीगढ़ जो है वो ताले के लिए फेमस है, तो ऐसे में हमें यही लगा कि अलीगढ़ वासियों की ओर से जो है ये जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताला है, हमारी जानकारी में वो बनाया जाए। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताला है? जी जी जी, हमारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाया अभी तक? जी, अभी तक तो सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के चरणों में करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करने के लिए लेके आए हैं, और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद समूचे अलीगढ़ वासियों को मिले, वहाँ के उद्योग जगत को मिले, क्योंकि वो ताले के लिए फेमस है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको एक पहचान मिले जब यहाँ के म्यूजियम में ये रखा जाएगा। और अब क्योंकि अयोध्या जो एक इंटरनेशनल धार्मिक स्थल बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो ऐसे में इस ताले को जब लोग देखेंगे तो हमारे अलीगढ़ को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान मिलेगी। Well, those were some of the reports that we collected from Ayodhya for our viewers, but let's talk about some of the salient features of Ram Lalla's idol there in Garbhagriha of Ayodhya's temple. From Vishnu avatars to swastik, Ram Lalla's idol depicts all the significant symbols of Sanatan Dharma. This is arguably the most detailed idol ever made of Lord Ram. First up, 10 avatars of Lord Vishnu is going to be depicted in this particular idol that we are talking about. 10 avatars of Lord Vishnu. And if we are talking about Lord Ram, how can we not talk about Lord Hanuman? Well, Lord Hanuman is going to be sitting right next to Lord Ram, near right foot of Ram Lalla himself. Apart from that, Lord Garuda will be near left foot of this Ram idol in Ayodhya is what we are learning. Let's talk about other Sanatan Dharma symbols. Swastik, Om sign and Chakra, Gada, Shankh signs are going to be there. It's extremely significant as far as the design of this entire structure, this entire idol is concerned. Idol's face has Surya Narayan and Ambhanandal around it is what we are learning. Ladies and gentlemen, the idol in fact depicts Lord Ram as a 5-year-old child, the Bal Roop of Lord Ram in a standing posture. It's 51 inches tall. It was sculpted by Mysuru-based artist Arun Yogiraj.
We have some more interesting reports lined up for you in the pipeline. Let's take a look at that as well, and we'll then talk about the information that we are currently collecting straight from Ayodhya. So we are starting in this electric bus from the Ram temple premises, and this electric bus will take us right till the Lata Mangeshkar Chowk. This is the bus which devotees are using to travel in Ayodhya because other restrictions have come up, so everybody is traveling in these buses. तो एक बार पहले हो जाए जय श्री राम। तो राम लल्ला के मंदिर से हम शुरू हुए हैं और हम आगे जा रहे हैं। अभी लेफ्ट पे हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी आएंगे। तो भाई साहब कैसा माहौल है अयोध्या में? बहुत सुंदर लग रहा है भाई साहब, और हम लोग माँ विंध्यवासिनी के धाम से आए हुए हैं और हमारे यहाँ से देवराहा हंस बाबा की तरफ से 1111 मन लड्डू का परसों रामलला को भोग लगेगा। बहुत ही रमणीक और बहुत ही मनमोहक उनकी मूर्त को देख के ऐसा लगता है कि सारे कष्ट और सारे जो हैं कि भाव व्याधा दूर हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम राजस्थान से हैं जी। हाँ। तो दूर से लोग आए हैं, तो क्या 23 तारीख तक रुकेंगे रामलला के दर्शन के लिए? 23 तारीख आदेश राम जी का 27 तक है। हम यहाँ पे मुंबई से आए हैं, तो 17 को आ गए। भगवत गीता हम बांट रहे हैं, इस्कॉन की तरफ से आ रहे हैं, फ्री में भगवत गीता बांट रहे सबको। अब ये खबर आ रही है कि शिफ्टिंग नहीं हो रही है, क्या खबर है? जी हाँ, पहले शाम के ये तय हुआ था कि सवेरे 7 बजे पूजा वूजा होने के बाद में दर्शन बंद रहेगा, लेकिन पूजा होने के बाद में ये चारों भाइयों रामलला को उस जगह रखा जाएगा जहाँ की गर्भगृह नया बन गया है, जो बड़ी मूर्ति लगी है, जहाँ बड़ी मूर्ति लग चुकी है। हाँ। तो यही रहा, लेकिन फिर रात में ही सूचना मिली कि नहीं आज नहीं होगा, लेकिन कारण नहीं है कि क्यों ट्रस्ट ने सूचना दी आपको? हाँ, ट्रस्ट। अच्छा, क्या अनुष्ठान ये हो रहे हैं? अब ये मूर्तियां कहाँ रखी जाएंगी? जो 4 आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर गर्भगृह में क्या अलग से कोई जगह दी गई है या वहीं नीचे रखी जाएंगी? नहीं, जैसे इतने बड़े कमरे हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए हाँ, ये जगह है। हाँ, यहाँ अस्पातित हो गए कौन? रामलला नए वाले। हाँ। और उसके बाद जगह बची। हाँ। तो वहाँ सिंहासन पर ही सब हैं। हाँ। जितने हैं। हाँ। वो सिंहासन जाएगा और सिंहासन के बाद चारों भाइयों अच्छा, को पूरा सिंहासन उठ के चला जाएगा? हाँ, वो तो जाएगा। वो चांदी का सिंहासन है। हाँ। और ये राजा साहब ने दिया था, तो वो वहाँ सिंहासन जाएगा, उसी पर ये रामलला चारों भाई को स्थापना हो जाएगी। उसके अगल बगल शालिग्राम हो जाएंगे। With all those exclusive reports straight coming in from Ayodhya, we are now slipping into a very short commercial break. Stay with us, we'll come right back. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बोलो, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को
दान में दिया हुआ है और ट्रस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can. Welcome back and thanks for staying with us. Well, 550-year-old Tapasya is going to end on the big day of January 22nd. This is going to be the end of another Vanvas of Lord Ram. It's going to be nothing less than a festival for the Ayodhya Vasis. The city is all decked up. The entire nation is waiting for the big day. Dignitaries from all the sectors are coming in to Ayodhya to witness this grand day of Pran Pratishtha on January 22nd. We have CNN News 18's Payal Mehta joining us live on the broadcast straight from Ayodhya. Payal, tell us, where are you currently reporting from? What's special about the location where you are at currently? I'm currently at the media center, which has been set up over here, in order to facilitate everybody to come and watch what's happening on the 22nd of January, and also help the media with the filing of the stories, etc. It's a huge media center which has been set up, by the government over here. Essentially, central government also very, very active part of it, much on the lines of the G20 thing that you really saw. So obviously, all around what you see is on display is what Ayodhya is all about. There's of course Saryu Ghat on display over there. There's of course the magnificent Ram Mandir which has been displayed on the walls. So that's something which has been done to set up, and these huge screens, because remember, media people from all over the country and all over the world are going to be there. In fact, INB Secretary Apurva Chandra was telling us yesterday that 27 media outlets from from foreign countries have also applied for permission to come and shoot here and come and shoot the event as well. So that's the kind of fanfare that you really see as far as this entire episode is concerned. And yes, the world is looking towards India as far as the big Pran Pratishtha ceremony is concerned. Prime Minister Narendra Modi, UP Chief Minister Yogi Adityanath, UP Governor Anandiben Patel, and RSS Chief Mohan Bhagwat, the prominent guests on that day who will be part of that ceremony which takes place at about noon, on 22nd.
But of course, saints from all over the country have been coming here so far. A lot of media personnel have also been here. A lot of VIPs are expected to come in the next couple of days. In fact, the Teeth Trust has sent invitations to about 8,000 VIPs and VVIPs across the country, starting from politicians to, of course, celebrities, film stars. So a lot of people have confirmed their attendance. So the world, it seems, is going to descend on Ayodhya come the 22nd of January. And it's a lot of task for this small temple town of Ayodhya, which will see an influx of so many thousands and thousands of people who are going to come here. Not just on the 22nd of January, but following that with the BJP starting its Ram Yatra in a way that they'll be bringing in people from all over the country to come and visit the Ram temple. That drive is going to start from the 25th of January and will go on to the 25th of March. So obviously a lot in store as far as this temple town of Ayodhya is concerned, which is looking at getting a major facelift of sorts. Definitely. Payal, please stay with us as we are preparing for the historic television broadcast on January 22nd. We have CNN News 18's Aman Sharma joining us live on the broadcast as well. Aman, as you said before, the idol of Lord Ram Virajman, along with his brothers idol Lakshman, Bharat and Shatrughan, is going to be shifted to new Garbhagriha. Could you tell us more about this new Garbhagriha as well as the old idol of Lord Ram? What happens to that? Well, Sakshi, the Garbhagriha, the new Garbhagriha in the new Ram temple, the Garbhagriha has been set up and the new Lord Ram idol has already been stapit in the Garbhagriha of the new temple. We have seen the latest pictures of the new idol also. The original idols of Ram Lalla Virajman, his three brothers and Lord Hanuman. These five idols were there in the makeshift temple so far. From these original idols of Ram Lalla Virajman, his brothers and Lord Hanuman will be shifted most probably tomorrow to the new temple's Garbhagriha. They will be kept right in front of the new idol of Lord Ram. So the new idol of Lord Ram is a standing idol of Lord Ram. In front of the new idol there will be the Singhasan where the original Ram Lalla Virajman, his brothers and Lord Hanuman's idols will be kept. The original idols of Ram Lalla Virajman are only about 6 inches in height. So, they were really small idols and sometimes devotees were not able to get a very clear darshan from a distance. This is the feedback that the Ram Temple Trust had, and that is why this new Lord Ram idol of almost 51 inches tall has been set up, which we will see in the Garbhagriha next, Sakshi. Definitely, Aman and Payal, thank you so much for bringing us all those crucial details. Straight from Ayodhya, we'll keep coming back to you for more updates on that. And with that Rammai mood here on CNN News 18, we are slipping into a very short commercial break. Ladies and gentlemen, thanks for watching so far. Starts and go right up till the Ram temple, and we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और ट्रस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery cars, and there are many of them in fact lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery cars also eco-friendly, non-polluting, the modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery cars start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing.
behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even not. देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है। कण कण में राम है और हर सांस में राम है। जीने का सबसे उत्तम नजरिया राम है। राम जो है हम सब के लिए राम है और राम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। राम ही गति है, राम ही मति है और राम ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। Namaste, Jai Hind, and welcome to this very, very special broadcast. It's Ram Mandir for India. I'm Anand Narsimhan, and ladies and gentlemen, even as all of Bharat is waiting for a grand Pran Pratishtha of Ram Lalla at Ram Lalla Virajman, the Bhavya Ram Mandir that's going to be consecrated on the 22nd of January, one has to look back and understand that there has been a lot of pain, lot of suffering, lot of struggle, legally and otherwise, not just in the decades after independence, but for centuries, even when Bharat was under colonial control. There has been this struggle to get Ram Lalla his rightful place, his Janmbhumi. In this conversation now, we have some very, very interesting people who had different roles to play and somewhere or the other have been connected with this Ram Mandir movement. They have felt it evolve and they have been a part of it. Kishore Kunalji is with me, who is part of the entire mediation committee. So if somebody can talk about the struggle, well, he's the right person because he tried to bridge the Hindu Paksh and the Babrid Masjid committee or the Muslim Paksh. Gajendra Chauhanji, an actor par excellence who's essayed some phenomenal roles. He's also the Vice Chancellor of the only deemed university of visual arts, performing and visual arts, that offers you a degree in cinema, and it's based in Rohtak in Haryana. So Gajendra Chauhanji, aapka naya avatar, a new avatar. Good to see you here. Thank you very, very much. Karthik Chopra represents the Nirmohi Akhada, a lawyer by profession, and he and his team and Nirmohi Akhada have been perhaps one of the prime people who have laid down a lot of lives over centuries in this fight, which has been since the 1700s, if not more. And we also have with us a Kathavachak, and he is the Shastri Hari Tiwari ji. Namaste. Abhar aapka. Thank you very, very much. But Kishore Kunalji, let me start with you first. It's a moment for celebration for everyone, but it has been a period of great struggle that we are seeing it come to fruition. How would you look back at those times, and did you ever think that you would be sitting here thinking about when am I going to do a darshan of Ram Lalla in the temple that has been built for him, and such a grand one at that? I have been associated with Ayodhya since 1990. I was OSD on Ayodhya during the days of three prime ministers, Mr. VP Singh, Mr. Chandrasekhar and Mr. Narsingha Rao. All negotiations between the two parties were conducted under my supervision. So I know many ins and outs of the whole journey of negotiation as well as solution which came in 2019. And initially the stress was on the evidence. So what I did that I collected evidences and I wrote two books, Ayodhya Revisited, with a foreword from former Chief Justice of India, Justice G.B. Patnaik, and another book that I wrote as a historian. And I replied to the all baseless allegations made by so-called progressive historians. The second book I wrote for the Supreme Court. The name of the second book is Ayodhya Beyond Adduced Evidence, and the foreword was written by former Chief Justice of India, Justice M.N. Venkatachalaiah Sahab. And both wrote the foreword on the merit of the book that helped a lot in deciding the case in favor of Ram Lalla ji. And I have been fortunate enough that earlier I was associated with
Mahavir Mandir Patna, Hanuman Temple at Patna. I got it reconstructed. Then I had the fortune of being associated with Amawa Mandir, which I renovated. And I had visualized that Ram Lalla ji will win. So I left everything. I was an IPS officer. I took voluntary retirement for Indian Police Service. Then I was made Vice Chancellor of Sanskrit University. Thereafter I was Chairman of Bihar Hindu Religious Trust Board for 10 years. I left everyone, every post, came to Ayodhya since in 2016. I made this hall, renovated the temple, and they installed Ram Lalla ji just idol on 8th November with the sankalp that Ram Lalla ji must win comfortably so that this temple is built. And next day judgment came, and that day we announced that Mahavir Mandir Patna will give 10 crore rupees towards the construction of the Ram temple. 8 crores we have deposited. Every year we have to deposit 2 crores. Remaining 2 crores we are depositing on 15th January 2024 before the Pran Pratishtha. Secondly, within a fortnight of the judgment, we started Ram Rasoi in Amawa Ram Mandir. The entire cost is borne by Mahavir Mandir Patna. Every day 4,000, 5,000 people come and they take free meal, and we give such a delicious meal that people should remember that when he went to Ayodhya, he visited Ram Janmabhoomi temple, he visited Hanuman Gari, and he had Ram Rasoi run by Mahavir Mandir Patna in Amawa Mandir. So he will like this bear of Sabri. Ram always remembered that. So the pilgrim who comes to Ayodhya should remember our Ram Rasoi for all the time in his life. So we are doing that with success. But so much astha and so much shraddha, Kishorji, if I may ask you, why? And if the force of the astha is so strong, so powerful, didn't those, not know this before 1990? Did it have to come to a position where, a structure had to be demolished? Did it have to have so much of, angst about it? There were so many people who say so many things about it. But from you, as a core asthai, as somebody who's been through the thick and thin of it, at some point did it frustrate you that for me as an asthai, and for those who also know where my astha is, when my astha is, why this entire fight on the streets, in the courts, everywhere, and deny something that is so strong? I can feel it from you. How much of Ram means to you and Ram Lalla means to you. So I'm asking you this. I have been a student of Sanskrit and history, so I know the importance of Ram in the country and the whole world, particularly in Southeast Asia. Valmiki has written Ramo Vigravan Dharma. Ram is the embodiment of Dharma. And in fact, whatever ideals a nation can think of, Ram represents all those ideals. If you want to find an ideal son, no one can substitute better than Ram as a son. If you want to find an ideal brother, Ramayan gives that reply. Likewise, ideal friend, ideal even king, ideal husband, as well as ideal foe. Very few people know that it is written in Valmiki Ramayan that in first encounter, Ram had almost defeated Ravan. He had made him immobile, but asked him to come next day prepared. So he has been an ideal foe also, enemy. So this is whatever Indian culture is there, the greatest impact is that of Ram. And when I was associated with 3 prime ministers, there were moments when we were under depression that nothing will happen. But there were moments also when we thought that solution is coming, like last days of Mr. Chandrasekhar ji, that he had taken a decision, but unfortunately because of some espionage from Haryana police, Congress withdrew the support and the ministry went. So I have come here at OSD dozens of times
and I had made plan if temple comes, how it should be built. And during the days of Nrsimha Rao ji, it was my suggestion that this 70 acres of land was acquired. That time, temple was to be built on the site where Ram Lalla ji was Birajman, and in some corner, mosque was to be built. This was the idea of Mr. Nrsimha Rao ji. So there were ups and downs when we thought that people stalwarts like Paraman ji, Ashok Singhal ji, they could not see this day. Yeah. So we were also apprehensive whether we will be in a position to see this D-Day or not. But we are fortunate enough to have this day of great joy on 22nd January when Ram Lalla ji returns to his home. Earlier he was in exile for 14 years. This time he has been away from his home for centuries. Fantastic. Gajendra Chauhan ji, let me ask you. The world remembers you, knows you as Yudhishthir, but you are so much more than that, and you've essayed so many more characters. Abhi aap mujhe bata rahe the, and you just told me that you are also essaying roles of Janak and also Parshuram that you're going to be playing. So what does Ram mean to you? And when you were essaying these characters, did you ever realize that the struggle to even assert or to establish the place where he was born is going to be so big, so vast? Big success comes after big struggle, big challenges. बड़े दुख की बात है कि आज रामायण के ऊपर महाभारत हो रही है। राम जो है वो हैं जो इस देश की आन बान शान पहचान, हमारी पहचान है राम। इसलिए पूरा देश जो है राम में हुआ है 22 जनवरी के लिए, कि जिस दिन राम लला जो है अपने ओरिजिनल स्थान पे आके उनका उस मंदिर में स्थापना होगी। मुझे मौका मिला था बी आर चोपड़ा साहब ने जब रामायण बनाई थी उसमें दशरथ का रोल करने के लिए, और मैंने राम को और जाना, जैसा किशोर जी ने बताया कि आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श, लेकिन एक जो बहुत बड़ा सबक मुझे लगता है रामायण से मिलता है वो ये है कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा की जाती है उसका फल क्या मिलता है। प्रभु श्री राम जो हनुमान जी को देकर गए वो किसी को नहीं दिया उन्होंने। क्योंकि हनुमान जी ने जो सेवा भाव किया वो निस्वार्थ भाव से किया, उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं थी। तो ये जो बेसिकली मैं हमेशा कहता हूं रामायण और महाभारत जो है सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, ये सीखने की चीजें हैं। इस देश के अगली जनरेशन को, अगली पीढ़ी को ये सिखाना है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कैसी थी और कैसी होनी चाहिए। मैंने तो कई बार ये भी सजेस्ट किया है कि रामायण महाभारत जो है स्कूल के पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ये सब जान सके, और कई स्कूलों ने इसको माना भी है और इस वक्त चल भी रहा है। वो राम को 4 शब्दों में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राम वो है जिसको हम सामने नहीं देखते हैं। वी ऑलवेज लुक एट हिम लार्जर देन लाइफ इमेज। और जैसा किशोर जी ने बताया कि कितना स्ट्रगल उनको करना पड़ा, किशोर जी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं उनका आज नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। और बहुत सारे लोग हमारे इस समय नहीं है जब प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, पर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं परलोक से जो है उनकी निगाहें यहाँ होंगी और उनकी आत्मा 22 जनवरी को यहीं पे होगी और वो इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस सरकार का भी, मौजूदा सरकार का भी, जिसने इस विषय को इस तरीके से उठाया कि आज पूरे भारत को 22 जनवरी का इंतजार है। और 22 जनवरी मुझे लगता है एक आने वाले समय में ऐसी तारीख होगी जो एक उत्सव के रूप में इस देश में देखी जाएगी। तो मैं समझता हूं कि राम को 4 शब्दों में डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये कह देना कि आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श जितने भी हैं, पर उन आदर्शों को डिफाइन करना मुझे लगता है कि एक
बहुत लंबी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें लिखेंगे तब भी शायद वो पूर्ण नहीं होगा. I'd like you to take it forward because today there are those who are also trying to say that the Sikhs have no connection with Hindus and Hinduism or Sanatan Pratha has got nothing to do with Sikhi. But it was... Guru Gobind Rai. Yeah, please. Guru Gobind Rai formed the Khalsa Panth. And therefore it's very, very clear that there is no question of there being no roots of Sikhism in Hinduism, in our Sanatan faith. When you were talking about distorting of history, it's this very Marxist-Leninist distortion of history that found its way into Parliament when they formed the Places of Worship Act 1991, which denies Sanatanis from places of our ancient worship, namely Mathura and Kashi. And my appeal to the Muslim community is that, look, Nirmohi Akhada fought in the courts from the 1860s, and before that, from 1528 onwards, Mahan Shamanand and his followers were slaughtered. Every generation they were slaughtered. Our gurus like Raghunath Das ji, Bhaskar Das ji, Mahant Raja Ram Chandracharya, who today is in his 100th year, our Sarpanch, and has been fighting this case since the beginning. We've gone through long legal struggles, as have other parties. In the case of Ram Mandir, always the other side said there is no proof that there was a temple here before. The ASI reports came out, it very, very clearly, the evidences were there, went down into those trenches, we saw those, the photographs are there, yet those were not accepted for a long time till finally within the Supreme Court it said there was a non-Islamic structure below it. My appeal today on this great occasion of the rising of the Ram temple is that the Muslim community should look ahead now, look at Mathura, look at Kashi and clearly understand that the evidences are all above ground which clearly prove that these places belong to the Hindu faith, the Sanatan Hindu faith. This should be a moment of reconciliation, not for more struggle all over again. An appeal to the government is please take back this Places of Worship Act. You have the majority in Parliament, you can take it back. The legal part aside, the politics aside, on ground, did members of Nirmohi Akhada sleep at Ram Chabutra, Sita Rasoi? Members of the Nirmohi Akhada were forever at that site. And even in the Supreme Court judgment, it clearly says that the Nirmohi Akhada had a historical role and presence at the site. Now, the court did not get into describing what that role and presence was after having dismissed the Shebiyat without reason. Even though during the hearings they asked us not to argue our Shebiyat further because no one is disproving your Shebiyat right. The other issue that our case was dismissed was on the basis of limit of not being within time. But let's not get into that. But our point is that our Akhada was always at the site. Up till 1982, the Akhada always had control of the outer courtyard of the where the structure stood. So the Nirmohi Akhada had forever been there, protected the site, carried out prayers on the Ram Chabutra, and as far as we were concerned, the structure which the other community called it something else, for us was always a temple. There was never a question of calling it anything else. And this is something for which we fought for centuries. Our objective was that Bhagwan's grand temple should be rebuilt, and for that we are grateful. So let me ask you this: when there were, you're saying centuries of struggle and fight, तो आप कह रहे हैं कि 1860 में भी आपने लीगल केस किया था उस वक्त 66 में किया था 67 में किया था. What I'm trying to understand is, I'm sure उस वक्त भी there must have been a conversation on mediation. If there was a conversation about mediation in the 90s and then in the 2000s and in the 2010s, there must have been a conversation in the 1860s, in the 1870s, in the 1880s, in the 1900s. There must have been an aspect of mediation. Hindus trying to tell the Muslim Paksh, listen, we just want this because this is where our Ram Lalla was born. But what used to happen at that time was that you take advantage of the Sahab Bahadur or the English rulers that was done by those who did not want resolution for their own personal reasons, and those who were ruling this country wanted to rule, wanted peace to plunder. They wanted a peaceful situation so they could continue their plunder of centuries. They were not looking at peace between the communities for the sake of peace. Whereas the reason that they gave always, even when the holy site here was partitioned, was to maintain peace between the communities. Right.
why should I be ashamed to be a practicing Sanatani Hindu in my country? I hope after 22nd January and after this long struggle that we have seen, nobody should feel that we are out there asking for something which we are not entitled to. This is our birthright. These sites are our birthright. Please don't make us feel ashamed to ask for them back. Right. Because they are not yours. If I were to ask you, who is Ram to you? Who is Ram? To you, आपके लिए राम कौन है? Who is Ram to you? What would you say? In your own way, क्योंकि हर कोई राम के साथ अपने आप को अलग तरीके से जोड़ते हैं, कुछ लोग समान तरीके से. पर I would just ask you, किशोर कुणाल जी. इस देश के सारे आदर्शों, You'll have to hold the हाँ, sorry. इस देश के सारे आदर्शों का पर्याय राम है. क्या बात. यही मेरी दृष्टि में है और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके ही समाज या देश या दुनिया प्रगति कर सकता है. यही मैं कहना चाहता हूँ. क्या बात है. ब्यूटीफुल. हाँ जी. एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, उससे समझ में आएगा कि जब महाभारत में मेरा सिलेक्शन चल रहा था तो मुझे सबसे पहले कृष्ण का रोल मिला था. हाँ. तो उन दिनों ऑडिशंस चल रहे थे, तो मैं बीच में अपने गांव गया और मैंने सुबह सुबह क्या देखा कि मेरी मदर जो है पूजा कर रही हैं और उसमें अरुण गोविल का और दीपिका का फोटो लगाया हुआ है. तो मैंने पूजा खत्म होने के बाद माँ से पूछा कि ये तो हमारे एक्टर दोस्त हैं, इनकी पूजा क्यों कर रही है? उन्होंने कहा नहीं, ये राम और सीता हैं. तो मैंने उनसे कहा कि कल मुझे अगर कृष्ण का रोल करोगी तो क्या करोगी? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी भी पूजा करूंगी. हाँ. ये आस्था है इस देश में. देखिए जी, एक माँ जो है अपने बेटे को उस रूप में देखकर उसकी पूजा करना चाहती है. ये राम जो है हम सब के लिए राम है, इससे और कुछ नहीं, और राम को परिभाषित नहीं किया जा सकता. क्या बात है. कार्तिक चोपड़ा. मेरे लिए बहुत छोटा सा कहूंगा, पर कण कण में राम है और हर सांस में राम है. हर सांस जो जीवित रहता है, जो जिससे जीता है, वो राम है. हर वो रोटी का टुकड़ा जिससे अंदर शक्ति मिलती है, वो शक्ति राम है. तो हमारे लिए तो राम सब जगह है जी, ऑमनी प्रेजेंट है जी. राम राम रामेति रमे राम. हर निस्वार्थ भावना जो है, जिस निस्वार्थ भावना, वो राम है. कोई भी कार्य करने का कोई ना फल चाहिए, वो राम है. जीने का सबसे उत्तम नजरिया राम है. क्या बात, क्या बात. लवली. मेरे दृष्टि में श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति. यह संपूर्ण जगत जिनकी शरण में है, बिना राम के कोई गति नहीं है किसी की. राम ही गति है, राम ही मति है, और राम ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है. राम ब्रह्म है. राम वो तेज है जिस तेज से सूर्य और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं. राम वो ज्ञान है जिसका एक छोटा छोटा कण हम सबके मस्तिष्क में पड़ा है, और उसके लिए कोई इतना बड़ा ज्ञानी हो गया कि वेद का विस्तार कर देता है और वेद व्यास हो जाता है. कहते हैं कि भगवान का वेद व्यास में आवेश अवतार आ गया, थोड़ा सा आवेश आ गया. और हनुमान जी ने कहा रावण से कि जाके बल लवलेस ते जितेउ चराचर झाय. जिनका छोटा सा कण बल के रूप में रावण में चला गया और वो त्रैलोक्य विजयी हो गया, वो राम है. कि जिनके द्वारा एक जगत है जो इंद्रियों के और विकारों के अधीन है, और एक राम है जिनके अधीन में इंद्रियां और विकार है. क्या बात है. अमेजिंग. जाते जाते एक बात और कहूंगा जी. 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा होगी. उसके साथ साथ मैं एक चीज और देखना चाहता हूँ जी. कपिल सिब्बल को अपना वादा पूरा करते हुए देखना चाहता हूँ. वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, यावत स्थासयन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति. इस धरती पर जब तक पहाड़ हैं, इस धरती पर जब तक नदियां हैं, तब तक राम कथा चलती है. बहुत बहुत धन्यवाद. अंत में आपके न्यूज 18 चैनल से मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि 22 तारीख को सब लोग
जब यहाँ रामलला की प्रतिष्ठा हो रही होगी उस समय सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने छतों पर दीपक जलावें और अपने अपने घरों में श्री राम जय राम इसका कीर्तन करें। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. Amazing conversation this, ladies and gentlemen. Our coverage on the Ram Mandir for India continues on the News 18 network. Stay with us right through. Space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple, and we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे जी। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple.
Welcome everyone. Thanks a lot for staying with us here on CNN News 18. I'm Shivani Gupta. I'm joining you live from Ayodhya, the Ram Nagari that is all decked up for the major Pran Pratishtha ceremony on January 22. All preparations, security arrangements, all have been finalized. We are seeing the Ram temple now being decked up with lights and flowers. We've also seen, of course, the idol that has been all dressed up. We'll get to the significance of the idol, the thought that has gone into carving it by Arun Yogiraj, the Mysuru sculptor. And we'll also get you the latest from around Ayodhya town, which is gearing up. There is a lot of anticipation building up. It's less than 48 hours to go now, because the Muhurat of the Pran Pratishtha on Monday is around 12:30. So less than 48 hours to go, and CNN News 18 will be your destination, because we have the widest team, the largest team of reporters on ground in Ayodhya to get you the mood in the build-up. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। Now, as I mentioned, we've seen the first visuals, the pictures of the new Ram Lalla idol that has been carved and sculpted specially to be placed in the new Ram temple. Of course, there is the Ram Lalla Virajman, whose murti, and also the murtis of all the brothers of Lord Ram will be brought from the makeshift temple to the new temple today. We've seen the new Ram Lalla idol adorned with a bow and arrow. Around is our Dasha avatars of Vishnu that have been displayed, including Ram himself. There is Lord Hanuman. There is Lord Hanuman. There are others who've also been adorned on that pedestal. And of course, there are going to be purification visuals, purification rituals that are now going to be held. As far as the Sanctum Sanctorum is concerned, according to Vastu and others, after that purification ritual, there are more ceremonies that are still planned ahead of the Pran Pratishtha. But as I mentioned, the old Virajman Murti of Ram Lalla will also be brought to the new temple very soon, including the Murtis of all the brothers of Lord Ram. Let me also go across to my colleague Purnima, who's joining us from Rameshwaram. Interestingly, Prime Minister Narendra Modi, Purnima, has been holding an 11-day Anushtan that has included visits to temples across the country, particularly South India, that have a special relevance in the life of Lord Ram and in Ramayan itself. Tell us more about the Prime Minister's program today. Well, Prime Minister is currently at Sri Ranganatha Swami Temple in Trichy. Currently, scholars are reciting the Kamba Ramayana, and that program will conclude, after which Prime Minister will come to Rameshwaram. This is the Rameshwaram temple, where Prime Minister will first take a snan, and then will go inside, have a special darshan and puja, following which there will be Ramakatha recited in different languages, followed by bhajans that will be sung, that will cover, these temples have a Ramayana connect as well. For example, the Rameshwaram temple, from where we are reporting from, the Linga, which is a form of Lord Shiva, was installed and worshipped by Lord Rama and Sita, and that's the significance of this temple, which is why there is at least a 3-hour session planned. Prime Minister will arrive here anytime between 2:10 and 2:30, and then will take a snan and perform special puja here. After which there's a 3-hour program planned inside the temple. And the Ranganatha Swami temple, where Prime Minister is currently there, the belief is that the idol, the Lord Shiva idol, which was worshipped by Lord Rama and his
and his ancestors were given as a gift, and that's the idol that was all said to be taken to Sri Lanka, but found its way at Sri Rangam, and the temple was built, and that's the belief around the Ranganatha Swami temple. And the famous Kamba Ramayana was in fact was recited there by the poet Kamban, and that's why Kamba Ramayana currently being recited by scholars. Tomorrow, yet again, half a day in and around in Dhanushkodi, which is about 25 kilometers here, where Prime Minister will visit the Ram Setu, where the Ram Setu place, and also another temple tomorrow. So clearly these have a Ramayana connect, and ahead of the grand ceremony that's planned, all these are significant. And here at Rameshwaram as well, by between 2:10 and 2:30, Prime Minister will arrive and visit the temple here. Absolutely. There are multiple messages in the Prime Minister's visits. One, of course, in the 11-day Anushthan that he's practicing currently ahead of the Pran Pratishtha, for which he's going to be the Yajman. It's a very important role he's playing. He's actually taking a journey through the life and times of Lord Ram. In a way, it is also establishing the pan-India connect that Lord Ram has. Lately in Indian politics, we've seen some people denounce the effect or the impact that Lord Ram has, the worship that Lord Ram sees in southern India. And I think Prime Minister's visits through Andhra Pradesh, through Karnataka, through Kerala, through Tamil Nadu are displaying that there is actually a great connect of Lord Ram's in South India. Some would also infer that there is a political message here given that South India remains the last barrier of sorts for the BJP. But speaking of that and more, let me also go across to my colleagues Aman Sharma and Payal Mehta, who've also been taking stock of the situations and the preparations around Ayodhya. Payal, you've got a special guest from the VHP with you, I'm told. The VHP has been very closely involved, not just in the invitations that have been sent out, but in the preparation for the Pran Pratishtha. What idea can they give us on what is planned for January 22 itself? Yes, the VHP is actually their involvement with the Ram Janmabhoomi movement has been there from the start, and of course it's a huge occasion for them to really celebrate. Surendra Jain, National Joint General Secretary is with me. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि अभी कुछ दिन में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है. क्या तैयारियां अभी बच गई? जोरदार तैयारियां चल रही हैं और लगभग सब पूर्णता की ओर है. जिसको कहते हैं फिनिशिंग टच, बस वही देना बाकी है. और ये फिनिशिंग टच केवल हमारी तरफ से ही बाकी नहीं है, ये समाज की तरफ से भी बाकी है. क्योंकि हर समय हर पल एक नई चीज देखने को मिलती है. आज सुबह कश्मीर के लोग आए थे जो वहां की केसर लेकर आए थे रामलला के चरणों में अर्पित करने के लिए, और जो मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा जी, उनको उन्होंने दिया. आज ही अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी वहां का जल आया है वहां उनके चरणों में अर्पित करने के लिए. और वहीं तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी शॉल आई है जिसको 10 लोगों ने मिलकर दिन रात एक करके केवल यहां के लिए 10 दिन में तैयार किया था. यानी इस कार्यक्रम ने केवल देश को नहीं जोड़ा, गुजरात से लेकर और सुदूर नागालैंड तक सब तरफ से कुछ ना कुछ आया है. कश्मीर से लेकर केरल तक पूरा देश जुड़ चुका है, लेकिन विदेश भी जुड़ रहे हैं. और हमारे को आज तक की जानकारी के अनुसार 57 देशों में 22 तारीख को जबरदस्त उत्सव मनाया जाएगा. राम सबके हैं, सबके राम है. इसके बावजूद भी जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है, जैन साहब, कई पॉलिटिकल नेता कहते हैं कि VHP, BJP और RSS का कार्यक्रम इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं. या तो वो ना समझ हैं या वो बेईमान हैं. आखिर 500 साल हिंदू लड़ा है, तब कौन सी बीजेपी थी, तब कौन सा VHP था, तब कौन सी RSS थी. हम सीन में आते हैं 1984 में, जब दिल्ली के अंदर संतों ने हमको यह काम दिया कि आप आंदोलन कीजिए वरना ये सूडो सेकुलर लोग मंदिर को नहीं बनने देंगे. हमें जनता की अदालत में संतों ने भेजा, और ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा गर्व है और राम के प्रति समाज की आस्था है कि हमने विश्व का सबसे लंबा आंदोलन 35 साल तक चलाया. 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया. और इन लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए, जब मंदिर के निर्माण का समय आया तो देश के 65 करोड़ लोगों ने मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग दिया.
जिस तरह का अनुष्ठान प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सुबह उठ के ब्रह्म काल में जाप करते हैं, सिर्फ सारे दिन नारियल पानी पी रहे हैं, लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, एक तरह से आस्था और जिस तरह से विकास हम अयोध्या में देख रहे हैं, आस्था और विश्वास दोनों का एक समीकरण आपको दिख रहा है इसमें? निष्ठा, समर्पण और आस्था, तीनों का अद्भुत मिश्रण प्रधानमंत्री जी के इस व्यवहार में, प्रधानमंत्री जी के इस सारे के सारे चिंतन में और अनुष्ठान में ये झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने दूसरा जो प्रश्न किया है, आज अयोध्या को देखकर पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया रही हैं। जो लोग ये कहते थे यहां मंदिर क्यों, अस्पताल क्यों नहीं बनना चाहिए, यहां मंदिर क्यों, पार्क क्यों नहीं बनना चाहिए, और कुछ मतिभ्रष्ट लोग तो ये भी कहते थे यहां शौचालय क्यों नहीं बनना चाहिए। आज मंदिर बन रहा है तो यहां हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, यहां पार्क भी बन रहे हैं, पूरी अयोध्या जगमगा रही है। और इतने कम समय में किसी क्षेत्र का विकास ये तभी संभव है जब वहां राम भी विराजमान हो रहे हो। जैसे राम चाहे वैसी होए. So Shivani, that's the message coming in from the VHP. It's a big occasion for them. Remember, they fought this battle for the longest. Several people have laid down their lives in this entire process, and today, when the world is looking at Ayodhya, probably they are the happiest in the lot, while they continue to prepare for the big day of celebration. Back to you. I want to go across to my colleague Aman also. Aman, we are getting some indications that there's also going to be a public program that is going to be held in Ayodhya after the Pran Pratishthan, which is going to be a ceremony that lasts, specifically this Pran Pratishthan ceremony that lasts, possibly just around half an hour. And the Prime Minister is set to visit the Shiv temple at the Kuber Tila, which is in the complex of the Ram Janmbhoomi complex as well. There are actually multiple mandirs. There are 7 mandirs around the temple. There are 4 mandirs in the Parkota, the corners of the Parkota, and on the northern side and on the southern side. So there are multiple temples in the complex, and Kuber Tila is the historical Kuber Tila that is found in that complex, and it has been refurbished. The Jatayu sculpture, I believe, has been placed there as well. The Prime Minister is set to visit that. What more can you tell us about the program that is lined up for the Prime Minister on January 22? Well, Shivani, I must say the program is still being finalized. My sources in Delhi are still saying that the Prime Minister's program is being finalized. What we know for sure is that he's coming on the 22nd. The Prime Minister will be here on the 22nd. There will be two particular programs at the Ram temple. First, of course, is the Pran Pratishthan ceremony, which is expected to go on about 40 to 45 minutes. The start will be from the Pran Pratishthan ceremony. After that, about 60 to 75 minutes is this public program which we have been spoken about, which will involve the statements from the Prime Minister, from RSS Chief Mohan Bhagwat, and statements made by UP Chief Minister Mr. Yogi Adityanath. The PM will be addressing the invitees who will be present there, 8,000 odd invitees, and that speech of the Prime Minister is very keenly awaited also Mr. Bhagwat and Yogi Adityanath, because that could the PM could go into the entire history of the Ram Janmbhoomi movement, the sacrifices that were made, and what all efforts were made to build this temple in a record time within 3 years. We have seen the Garbhagriha of the temple and the first floor of the temple being completed. The second floor and the top floor of the temple will also be ready by the end of this year, and by the end of 2025, the entire 73-acre area of the temple would be complete. The Prime Minister, I believe, is also expected to visit the Hanuman Gadi temple before he reaches the Ram temple. Hanuman Gadi temple, the ritual always has been that you first pay obeisance at Lord Hanuman's temple, the famous Hanuman Gadi temple, and then you go to the main temple, the Sri Ram Ayodhya temple, which the Prime Minister will be visiting. I am actually near one of the gates where the Sri Ram temple, one of the gates near that, and you can see the preparations which are going on. These whole flower arrangements, pictures of Lord Ram. You can see hectic activity on at this gate. This is one of the main gates which maybe the Prime Minister would be taking when he enters there. The VIPs may be taking this gate when they enter here. So you can see the arrangements which are happening here. And just 2 days left, so of course the workers are also working overtime, and a record quantity of flowers. In fact, the entire route of Rampath, Shivani, is being decorated with flowers, with flags, with the Prime Minister's picture, with the picture of Lord Ram. Hectic preparations are in Ayodhya, and the final plan of the Prime Minister, of course, will be ready, I believe, by tomorrow. But so far we know that he's coming to Hanuman Gadi, he's coming to the main temple, and he's going to give a speech after the Pran Pratishthan ceremony. Shivani.
Absolutely. It's quite likely he will take some stock of the larger complex, because a lot of our public may not know that actually the complex is 71 acres big. And there are, as I said, multiple other projects, including smaller temples, that are also part of that complex. I also want to talk about the significance of the idol. Now we're running two sets of visuals on our screen. One, of course, is the idol itself adorned in the finery. There will be, of course, clothes and more jewelry that has been sent from all across the country. Several people have sent bhog, chappan bhog for the idol. A lot of these things are going to be part of the ceremony that is going to take place. And on the side of our screen are also visuals of the mandir itself decked up. Last evening those preparations were happening. Flowers, lights, everything are being put up as far as the temple is concerned. I want to go across to Vedic speaker and scholar Dushyant Sridhar now joining us. Dushyant ji, we are seeing the description of the Ram Lalla idol, the new idol, Sham Varn idol created in black granite that has the Dasha avatars, the 10 avatars of Vishnu also adorning, you know, the whole pillar besides the Ram Lalla. I want you to talk about the significance of the Dasha avatar. Namaskaram Shivani, and namaskaram to all the viewers. Now that we are all ready to witness the beautiful event that's going to happen on the 22nd of January, the Moola Murti of Lord Sri Rama has arrived. And from what I see as visuals that appear in the media, it is a beautifully sculpted Murti of Prabhu Sri Rama Murti of Ramachandra, and it has been done by the Shilpi Yogiraj. When we look at Rama here, the hair tresses are curly, and they exactly match the description given in the Valmiki Ramayanam, where Valmiki says, Kakapaksha dharam veeram jeshtham me datumarhasi Kakapaksha dharam. So he had curly hair tresses. And you see, of course, since he's Balarama between the age of 5, 6, 7, you see those chubby cheeks. So he could be a Kaumara, Pauganda and so on. So, but he looks very handsome. Now coming to the Prabha, the arch that carries the images of Dashavataram. Of course, the word avatara itself means to come from the top to bottom, wherein the Lord chooses to be amidst us. And there are plenty of avatars which are attributed to the Lord. Of course, our Purvacharyas, our preceptors have chosen a set of about 10 avatars, which is referred to as Dashavataram. In that we have Ichha Meena, we have Matsyavataram. Matsyavataram signifies the retrieval of the Vedas. So when the Vedas were lost, the quintessence were lost, retrieval of it is referred to as Matsyavataram. When the wealth was lost, be it Kalpaka Vriksham, Kamadhenu, Uchchaishravas, Chintamani and so on, the Lord incarnated as Kurma, Kachapa. Then comes the avatara of Varaha. Varaha or Sukara means the avatara that brought back the glory of Mother Earth. So, Shweta Varaha Mahishi says Vedanta Deshika. Then comes the very, very thunderous of all avatars called Nrisimha Avataram. Satyam Vidhatum Nija Bhritya Bhashitam. To exemplify the words of his very dear devotee called Prahlada, the Lord chose to emerge from a pillar that tore open or broke open like a dicotyledon, and he emerged in the form of Nrihari, a combination of Simha, which is lion, and Purana Purusha, the form of the Lord's body. So, Akantham Adi Purusham Kanthiravam Uparikunthitaratim, says Vedanta Deshika. So, we have Nrisimha Avataram. Then came the very beautiful Vamana Avataram. As a dwarf he came. So, this dwarf signifies Vamana, and when he went to the Yajnavatika of Bali Chakravarti, who performed the yagam by the banks of river, the northern banks of river Narmada, in a place called Bhruguk Kacham, which is today called Bharuch in Gujarat, the Lord sought some land, 3 measures of land. The king, out of sheer arrogance, said, how much ever you want to measure, you can measure. And the Lord measured the worlds and finally brought down the arrogance of the king Bali Chakravarti as well. Then came Parashurama Avataram. It has large references to Madhya Pradesh region, because we had a king called Kartavirya Arjuna who belonged to the Haihaya clan, and he was housed in a place called Maheshwar, from where we get the famous Maheshwari silk. So that is when, to avenge the death of his father Jamadagni, Parashurama wants to bring down the arrogance of Kartavirya Arjuna and has a huge war with him.
Then comes the greatest of our avatarams called Rama Avataram. In Rama Avataram, the Lord wanted to establish Dharma. So he is called Dharmo Vigrahavan. He is the personification of Dharma. Then comes Krishna Avataram. We have two avatars. One is Balarama Avataram. Second is Krishna Avataram. Balarama was the elder brother to Krishna. And Balarama does not have a huge role except in a few instances. Whereas when we come to Krishna Avataram, Krishna Avatara is yet another avatara that gives the essence of the Upanishad. Sarvo Upanishado Gavaha Dugdha Gopalanandanaha Partho Vatsaha Sudhir Bhokta Dugdham Geetamritam Mahat. So he gave the essence of the Upanishads called Bhagavad Gita. And then we have the Kalki Avatara, which is set to appear only when corruption and malice reaches its zenith. So it seems we are living in the best of the times. Then there is something very interesting where Buddha is also included. Many people have this question, why Buddha? Buddha historically refers to the 5th century BCE Buddha, Gautama Buddha. But we have had 4 other Buddhas, which many of the Sautrantikas and the Yogacharas in the Buddhist religion also agree who existed. In fact, in the Ramayana, we have the word Buddha as a reference when Rama listens to the speech of Jabali. And there are a few namas in Vishnu Sahasranamam like Ratnanavaha, Sulochanaha that are attributed to Buddha. Though the tenets of Buddhism may be diametrically opposite to Sanatana Dharma, later the Acharyas have also included Buddha as one of the avatars, Amsha-avatars of Vishnu. So it has been sculpted. Then we have 2 other people who are fervent servants to the Lord. One, during the Rama Avataram, it was Hanuman. And second, Garuda, who is present in all avatars. Even in the Rama Avatara, in Yuddha Kanda, he comes and retrieves Rama and Lakshmana from the poisonous snakes. So these are extremely 2 important pillars of devotion in Sri Vaikuntham. So they have been sculpted in the Prabha. So you can see a Hanuman and you can see a Garuda. And then you can also see some of the symbols that are very sacred and regarded very holy in Sanatana Dharma. One is Pranava, which is Omkara. It has A, U, Ma. So this makes Om. So Om, which is Pranava, has been inscribed. The other symbol, which is not very prominent in some of the eastern parts of the country and not much in the southern part of the country, but which is very important to the rest of the country, is the swastika symbol. So the swastika symbolizes something which is auspicious, good, Shubha Labham. When Krishna says, a yoga kshemam bahamyaham, whatever you want to achieve, you will achieve, and whatever you have achieved will stay with you. So this auspiciousness, what India desires, is indicated through swastik. So we have Pranava, we have swastika, we have Hanuman, we have Garuda, we have the Dashavatara, we have of course the incomparable image, the Murti of Prabhu Sri Ramachandra holding the bow and the arrow. Something very significant, Shivani, is there has been space given for the bow to come and the arrow to come. So there could be 2 ways. Either the bow and the arrow could have been made as detachables in Krishna Shila itself, or they could be keeping golden bow and golden arrow. That is another possibility, because when there is space given, generally another metal is also allowed. And of course the Utsava Murti is going to be the Ram Lalla, the very little Ram Lalla, who is being worshipped for many decades together now. So overall, Shivani, I feel both the Shilpi is blessed, and what we are going to witness on the 22nd of January, we don't have a comparison to it, and it will remain unsurpassed and unparalleled in the history of Bharatadesham post-independence. Over to you, Shivani. Absolutely. Unprecedented moment it is, and what a joy and pleasure it is for millions and millions of people to be witnessing this moment. You know, the reality of Ayodhya today, what it is today, you know, people are imagining it what it was supposed to be when Lord Ram returned to Ayodhya and Diwali was celebrated, which is why it is being celebrated as another Diwali, and I think January 22 will in itself carve itself as a day that is going to be celebrated every year now. It is not going to be forgotten in a hurry. I have Hari Shastri with me as well. कथावाचक हैं आप. आज राम लला की जो मूर्ति है उसके भी दर्शन हो गए हैं. राम लला की अब प्राण प्रतिष्ठान भी होने वाले हैं. 2 दिन का समय बचा है बस. तो उस हर्ष उल्लास में क्या आप कहना चाहेंगे, या क्या पंक्तियां आपको याद आती हैं
जिसका आप अब आज वर्णन करेंगे। नारायण, इस समय अयोध्या को देख के ऐसे लगता है गोस्वामी जी की वो पंक्तियां हैं कि अवधपुरी सोहै यही भांति प्रभु ही मिलन आई जनु राती। जैसे जब भगवान का जन्म हुआ था तो रामचरितमानस में वर्णन आया कि 1 महीने तक रात ही नहीं हुई। मास दिवस पुण्य दिवस भा मरम न जानो कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान रथ के समय तो रुक गए, रात्रि नहीं हुई। वैसे मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 महीने से अयोध्या में रात्रि हो ही नहीं रही है। तो जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है सब? नहीं, हम लोगों ने जैसा सोचा था उससे बहुत आगे हो रहा है जी। और इस सबका श्रेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि श्रेय लेने की तो आज होड़ मची है कि कौन कौन कितना श्रेय ले ले। मंदिर के साथ साथ अयोध्या का जो सर्वांगीण विकास किया है मुख्यमंत्री जी ने, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अयोध्या का जो विकास है वो सांस्कृतिक विकास हो रहा है। सड़कों पर ऊर्ध्वपुंड के चिन्ह बनाए जा रहे हैं, जैसा हम लोग तिलक लगाते हैं। शंख चक्र के चिन्ह बनाए जा रहे हैं। नागेश्वर नाथ की तरफ आप गए होंगे तो देखा होगा, उधर भगवान शंकर के त्रिशूल और डमरू हैं। हनुमानगढ़ी के तरफ हनुमान जी की गदा है। ऐसे चिन्हों को बना करके ये अयोध्या को उस तरह से सजाने का प्रयास हो रहा है जैसे त्रेता में सजी थी। जी जी जी, नहीं, बहुत काम हुआ है, बहुत काम चल भी रहा है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप कुछ सुना दे पंक्तियां आज के मौके पे, क्या आपको सही लगता है? नहीं, पंक्तियां रामायण से सुना दीजिए या किसी और कथा से सुना दीजिए। नहीं, रामायण में राम जी के जन्म के जो विषय बताए गए हैं कि चारों तरफ अबीर गुलाल उड़ रही है, धूप जलाई जा रही है, लोग उत्सव कर रहे हैं। आप ये मानिए कि अयोध्या में लगभग 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि जिस दिन से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी का अपना अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, उसी दिन से अयोध्या के घर घर में यज्ञ हो रहे हैं, घर घर में भजन हो रहे हैं, घर घर में लोग आनंदित हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के घर में बहुत ही इंतजार के बाद पुत्र पैदा हो, पुत्री पैदा हो, वो आनंदित होता है। मैंने तो देखा है कई घर में माताएं सोहर गा रही हैं, कई घर में सोहर गा रही हैं, ढोलक बज रहे हैं, रात में 2-2 बजे तक सोहर होते रहते हैं। ऐसा सोचा नहीं था और ना ही कभी ऐसा देखा था। जी, चलिए, हमारा जो टाइम बचा है बस 1 मिनट का, कुछ सुनाना चाहेंगे? भगवान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन जितने भी लोग अयोध्या आ रहे हैं वो लोग अयोध्या की शुचिता पर बहुत ध्यान दें कि अयोध्या को स्वच्छ रखें। माता शबरी ने अयोध्या को बहुत सुंदर सजाया था, क्योंकि भगवान राम के बारे में एक शब्द अगर मैं बोलूं तो जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। भगवान ने ये जितने भी लोक हैं, जितनी भी सृष्टि है, जड़ चेतन जो भी हैं, सब भगवान के द्वारा निर्मित हैं, भगवान के द्वारा पालित हैं और अंत में उन्हीं श्री राम के अंदर सबको समाहित हो जाना है। भगवान श्री राम को ये मान करके, ब्रह्म मान करके उनकी उपासना करें और अयोध्या के कण कण को राम माने। संपूर्ण अयोध्या का जो परिक्षेत्र है वो सिर्फ राम मंदिर तक न सीमित रह के पूरी अयोध्या में सरयू तक, सरयू के इस पार हम लोग बैठे हैं, उस पार अयोध्या है, ये सब कण कण राम है। और जब पूरी अयोध्या को हम राम मानेंगे तो फिर हम पूरी अयोध्या के साथ सम्मान कर पाएंगे, पूरी अयोध्या के साथ न्याय कर पाएंगे, अयोध्या को स्वच्छ रख पाएंगे और अयोध्या को धार्मिक, जो अयोध्या है धार्मिक नगरी है, उसके धर्म को बचा के रख पाएंगे। चलिए, a new beginning is being made in some senses. Of course, this is a story which is about continuum. It is a story of the continuous struggle to reclaim the Ram Janmabhoomi, which is in a way culminating today with the Pran Pratishtha. From here on, this is the abode of Lord Ram, of Ram Lalla, the 5-year-old avatar in which the new idol has been carved. And from here on, the worship is going to take place here.
not in a makeshift temple, not in a tent, not in a chabutra, but in a proper Bhavya temple. And of course, we'll continue to get you all the build-up from Ayodhya. As I said, less than 48 hours to go. A big thanks to all of our guests for joining us. Dushyant Sridhar for explaining the significance of everything that has gone in, the symbols that have gone in making of the Ram idol, the vision that this new temple, the idol, all the rituals, all the programs really that they display. A lot of thought and planning has gone into it, and we'll get you the latest from on ground. So stay with CNN News 18. We'll keep getting you a live coverage. हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण भला राम सिया राम सिया राम सिया राम तेरा विश्व कल्याण भला राम सिया राम सिया जय श्री राम। Namaste, Jai Hind. Ladies and gentlemen, when you come here, you don't want to leave this place. That's how tranquil, that's how peaceful, and that's how full of love this place is. And we are at the ashram of Sri Sri Ravi Shankar in Kanakpura in Bengaluru South. Gurudev, Namaste. Namaste, Anand. Thank you so much. And such a pleasure to be able to meet you and speak with you. You are somebody who everybody wants a little bit of. And for you to spare time for us is very, very nice. Thank you so much. My first question to you, Gurudev. Pran Pratishtha is happening on the 22nd of January of Ram Lalla Virajman. You've played a key role in trying to bring resolution to more than 500-year-long conflict. Can you take us through the process and what you're going through right now, or what you're feeling right now? Yeah, I got involved in this when our Atal Bihari Vajpayee ji, then Prime Minister in 2001, asked me to go and start talking to people and bring mediation. And so at that time, 2003, I suggested the same thing, 5 acres to be given to mosque and that place to be relinquished. And then we continued from 2017. Then though I refused to be part of the committee, mediation committee, because I am not qualified for it. I am not a lawyer. My subject has been science and spirituality, nothing to do with the legal matter. So, but then Gogoiji said, you must, Gurudev, you have to be. In fact, I found out that I am part of the panel in an airport. Can you imagine that? Then one interesting thing I would like to share today is, when this was happening, I was in Chandigarh, and one night at 11:30 I got a call from PM, and PM said, Gurudev, ये आपका तपस्या का फल है, आप इसमें आगे बढ़िए, and दोनों समुदाय का सौहार्द से होना चाहिए. I mean, PM, he had this feeling that everyone should be part of a solution. He had such a concern for the country. I rarely talk to him once a year or sometime, and I don't call him much, and neither he. On one occasion he called when I was appointed as the mediator, then he said, आप करिए आगे बढ़िए, सबका साथ सबका विकास. This is in his जहन में है. It's in his very nature. And even when the judgment came, he very clearly said it should not be seen as a victory over one community, because we're all one. Yeah. It's not victory over one, it's not credit to one and loss to someone else. So that the dard, the pain for the people of the country is something that one should appreciate.
And now with this Ram Mandir, which has been a dream of people for so many years, is coming to a fructification, and there's such an excitement throughout the country. People want to be there. Of course, not everybody can go at the same time. But Gurudev, Pran Pratishtha, what does this mean? There are those who would say Murti Puja is all pumkam, it's wrong. There are others who believe that the deity resides, divinity resides in the deity, and that's why our constitution gives the deity living rights, perennial living rights. Correct. So, why is this Pran Pratishtha important? See, there is a, in our Shastra they say, Manishinam apsu devata, Manushyanam divi devata, ya balanam loshta kashteshu, yanino atmani devata. Atmani deva. The devas reside in the Atma, in the self of a Jnani. But for Bala, for the common people who are not Jnanis, for just simple Bhaktas, they will find the deity in, in statues, in stone and in wood. And there is a whole vidhan, there is a whole prakriya, procedure for this in the Agamas. There are 68 Shaktagama, 108 Vishnu Agama, about Vishnu, Vaishnava Agama, and 28 Shaiva Agama. I have read all that, I have seen them all. I know Pran Pratishtha can be done. See, now there is a big hangama when the mandir is not complete. How can you do Pran Pratishtha? Correct. I can challenge them. I can tell them. Now Sri Ramchandra himself did the Pran Pratishtha of Shivji. At In Rameshwaram. He did not build the temple first and did the Pran Pratishtha. Now Kedarnath, Bhagwan Kedarnath, Murti has been there from before. Yeah. Mandir was built later on. So, temple can keep building. Yeah, the Garbhagrah is complete. That itself is a big thing. And then when the Kalash Sthapan happens, then another ceremony is there for that. There is a Kumbhabhishekam, like the south we call it. Correct. That is a 12-day procedure. Even the Pran Pratishtha, it's a very meticulous, beautiful science behind it. There is Jaladivas, a stone, first stone is etched and then it is immersed in water for some time. And then in Dhanyadivas, it's put in all the grains. See, where the life is, it's in the water. And then it is in the grain. And then it's in the sprout. On top of it, you put several herbs. First you put mud on the Vigraha. And then you grow some trees so that the Prana Shakti is brought in. Then when the Prana Pratishtha is done and the rays of sun has to fall on that idol. So, it is mind-boggling if you just go through the procedure that the Agamas have enunciated in a Pran Pratishtha. And I feel it's a wonderful occasion for the country and people of this country, for the whole world in fact, that such a thing is happening in. So who should conduct the Pran Pratishtha? There are questions about why is the PM the Yajman? Some people are saying Shankaracharyas are not going. So how is it going to be blessed? Any acharan, there could be some flaws, doshas. But the Guru's job is to remove all the obstacles. Yeah. True. The Guru samarth होते हैं, वो सारे दोष को हटा देते हैं, निवारण करते हैं. See, any date you pick, I can show you there are some flaws in that date. Correct. There can never be 100% correct muhurta. Every muhurta, whether astrologically or numerologically, in whatever science you see, even karma, any action, there will be flaws. And if you go on picking up the flaws, you will be nowhere. Correct. Sahajam karma kaunteya sadosham api natyajit. Gita, Bhagavan Krishna said every karma has some doshas, there will be some flaws in it. But you have to see when the positive things are so much, that weighs more. And the Guru's job is to go and clear any of those negativity or negative influence that must have, that would have or could have
come into that place. So, is there anything wrong with the PM being the Yajman? I don't know, not at all. Ancient days and PM, he is doing so much tapasya, 11 days he is fasting. Yeah, I wanted to come to the Anushthan also, yeah. Anushthan, no, I would request him to please, you don't need to do any of that. You have so much sattva, you want the betterment of the people of this country. My request to PM through this media is, please don't strain yourself. You are pure, your intentions are pure, please you go ahead. And the sadhu, sant and tapasvis of this country, they are there to do, we are there to do the tapas and all. He doesn't need to do any tapas. He has to take care, he is taking care of the whole country, the poorest of the poor of the country. He is concerned about the nation and the culture. I tell you, nobody has done so much to our Sanatan Dharma or even our Indian culture as our PM has done. I mean, it's not to just put some praise, but it's a fact. We have to acknowledge it. Nobody can say, can deny this fact. Yes, as I said, there are many agamas. Many agamas give very different things. Correct. Some yagyas, of course, only dampatis can do. These sannyasis cannot do some yagyas. And some other puja, some other things, everybody can do. And here, PM is doing the Pran Pratishtha as representing the whole nation. Country. And moreover, it is someone who is really caring for the culture, who believes in it. That is more important. If some PM doesn't even believe in the puja and he comes and does puja, Pran Pratishtha, that is not good. Here is someone who is deeply in love with it. Yeah, he's an asthai. He is an asthai, bhakt. And every year he does Navratri, 9 days fasting. Yes. Even if he goes to America, he does it. So, for a bhakt, there is no rules. There is no rules. I tell you, there is no rules. The other aspect, Gurudev, many people are saying is, why a new Vigraha? There is a Ram Lalla who was in a tat. Itne varsh tat mein the. Unka kya hoga? Why do you have to bring a new Vigraha, do a new Pran Pratishtha and 5-year-old Ram Lalla? See, that Ram Lalla who has already been there will continue to be there. I don't think they are going to discard that. That will be there. But it's nice to have another nice Pratima too. Some say he may be the Utsava Vigraha. So, yeah, there are Charamurti and Sthiramurti, and in a temple, usually both are kept. And that they are doing the right thing. See, if it's a new place, there is a different laws. Correct. I respect Shankaracharyas, they have their right, but there are different rules for different. If it's a new place, which is completely new, then you have to bring the Sanidhya, then you have to do a lot of other things. But this is a place which has been there from ages. Yeah, Ram Lalla was always Always there. Virajman there. Yeah. Ram Lalla was always Virajman. So you don't have to bring some other, energy there. Energy is already there in the place. But do you think this conflict has been resolved, Gurudev? Do you believe that those who are now saying, Gyanvapi, Krishna Janmabhoomi, because you are somebody who spent years in conflict resolution, not just in Bharat, but the world over. For a conflict to resolve, both sides have to be amiable to a solution. But when we see Gyanvapi, when we see Krishna Janmabhoomi, one gets the sense that some actually want to continue to rub it in. They don't want the conflict to be resolved. Let me ask you your thoughts. There are all type of people on this planet. And if one problem is solved, another 10 would arise. That's the nature of the world. That's the nature of samsara. Yeah. So you can never think that there will be a time where everything will be all right. Challenges do come, and samarth log hai, people who are capable, they will handle that.
and we have to continue doing it. Yeah, there is no other choice. Many believe that these contentious issues, especially for Hindus in Hindustan, Gyanvapi, Krishna Janmabhoomi, and some others, need to be resolved before we really take the turn towards moving in the direction that Bharat should move. A nation to grow, become Viksit. These innate conflicts have If to be that resolved. was the case, our central government would have resolved this as soon as they came to power in 2014-15. That's not the case. They have seen developmental work has began since even before, but then only few years back, Ram Lalla Virajman, that conflict got solved. So, conflicts keep arising in this country with millions, with so many different languages, cultures, and caste. Where is the end to the conflict? They keep happening. But see, with one vision, with one vigor and enthusiasm, that people are coming together now and working together. That itself is something that's unique to India and laudable with the current leadership. I would say some of credit definitely, of course, it goes to the culture and the people, and the leadership also shares that credit. Gurudev, are Ram and Krishna Kalpanik? Are they imaginary? Those who say Kalpanik, it is their Kalpana only. They refuse to see the reality. When they could already find in Bet Dwarka all the ruins of so many years. Now, Harappa and Mohenjo-Dar civilization, they found it's much older than 8,000 year old. Why would you not believe our own history, which has been enunciated in our own traditional Indian systems? But see, there is history written everywhere in Indian system as well. Itihasa itself means it so happened. It so happened. So is it itihasa or is it mythology? History or mythology? It is history, absolutely history. But see, in history also, there are kavis who can glorify it. Yeah. They could say, someone lived for 100 years, someone, say they lived 1,000 years. This is all the language of the poets. We must see in the midst of the poetry, we should extract the history, which is very obvious thing. So you're saying you should extract the tattva out of the entire imaginary leap that's been taken, or the creativity. I mean, we are artists basically in India. We would like to see art everywhere. Yeah. So history also we have not depicted very dry. Even if you see the Mughal history, they've all glorified all the Mughal kings as Indra, Chandra, Devendra, like that. Yeah. Right. So the way of Eastern civilization telling history is more juicy. It's more decorative. It's more heartwarming. Because our history is connected to heart. Yeah. We take pride in the history. Gurudev, the other contentious issue is Sanatan Dharma needs to be eradicated, because Sanatan Pratha, Hindu way of life, is discriminatory, casteist. We are stuck between Varna and Jati. I just wonder, why don't they see the good things also in Sanatan Dharma? Is only caste system in the Sanatan Dharma? It's a complete ignorance. I don't usually comment on ignorant statements. It's people of ignorance. See, even if you have to say something is bad, you have to go into the depth of it. And these people don't look into the depth of a subject. And they just go on rattling something take mileage for a small, short-term political gain. But Gurudev, in the US, they are actually trying to form laws. SB 403 and others, using the ancestral law, they are trying to say that people who come from India are ancestrally discriminated. I'm sure you would be aware. I know, but that has been now nullified. The governor has already, cancelled that law which was about to be made. He vetoed it. ये रुकेंगे नहीं, and you know that if it enters corporate culture in the US, it will come back to It's a disaster. It will be a disaster.
See, in this country, in Sanatan Dharma itself, among the 1,000 rishis have come from all backgrounds. Yes. Even our main Sanaka, Sanandana, they are all Dalits. Ramayan, Mahabharata, Yeah. Valmiki and Vedas, they are from that community. So, among the 1,000 rishis, if you count, you can count in fingers, 3 or 4 only Brahmins. Backgrounds. All other rishis are from all other castes. Even our devatas, even Lord Shiva, Yeah. Lord Shiva is a Nishada. Nishada. Nishada is untouchable. So, there was no such rigid caste system like we are being perceived. Of course, in the Middle Ages, it has become much rigid. If you go little beyond, go to the history of our caste system, there has been saints in every caste. Yeah. They have been honored. And there have been Rakshasas or Asuras in every caste as well. Even Brahmins. Yeah, Ravana was a Brahmin. Ravana was a Brahmin. So, Adhyatma is the wealth of this country. See, everything has a place, and definitely this has place when today the mental health is a big issue world over. 1 in every 3 person are affected by mental health issues. And every 40 seconds, 1 person is committing suicide on this planet. For this, definitely this is the answer. Meditation, spiritual knowledge, Vedanta, Yoga Vedanta principle is the answer. You know, today's Vedanta has been tod marod karke, it has been presented in all buzzy language, buzzy, linguistic quote karke, present kar dete hai. One lady said in America, we have sanitized yoga. Sanitized means what? They have removed Om, they have removed Om Shanti and everything. I said, you have robbed the yoga of its soul. But when you have tried to teach Sudarshan Kriya to people who have nothing to do with the Hindu way of life, who've got nothing to do with yoga, haven't you and your teachers encountered this? You are trying to convert us. You are running a conversion. We have faced many challenges, not one. Even when I went to Ayodhya dispute, resolution of the dispute, I have many brickbats were coming from both sides. Many Hindus were opposed to it, many Muslims were opposed. आपका इसमें क्या है? आप कहाँ से आ गए? So, when you are in a public work, when you are into anything that you believe is the right thing, or when you know it is the right thing to do, you don't care for what others comment for you. इसमें मान अपमान ये सब का कोई मायने नहीं रखता. Is it so easy to let go of it and not get affected, Prabhu? Because ahem always comes into play, ego comes into play. No? When it comes to play, you don't know it is coming into play. But once you know it is coming into play, you don't get bothered about it at all. That is the power of wisdom. Because when Krishna says aham sarvasya Prabhu, it's okay. We cannot think that aham sarvasya, then it becomes the aham becomes different. Why do you say that? You look into the Gyan aspect inside of you. Jivanam sarva bhutanam. What does Krishna say? I am the life in everybody. Life in everybody. So are you living? Are you live? And you are him, you are part of him. Rama and Krishna, both are supposed to be upholders of Dharma. But both have different... Completely opposite. That is exactly why I questioned you, Prabhu. Ram and Krishna's personality is poles apart. Yes. So that's the most interesting thing. See, even Parashuram. Parashuram is considered an avatar. Yes. But if you look into Parashuram's life, it's very stunning. Yeah. So, मैं कभी फिर इसमें गहराई से मैं बात करूँगा. But what I'm saying is, see, every avatar, everybody has lived on this planet and have shown something very unique. और वो सब हमारे साथ है, जीवन में है. उन सबको आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे. But you would believe that all of them stood to uphold dharma? Absolutely. और क्या?
despite the varying methods and polarities in their नहीं तो personalities. इतने सारे आगम शास्त्र क्यों बनते हैं? Why we have so many scriptures, so many Upanishads, and even Rigveda, there are 21 shakhas of Rigveda, Yes. 101 shakhas of Yajurveda, 1000 shakhas of Samveda. So even Vedas are Anantavai Veda, so many of them are there. So that is the beauty of Sanatana Dharma. There is place for everybody here. Is Murti Puja okay? As I said, I'm coming back to that because many are saying this is being constantly attacked. It's been attacked. Oh, you're idol worshippers, idolatrism. You're pushing this. This is not supposed to be in modern society, today's world. You're not supposed to do it. no, who can say that? I don't need idol. Someone who has passed through that stage. You come out of there is a difference between one graduating out of school and a school dropout. A school dropout says, I have come out of the school, doesn't mean much. Yeah. But a graduate can say, yeah, I've come out of the school. Come out of the school. So the steps of graduation have to be. My final two questions, Gurudev. One is with the kind of work that you are doing, you're present in over 180 countries and something phenomenal happened. It was history created on American soil with the World Culture Congress. Are we going towards a more peaceful, sustainable Bhumi, or are we just going to witness so much more conflict? Even as we speak now, there are 3 or 4 wars going on. Correct. Anand, the world history, recorded world history of 6,000 years, you know what it says? Only 268 years in the human history have been there without conflicts. Without conflict. So if we have a few days in between here and there, we are lucky, I tell you. Conflict is part of the world. And our nature is to see, calm it down, douse it down, douse the fire. That's our nature. And we should continue to do it. See the World Culture Festival we had in the National Mall. Ji. It was though it's a cultural and spiritual event, 1.1 million people sat together, meditated 3 days. Wow. Did yoga. It was first time in the American history that so many people congregated. For India, million people is not much. But collective conscience, does that help? Definitely, it helped. You know what happened? That 1 week there was no homicide in the whole of Washington DC. Wow. Every day there used to be 2-3 killings there. In those 1 week there was no homicide, and the police were surprised by that. And they said, we have never witnessed a program that's so peaceful, where we had nothing to do. So that's the power of meditation. It can reform people, it can uplift the spirit. And more of that is necessary. I'm glad that our Home Minister introduced in India, Ghar Ghar Dhyan. Yeah, Ghar Ghar Dhyan. Yeah. This is really caring for people. घर घर में इतना क्लेश है, मानसिक तनाव है, उसको दूर करने के लिए which country really looks after that everybody should prevent mental illness? Tell me. So we have certain very good things in this country that we need to pay attention to. Of course, there are a lot of issues. I'm not saying it's all rosy. There are issues which we need to keep attending to. World also same thing. Conflicts keep rising, but we also see on the other side the good things are also happening. How are you able to keep politics outside of the spiritual realm, especially when events like 22nd January are going to happen? Everybody says it's all to just polarize votes for May 2024. My final question is, what should people do on the 22nd of January, and how are you able to keep these two aspects separate? See, 22nd January, Sri Ram Lalla Pran Pratishtha is happening. It's a moment of celebration. Actually, people were in a mood to celebrate when the judgment came at that time itself. And it is the wisdom of this
country, the government and our Prime Minister, to not to let that fire come along, and which would obviously would have hurt others. So people have been holding this wish to celebrate for so long, and now is the chance. 22nd January, now unleash that pressure that you have been holding in order to celebrate. There are 11 lakh Ram temple in this country. Yes, Prabhu. I said this when the judgment comes. If it has come amicably with everybody's approval, we should have a grand celebration everywhere. And it's very wise that now that celebration is happening, and also they have been called for cleaning the temple. This is also an occasion the Safai Abhiyan. To Safai Abhiyan. Temple should be clean. Every temple should be clean, and it's happening good. So I would say everyone should celebrate. Keep aside the politics for a little while. Later on you can take it. It's going to come anyway after a few months. But now be united. Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, Jains, everybody should come together, the whole world, because it's a moment of celebration after 500 years. True. Yeah? Sarva Dharma Samabhava. That's why the magic of art of living. Thank you so much. Thank you. Great conversation, Gurudev. Thank you so much, Gurudev. The battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green. A very good afternoon. You're watching CNN News 18's mega coverage on the Ram Mandir. I'm Akanksha Swaroop. Now, while preparations are in full swing in Ayodhya, the politics surrounding the Ram Mandir consecration ceremony has also been heating up in the past few months. And News 18's Amish Devgan has spoken exclusively with Samajwadi Party's chief Akhilesh Yadav on the Ram Mandir and the politics surrounding it in the News 18 conclave that's being held in Lucknow. Let's listen in to this exclusive. देश का माहौल, प्रदेश का माहौल राममय हो गया है। आपको ये राममय माहौल देखकर कैसा लग रहा है? मैं धन्यवाद देता हूं आपको। जो माहौल की बात आपने कही है जी, हालांकि आप लोग लगातार माहौल हो ना हो, लेकिन आप लोग माहौल बना के रखते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि माहौल ये जबरदस्ती बनाया जा रहा है या ये राम युग की शुरुआत हो गई है? क्योंकि 550 साल बाद राम लला अपने घर वापस आ रहे हैं। कल मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित देश का सबसे तेज चलने वाले चैनल को मैं रात को देख रहा था जी। तो जब उन्होंने माइक लगाया, एक नौजवान वहां आया हुआ था, जब उसके माइक लगाया उसकी तरफ, उससे पूछा कि आप अयोध्या आए हैं, क्यों आप आए हो? तो उस नौजवान ने बहुत सीधी सादी भाषा में कहा कि मैं गोंडा से आया हूं, मैं आपको देखने आया हूं। सोचो, न्यूज एंकर को देखने आया वो। तो माहौल बना के रखिए, लेकिन सवाल ये है जी, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं आज, ये देश का प्लैंड हाईटेक सिटी अगर सबसे बड़ा कहीं है तो वो आपके लखनऊ में है, जिसमें आज हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं जी। लेकिन अब तो अयोध्या का प्लान भी दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि चलिए राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट तो बन सकता था, रेलवे स्टेशन का तो विकास हो सकता था, सरकारें आपकी भी थी, कई सरकारें सपा की रही। क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर एक चूक हुई? मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि विकास को कोई नहीं रोकता, विकास के पक्ष में है। और जहां आपने एयरपोर्ट स्टेशन की बात कही है, एयरपोर्ट जरूर बना है, हवाई पट्टी पहले से थी, और इस पुण्य काम के लिए किसी ने मना नहीं किया।
वहां के किसानों ने भी नहीं मना किया, किसान भी आगे आए, लेकिन किसान की ये शर्त थी कि अगर इतने पुण्य काम के लिए उनकी जमीन ली जा रही है तो कम से कम 6 गुना सर्किट रेट का उन्हें मुआवजा दिया जाए। आपको ये सोचना चाहिए, क्या जिन किसानों की जमीन लेकर के वो एयरपोर्ट बना है, क्या इस पुण्य काम के लिए उनको इतना मुआवजा दिया गया? क्या आपने मुआवजे में भेदभाव नहीं किया? दूसरा, स्टेशन तो बनते ही हैं, बनेंगे, मुझे खुशी है कि उन्होंने स्टेशन बनाया, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी बड़े बड़े कथावाचक जी या रिलीजियस प्रीचर आए हैं जी, आप आज भी पता कर लीजिए, सब वहीं पर जाकर के अपनी बात रख रहे हैं जो कभी समाजवादी सरकार में बना था, एक स्थान बना था, भजन स्थल बना था, जहां पर आप परफॉर्म कर सकें, कह सकें। आज जितने लोग भी आ रहे हैं सब के सब जाकर के वहां अभी तक कार्यक्रम किए हैं। वहां अखिलेश जी, आपने बोला कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनने की आपको खुशी है, मंदिर बनने की कितनी खुशी है? नहीं, वो क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि कोर्ट के फैसले से बना है, और कोई भी हिंदुस्तानी होगा जिसको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, किसी भी धर्म का कोई भी बनेगा उसमें खुशी होगी, किसको खुशी नहीं होगी? तो पहली प्रार्थना राम के दरबार में क्या लगाएंगे अखिलेश जी? लेकिन खुशी के साथ साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा जी, अगर आप जाएं अयोध्या में जाकर के, आप यूपी में आए, तो क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल रहा है? एक अयोध्या के कार्यक्रम में एक नौजवान खड़ा हो गया और कह रहा है कि बताइए, मैं सीवी लेकर के घूम रहा हूं, अपना बायोडाटा लेकर के घूम रहा हूं, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी के लिए वेटर की नौकरी मैं करूंगा, मैं रेस्टोरेंट में जाकर के नौकरी करूंगा। आप अगर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कम से कम नौजवानों को सम्मान का रोजगार नौकरी तो दे दो। आप सम्मान का रोजगार नौकरी नहीं दे रहे जी। मेरा एक सवाल है कि निमंत्रण तो आपको भी मिला और आपने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है, निमंत्रण अस्वीकार करा, वो कहानी किस्सा क्या है पूरा? अगर निमंत्रण में भी राजनीति करेंगे, मुझे याद है आपके ही किसी साथी ने मुझसे पूछा कि विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े एक नेता ने आपको निमंत्रण दिया है जी, और आपसे मिले हैं। मैंने उसी समय कहा कि मुझे किसी से निमंत्रण नहीं मिला, न मुझे कोई नेता मिला है। तो जब उन्होंने जाकर के विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण देने नहीं गया था, मैंने कोरियर से भिजवाया। जब मैंने अगले दिन उनसे पूछा कि आपने कोरियर से भिजवाया, उसकी कम से कम रिसिप्ट तो दे दें, तो जब मैंने रिसिप्ट मांगी तो उन्होंने कोरियर से नहीं, अयोध्या से स्पीड पोस्ट से मुझे भिजवाया था। तो सोचो राजनीति कौन कर रहा था इस पर? जो लोग निमंत्रण में राजनीति कर सकते हैं, तो वो सोचो राजनीति और जगह क्यों नहीं करेंगे। And with that, let's now keep politics aside. Remember, a lot of rituals have been taking place since Tuesday in the run-up to the Pran Pratishtha consecration ceremony, which will be taking place on 22nd of January. And we will be telling you all about that's happening in Ayodhya in just a bit. पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण भला, राम सिया राम सिया राम। Before the Pran Pratishtha ceremony with golden bow and arrow, Ram Lalla's first complete look has finally been revealed, and today, following the purification of the temple's sanctum sanctorum with the holy water from the Saryu river, Vastu Peace and Anadivas rituals will also be performed. The original idols of Ram Lalla Virajman and his brothers will be installed in front of the new idol inside the Garbhagriha. On Monday, a floral ceremony is also scheduled at the newly built Ram temple. Uttar Pradesh is formulating a 6-month plan for the post-22nd of January period, anticipating a significant influx of daily pilgrims to Ayodhya.
A high alert in Ayodhya in view of the ceremony has also been issued. All entry routes of Ayodhya have also been sealed. A ban has been imposed on entry of vehicles of Ram devotees in Ayodhya from today. CNN News 18 continues to bring you ground reports from the Ram Nagari. The entire mood in Ayodhya is Ram sabke hai aur sabke liye Ram hai, and everybody is trying to bring in whatever they can to contribute to this big Pran Pratishtha ceremony. Prime Minister Narendra Modi is coming here on the 22nd of January, but before that, his home state is already here. There are 550 volunteers who have come in from Baroda, from where Prime Minister Narendra Modi was elected to Parliament in 2014. And what they brought with them is something very, very landmarkish. They brought flowers from various states as well. They have bought about 25,000 kgs of flowers, and these flowers have been sourced from as many as 7 to 8 states. And what they plan to do is they plan to decorate the whole of Ayodhya as well. A very, very well coordinated effort that you can see. Actually, there is a lot of people around, youth there. They've come in from Baroda. They want to actually decorate the whole town of Ayodhya, in a way make their own contribution as far as this Ram Mandir push is concerned. तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि अभी कुछ दिन में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। क्या तैयारियां अभी बच गई हैं? जोरदार तैयारियां चल रही हैं और लगभग सब पूर्णता की ओर है। जिसको कहते हैं फिनिशिंग टच, बस वही देना बाकी है। और ये फिनिशिंग टच केवल हमारी तरफ से ही बाकी नहीं है, ये समाज की तरफ से भी बाकी है, क्योंकि हर समय हर पल एक नई चीज देखने को मिलती है। आज सुबह कश्मीर के लोग आए थे, जो वहां की केसर लेकर आए थे राम लला के चरणों में अर्पित करने के लिए, और जो मुख्य यजमान हैं अनिल मिश्रा जी, उनको उन्होंने दिया। आज ही अफगानिस्तान की सबसे बड़ी नदी, वहां का जल आया है वहां उनके चरणों में अर्पित करने के लिए। और वहीं तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी शॉल आई है, जिसको 10 लोगों ने मिलकर दिन रात एक करके केवल यहां के लिए 10 दिन में तैयार किया था। यानी इस कार्यक्रम ने केवल देश को नहीं जोड़ा, गुजरात से लेकर और सुदूर नागालैंड तक सब तरफ से कुछ ना कुछ आया है। कई पॉलिटिकल नेता कहते हैं कि वीएचपी, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम, इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। या तो वो ना समझ हैं या वो बेईमान हैं। आखिर 500 साल हिंदू लड़ा है, तब कौन सी बीजेपी थी, तब कौन सा वीएचपी था, तब कौन सी आरएसएस थी। और इन लोगों को ये ध्यान में आना चाहिए, जब मंदिर के निर्माण का समय आया तो देश के 65 करोड़ लोगों ने मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग दिया। Alright, and with that, let's also get you the visuals of the Ram Mandir, which is all set for the Pran Pratishtha ceremony on 22nd. Those are the visuals we are bringing to you of the Mandir. As you can see, the walls have been heavily adorned with carving. We are also learning that Muslim artisans were also an integral part of the carving that's been done on the Mandir. These are the inside visuals that CNN News 18 is bringing to you. That is also the dome, as you can see, heavy carving done on the walls. And this is how the Ram Mandir has been beautifully decked up with flowers. As you can see, the horticulture department in Uttar Pradesh has very actively participated in decking up not just the Mandir premises but also all of Ayodhya. While most of Ayodhya Nagari has been in fact decorated with marigold, as you can see, there's a whole variety of flowers over here. I can see orchids, roses and even guldavlis, which of course, as we all know, are also a speciality of winters. And with that, let's quickly cut across to the News 18 conclave where KP Maurya is also addressing. Let's listen in. जो हमारा विरोधी भी है, चाहे वह राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, तो यह सारे के सारे लोग दिन भर में विरोध में ही सही राम का नाम अनेक बार लेते हैं। अभी कुछ देर पहले अखिलेश जी मंच पर थे, तो उन्होंने बोला कि राम की बात तो होती है, विकास की बात भी होनी चाहिए। वो भी राम के साथ हैं, वो श्याम के साथ भी हैं। उन्हें राम में कृष्ण और कृष्ण में राम दिखते हैं। देखिए, उनको विकास की बात, गुंडागर्दी करने वाले, माफियाओं का संरक्षण करने वाले, राम भक्तों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, वह राम और श्याम की बात करके जो गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बल्कि आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरह से इनकी भावनाएं, इनको भगवान को जैसे जनकपुर में
अलग रूप में सब देख रहे थे, लेकिन जो भगवान के रूप में देख रहे थे, भगवान उनको भगवान के रूप में दर्शन दे रहे थे। लेकिन ये उसी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि मंदिर अधूरा बना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? विपक्ष के कई नेता इस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। मुझे लगता है नेताओं को सवाल खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं है, और वही नेता इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विरोधी थे, जो कारसेवकों पर गोली चलाने को जायज ठहराते हैं, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बता करके शपथ पत्र देश की सर्वोच्च अदालत में दे करके आते हैं, वही इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर रामलला टाट से आज ठाठ से अपने भव्य मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं जी, तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनको इसलिए दर्द हो रहा है कि रामलला? वो कह रहे कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे, आपने बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बना दिया है उसको। ये दृष्टि दोष है। राम विरोध का एक अलग तरीका उन लोगों ने निकाला है। अगर भगवान सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, उस समय के उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में भगवान सोमनाथ के मंदिर के निर्माण जीर्णोद्धार का और फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देश के प्रथम राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो आज यह शुभ अवसर आया है, तो इनको क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां गर्भगृह है वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही। विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल खड़े करे हैं इसको लेकर। जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो स्वयं राम भक्तों की नजर में सवाल बनते जा रहे हैं। देश का विश्वास है, एक एक राम भक्त का विश्वास है। अयोध्या में जहां रामलला का जन्मस्थान है, जहां पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, वही मान्यता के अनुसार, और जो मान्यता है चाहे वो श्री रामचरितमानस के अनुसार, चाहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, चाहे जो अयोध्या धाम है उसके अनुसार, उसी मान्यता के अनुसार रामलला उस स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। और उसमें तमाम हमारे पूज्य साधु संत, बहुत सारे आचार्य महामंडलेश्वरगण, धर्माचार्यगण, बहुत सब विचार विमर्श करने के बाद पूरे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जहां पर रामलला विराजमान थे वहीं पर रामलला विराजमान हो रहे हैं। मैं तो कारसेवक के रूप में 6 दिसंबर को भी था, ढांचा ढह गया था। किस प्रकार से मेरे रामलला टाट अफसोस है, जो ढांचा ढहा उसका अफसोस है? कहे का अफसोस होगा, गर्व है हमको। लेकिन कई नेता कहते हैं कि मस्जिद गिराकर मंदिर बनाया गया। वो कलंकित ढांचा था, गुलामी की निशानी थी, और उसको कारसेवकों ने मिटा दिया। इसका हमें गर्व है, और मैं भी एक कारसेवक के रूप में वहां पर था, इसका भी मुझे गर्व है। लेकिन क्या आपको लगता है विपक्ष के नेताओं का इस पूरे कार्यक्रम का बॉयकॉट करना? अखिलेश जी के पास निमंत्रण आया, लेकिन उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, लेकिन बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा करके ये मोदी विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आए। 2024 में इनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप भाजपा का विरोध कर सकते हो एक दल के नाते, आप सबसे लोकप्रिय नेता का विरोध कर सकते हो क्योंकि वह एक दल की ओर से चुनी गई सरकार के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका विरोध करते करते भगवान श्री राम के विरोध पर उतर आओगे तो इसका जवाब राम भक्त भी देंगे, राष्ट्रभक्त भी देंगे। आपको लगता है 2024 के चुनाव में राम एक मुद्दा रहेगा? हमारे लिए भगवान श्री राम आस्था के, श्रद्धा के, विश्वास के केंद्र हैं। रामलला के मंदिर निर्माण का संकल्प हमारा 22 जनवरी 2024 का नहीं है। यह हमारा संकल्प हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में डंके की चोट से कहा गया था, जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, और जो भी करना होगा वह करके दिखाएंगे। और जो हम लोग उस समय नारा लगाते थे, सुगंध राम की खाएं, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यही विरोधी लोग कहते हैं, लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी की तारीख आ गई, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा रहे हो, राम भक्त तुमको ठुकरा देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शिवधाम जाएंगे आसाम में, और ममता बनर्जी भी एक मंदिर में जाएंगी। वो कहते हैं कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी मंदिरों में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। जो कभी रोजा अवतार की पार्टी छोड़ करके किसी मंदिर में शीश झुकाने नहीं जाते थे, आज उन्हें मंदिर में माथा टेकना पड़ रहा है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। एक सवाल कि
राम मंदिर को लेकर आपके परम मित्र असाउद्दीन ओवैसी की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग, आप जैसे लोग मस्जिदों को ललचाई भरी नजरों से देख रहे हो। अभी तो अयोध्या हो गया, आप काशी मथुरा पे शुरू कर दिए कहानी आप लोगों ने। ये काम तो जब भगवान सोमनाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, कांग्रेस उस समय देश में नेतृत्व कर रही थी सरकार का, अयोध्या मथुरा काशी तीनों मामला उसी समय एक साथ हल हो जाना चाहिए, या तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से 1947 में जो समस्या हल होनी चाहिए वो 2024 में जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब उसका समाधान हो रहा है, तब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम लला टाट से अब ठाठ में आ रहे हैं, और जो अभी तक ठाठ में थे अब उनके टाट में जाने का समय आ रहा है। लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ राम मंदिर जो है, जो राम मंदिर को लेकर राजनीति है, वो भी कम नहीं है। आप लोग क्लेम करते हैं, यानी बीजेपी क्लेम करती है कि राम मंदिर वो बनवा रही है। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण बड़ा, राम सिया राम सिया राम। जय श्री राम। Vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also if we can
We can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises. As the Grand Ram Temple rises, CNN News 18 gets you the biggest voices. Devotees in great number. I mean, we are thinking about 1,25,000 every day. From temple vision to execution, एक अनोखी शैली में बनाने की कोशिश की है। भगवान का दरबार में आप जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, एक अच्छी जगह पे हम लोग आए। from objections to obeisance. राम जी प्रतिष्ठित होंगे तो राम राज्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। This Ram Mandir, which has been a dream of people for so many years, is coming to a fruition. Thanks to everybody who made that happen, and I'm sure this means a world to multitude of people. The symbolism, the significance, all stakeholders choose CNN News 18. Brought to you by Walk till the Ram temple premises. These battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और ट्रस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, not non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also if we can
We can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk. Namaste, Jai Hind, and welcome, ladies and gentlemen. Building up to the Pran Pratishtha of Ram Lalla at Ram Lalla Virajman in Sri Ayodhya, we are also trying to talk and dive deeper into our own culture, our own civilization ethos, and this way of life, as the Honorable Supreme Court has called it, the Hindu way of life in Hindustan or in Bharat. Taking the conversation forward, let's try and understand what is the bedrock of our society and this way of life. Is it a belief system? Is it a knowledge system? Is it gender neutral, or is it patriarchal, or is it matriarchal? How does society define itself in its current shape, and how was it actually envisaged over the eons? Let's try and understand that. Swami Vijnananand is with us, scholar, और बहुत सारे आप कैप्स पहनते, पर अभी मैं आपको स्कॉलर पर ही सीमित रखूंगा. विज्ञानानंद जी, स्वामी जी, आभार. Professor Nachiketa Tiwari, professor at IIT Kanpur, is with us. And we also have Dr. Sonia, who's a PhD in Sanskrit, and she's also a professor at IGNU. आप पंडिता भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, so we've got some really enlightened minds with us. So let's ask. सोनिया जी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा. हाँ जी. हमारा जो ये वे ऑफ लाइफ है, is this gender biased? ये क्या पुरुष प्रधान है? बिल्कुल भी नहीं. इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने पुरुष शब्द ही लिया, जहाँ से ये संस्कृत का ये जो शब्द लिया है और जिसको देख करके केवल हमने एक मेल बॉडी तक ही इसको सीमित कर दिया है, इसी शब्द की ही जब एटमोलॉजी अगर हम देखते हैं वेदों में, पुरी शेते इति पुरुष, कि जो पुरी किसी शरीर में निवास करता हो उसको पुरुष कहा गया. तो शरीर में तो कोई भी आत्मा, तो वो चाहे किसी स्त्री फीमेल बॉडी में है आत्मा, वो भी पुरुष, और चाहे जो मेल बॉडी में है वो भी पुरुष है. तो जब आत्मा जिस शरीर में भी वास करे तो वो पुरुष हो जाता है. इस शरीर में पुरी में रहने वाला जो पुरी भी में रहने वाला, अच्छा, तो शरीर उसके लिए पुरी हो गया, घर हो गया. अच्छा, और जो भी ज्ञान परंपरा बोली गई है संस्कृत में, जहाँ पुरुष कह करके आया है, वहाँ पर वो उस एक चेतना जीवित उसके लिए कहा गया है. चाहे हम पुरुष सूक्त की बात करें, जिसमें कि पूरी एक सृष्टि प्रक्रिया के उदाहरण से बताया गया है कि पुरुष का शरीर ऐसा, तो पुरुष का शरीर केवल मेल बॉडी नहीं, तो बाइस्ड नहीं है अपना वे ऑफ लाइफ. तो पुरुष का मतलब ही आप ये कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट हैज कॉन्शियसनेस, तो ये शरीर एक बॉडी हो गया, लिविंग स्थान हो गया आत्मा के लिए, तो इसीलिए मैं पुरुष हूँ, इसलिए आप पुरुष, मेरा जेंडर मेल है, इसलिए मैं पुरुष नहीं. तो पुरुष शब्द आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. भाषा भी. ये जो सोनिया बताएगी, तो प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत का ओरिजिनल जो टर्मिनोलॉजी है, उसको सही तरीको न समझ करके बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और उसको अपने दृष्टि से मैनिपुलेट करते रहे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. तो असली डिक्शनरी छोड़ के अपनी डिक्शनरी निकाल ली लोगों ने, ऐसा आप कह रही हैं. बताइए. तो आप ये कह रहे हैं कि पुरुष का मतलब ही वो है.
पुरुष का मतलब आत्मा के लिए। हाँ। और जहाँ शरीर के भेद पर आकर के दोनों के कर्तव्यों में, कार्यों में जहाँ अंतर आता है, वहाँ पर अलग अलग भी बताया है कि महिला के लिए इस तरह के कार्य, या नर नारी पुरुष जहाँ पर वो एक शरीर पर आकर के सीमित हो जाते हैं, उस शरीर भेद के कारण जो उनके कार्य गुण या कैसे उनका वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अंतर तो आता ही है, उसका भी अलग से वर्णन है। पर तो फिर ये कहते हैं कि देखिए आपके शास्त्रों में लिखा है कि बेटियों को घर पे रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, आप विद्वान नहीं हो सकते। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये सही है कि गलत है? नहीं, जस्ट हियर ऐड करता हूँ मैं, सोनिया ज्यादा एक्सप्लेन करके, क्योंकि खुद गुरुकुल में पढ़ी है। देखो क्या आप है, भी तो पढ़े हैं हाँ, गुरुकुल मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है कि व्याकरण का एक नियम है, एक शेष है ना। जैसे सोनिया बाद में आपको बताएगी, पुत्रश्च इति पुत्रिश्च इति पुत्र, पुत्र और पुत्री दोनों को अगर आपको कहना होगा एक वर्ड में, तो कहोगे पुत्र से। क्यों कहोगे? क्योंकि पुत्र शॉर्ट है, पुत्री बड़ा है ना, तो व्याकरण का नियम है शॉर्ट से बोलना। तो पुत्र हमारे संस्कृत में जहां पर भी आता है तो वो इम्प्लाइड है कि उसमें पुत्री इंक्लूडेड है। तो इट्स नॉट दैट इट इज ओनली के मेल, इट्स नॉट द मेल, इट्स द संतान। हाँ, संतान के ऑफस्प्रिंग। कई बार ऑप्सिस, इंग्लिश में कह सकते हो ऑफस्प्रिंग के लिए, उसी के लिए में है। जैसे कई बार एक क्रिटिसिज्म होता है दैट शतपुत्रवती भव, हाँ, तो बोलते हैं कि वो मे यू बियर 100 sons, दैट ट्रांसलेशन इज इनएक्यूरेट बिकॉज देयर द वर्ड पुत्र 100 चिल्ड्रन है। हाँ, इट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 100 चिल्ड्रन। 100 चिल्ड्रन। इसका एक और चीज मैं बता रहा हूँ, गांव में चले जाओ, कोलोकियल लैंग्वेज में जैसे मैंने देखा है, हम लोग के पिताजी वगैरह कभी अपनी बेटियों को बेटी नहीं बोलते थे, बेटा ही बोलते थे। बेटा पंजाब में पुत्र, सभी जगह अभी भी बोलते हैं। उसका कंटेक्स्ट वही है कि उसके अंदर बेटी इम्प्लाइड है, अलग से नहीं है, उसको एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लोग जो आजकल इस तरह के जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इसको ना समझते हैं, वो इस तरह की व्याख्या करने लगते हैं। पर आप गुरुकुल में पढ़ी हैं? हाँ, मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया। शिक्षा तो एक ये भेदभाव होता है जो नॉलेज देने में कि आपको क्या सिखाया जाएगा और एक मेल को क्या सिखाया जाएगा। मैं पुरुष नहीं बोलूंगा आपसे मेल को क्या सिखाया जाएगा, इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिस्क्रिमिनेशन, आज वाला पक्षपात, ये शब्द नहीं कहूंगी मैं। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, दोनों के लिए अध्ययन क्षेत्र अवश्य अलग अलग होते हैं। हाँ। कि एक महिला को क्या पढ़ना चाहिए, उसके शरीर आधारित कुछ प्रायोरिटी अलग रहती हैं। अगर उसको उस दिशा में उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, स्वयं की भी इच्छा रहती है अगर वो दूसरे विषय भी पढ़ना चाहती है, तो कुछ विषय ऐसे हैं कि जो स्त्री अगर ज़्यादा जानती है, जिससे वो अपने शरीर का भी, स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकती है, और उससे आधारित जो भी उससे संबंधित हैं उनका भी वह ध्यान रख करके एक अच्छा समाज की ओर निर्माण कर सकती है। लड़कियां कमजोर हैं, लड़ नहीं सकती, ट्रेनिंग नहीं ले सकती। लेट मी ऐड हियर, क्या है सोनिया उसको समझ नहीं बता रही। देखो, हम व्याकरण पढ़ते हैं ना, हम भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, हम दोनों की व्याकरण पढ़ते, हम दोनों का व्याकरण अलग नहीं है। हमारा वेदांग जो है, दोनों एक ही पढ़ते हैं, हम दोनों वेदांग में हमारा अंतर नहीं है। हम उपांग पढ़ते जिसमें सौर दर्शन है, हम सब चीज वही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जहाँ लड़कियों का गुरुकुल है वहां पर घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, सभी चीजें हैं। कुछ चीजें मान लो अब जैसे है जहाँ नाट्य होगा ना, नृत्य होगा, तो हो सकता है स्वाभाविक रूप से लड़कियां ज्यादा उससे एक्सपर्ट होंगी ना, तो वो करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, है ना। आप समझ, इस तरह का है, सोनिया करे। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है तो सब एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा ही जैसे शुरू से ही वेद पढ़ना है, मैंने भी वेद पढ़ा है और व्याकरण पढ़ी है, जैसे स्वामी जी ने गुरुकुल, लड़कों के गुरुकुल में पढ़ा होगा, ऐसे लड़कियों के में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल ही पंडित बन सकते हैं, हाँ, शादियां सिर्फ मेल करा सकते हैं, महिलाएं नहीं करा सकती, ऐसा कुछ है हमारे इसमें रीति रिवाजों में? ऐसा कहीं लिखा है हमारे में लिखा? मैं अगेन वही मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर भी लिखा है पंडित का वर्णन है, वहां पर तो शब्द वही है ना, लेकिन हाँ, शब्द तो वही है, लेकिन जो ना समझ करके लोगों ने उसको कर दिया। जो पढ़ा हुआ है वो पंडित है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, वो सब करा सकते हैं। ये एक विशेषण बन जाता है उसका, जिसने अध्ययन कर लिया। अब वो जैसे कि हम कहते हैं दही जम गया कि दही जम गई, तो वो मेल और फीमेल होने से उस दही शब्द में अंतर नहीं आ रहा है, जो दूध चेंज होकर के दही तो दही है। ऐसे ही जिसने भी उस तरह की योग्यता प्राप्त कर ली है, वह पंडित है, वह
वह वो संस्कार करा सकता है। तो कोई भी पंडिताई का काम, जिसको विवाह संस्कार भी मैं भी कराती हूँ। तो आप कराती हैं विवाह संस्कार? हाँ, वो भी मैं कराती, कोई भी यज्ञ इत्यादि। इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि केवल पुरुष ही कराए। नहीं, पर आपको उसका ज्ञान होना। एक और करना जी, उसको बताना चाहिए। जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़े हैं, तो हम लोग डेली हवन करते थे, यज्ञ जिसको बोलते करते थे, ये लोग भी करते थे। कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन। तो यज्ञ आप भी करती हैं, हवन भी, डेली का नियम था। तो नियम ये कहता है कि जिसको आता है वो करे। हाँ जी, वो आता और आती में भेदभाव नहीं है। ये तो केवल कम्युनिकेशन में आ गया है। हम पुरुष शब्दों के साथ भी जब लिंग लगा करके बोलते हैं, उससे उसके यथार्थ अर्थ में अंतर नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हैं, तो यानी आप भी कह रहे हैं कि कोई आपको, अगर आपको ज्ञान है और आप जानती हैं, प्रक्रिया जानती हैं, विवाह करना जो करवाना आप जानती हैं, तो आप कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। और ये आपको कोई रोकता नहीं? कोई नहीं रोकता है। तो असली क्या हुआ, मुस्लिम पीरियड में जब अटैक हो गया, अटैक कहाँ से प्रॉब्लम हुआ मैं आप बता रहा हूँ। मुस्लिम पीरियड में अटैक होगा तो समाज में सिक्योरिटी नहीं थी। जो बता रहा हूँ, पुरानी परंपरा क्या थी कि लड़कों को और लड़कियों दोनों को यज्ञोपवीत किया जाता था। जनेऊ, उपनयन करने के बाद का नियम पुरानी परंपरा है कि आप उसको गुरुकुल में भेज देते हो पढ़ने के लिए, है ना। जिसको आज भी जब उपनयन होता है तो वहां होता है काशी गमन, है ना, काशी गमन, है ना, एक प्रकार काशी जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि समाज में सुरक्षा नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों ने हरम में अपनी हमारी लड़कियों को ले जाने लगे। तो हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, लड़कियों को यज्ञोपवीत नहीं करो। जब यज्ञोपवीत नहीं करोगे तो उनको भेजना नहीं पड़ेगा गुरुकुल। तो गुरुकुल बंद, उन लड़कियों के गुरुकुल बंद हो गए, सेफ्टी नहीं है, तो यज्ञोपवीत नहीं करोगे तो उनको। तो आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद हो गई? लॉ एंड ऑर्डर के अंदर से। तो अब जैसे वो तो आज भी हम देख रहे हैं कि स्कूल इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्यों? लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ तो बेटियां वापस स्कूल जा रही हैं ना। आप देख लो ना, कश्मीर में जा रही है ना, आज देखो क्या प्रॉब्लम हो गया। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये बताया गया सिर्फ बच्चों, बेटे का यज्ञोपवीत होता है, बेटियों का नहीं। आप ये कह रहे हैं मेरी बेटी है और मेरा बेटा, मैं दोनों का यज्ञोपवीत करा सकता हूं? आप जाके देखो, आप अगर देखो उत्तर भारत में तो कोई मंदिर नहीं है ना, सब टूट गए, सब मॉडर्न मंदिर हैं सब। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाओ, ऊपर गोपुरम पर मूर्तियां बनी हुई है ना जी, जो देवी देवता यक्ष बहुत सारे मूर्तियां बनी हुई। तो आप उनमें लेडीज मूर्तियों को ध्यान से देखो, उनमें सब में यज्ञोपवीत है, उपनयन है। इससे बड़ा है क्या होगा। और आप जो शिल्प शास्त्र वाले हैं, जो दक्षिण में उनको कहते हैं स्थपति, वो स्थपति के पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि आप जब ये मूर्ति बनाओगे तो उसके अंदर उपनयन होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सब चीज तो प्रमाण है। तो यानी अगर मैं अपनी बेटी का भी उपनयन करना चाहूँ तो कर सकते हैं, करना चाहिए। अब हम आज स्वामी जी मैं कहती हूँ कि स्कूल जाने से पहले बच्चे की मॉडर्न उसमें भी एक सेरेमनी करते हैं कि स्कूल जाएगा पहली बार उसको भेजने के लिए, जैसे बाद में भी सेरेमनी। तो ये भी यज्ञोपवीत संस्कार जो होना, उपनयन कि गुरु के पास पढ़ने से पहले की जो ये प्रक्रिया है, उसमें ये सबका ही होता था जो भी पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब उसका माता पिता भी तैयार है कि अब इसकी पढ़ने की आयु आ गई है, इसको भेजना है, वो संस्कार करके ही उसको भेजा जाता है। देखिए कई सारी भ्रांतियां आपने अभी 10 मिनट के अंदर आपने चित्त कर दी हैं। इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि आफ्टर 1947 हिंदू समाज में कितनी तेजी से जो एक्सपेंशन हुआ है एजुकेशन का, एंड द सोसाइटी एट लार्ज हैज नॉट हेजिटेटेड टू एजुकेट देयर गर्ल्स एट ऑल। और इसमें why is this attitude? In other societies, it took them hundreds of years to get to this state. अभी भी अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ है। देखो तालिबान के आते बंद हो गए। देखो हमारे यहाँ देखो, जैसी समाज ओपन हुआ, जो हमारा समाज सनातनी पौराणिक समाज, जो मूर्ति पूजा, जो इन सब चीजों में विश्वास, उन लोगों ने देखो अब सनातन धर्म कन्या विद्यालय सबसे ज्यादा है, करेक्ट है ना। तो उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया हमारे, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमारे समाज में इंग्रेन था। हम तो जिसको बोला ना लॉ एंड ऑर्डर के कारण से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइम, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट टाइम, जो में डेस्परेट टाइम है, तो उसमें डेस्परेट मेजर थे। तो कुछ हमने ऐसे डेस्परेट मेजर बनाए थे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खत्म हुआ, हमने तो ये कहने पिछले 1200 साल की ये विकृति है, उससे पहले हमारी प्रकृति में ये था कि हम सबको समान तरीके से शिक्षा दें। भाई उसी कारण से तो देखो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही देखो, इवन भले ही पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, हमने विमेन प्राइम मिनिस्टर बनाए, विमेन प्रेसिडेंट बनाए,
और कहीं आज तक अमेरिका में कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, मुझे बता दो नहीं, तो क्योंकि वो हमारे संस्कृति में ही So are we a belief system or are we a knowledge system? Nachiketa. So the fundamental fulcrum of our society is knowledge. It's knowledge. So you're saying Vidya and different forms. Knowledge. And it is embedded, this idea is embedded in the terminologies themselves. So you look at the Hindu society at large, and there are 4 parallel streams running. One is the Vedic stream. Yeah. The other one is the Bodh stream. The third one is the Jain stream. Fourth one is the Sikh stream. Now you look at these terms: Vedic, Ved, knowledge, Vidya, knowledge. Bodh, Gautam first acquired wisdom or Gyan, Bodh, and then he became Buddha. So the followers of Gautam should have been called Gautamists, but they call themselves Bodh because they are following the Buddhi and the understanding and the realization of Gautam Buddha. Consciousness, So enlightenment, yes. enlightenment, that's what they follow. Then you have this term Jain. It comes from this root Jin. And Jin is a person who has conquered himself or herself. How do you conquer yourself? I can conquer an outsider by beating you up, but I cannot conquer myself by beating myself up. So you have to know about yourself. Again, knowledge. So again knowledge. And then the fourth word is Sikh. Sikh, Shiksha. Kiski Shiksha? Shiksha of all the gurus which have been compiled in that book, Guru Granth Sahib. They don't call it Guru Granth book. वो उसको साहिब की संज्ञा दे रहे हैं. That knowledge is at the topmost level. It is the topmost level. This is a very fundamental difference. And then you compare this with other traditions. This has nothing to do with demeaning or other things. But then in other traditions you have beliefs. So if you believe in a particular system, you are a good believer. If you do not believe and you may have the best conduct possible, you are not a good believer. You're still a non-believer. You are a non-believer. Kufr. Kufr or disbeliever. Disbeliever. Non-believer. Non-believer. Infidel. So, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का अधिष्ठान ज्ञान है. और लास्ट पॉइंट बोलूँगा. हमारे एक शब्द होता है सच्चिदानंद. सच्चित आनंद. 3 उसके धातु हैं. सत, ट्रूथ. ईश्वर का एक रूप ट्रूथ है. उसकी अवेयरनेस जब आएगी वो चित्त है. तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, ब्लिस होगी. एंड यू कैन रियलाइज इट एवरी डे. जैसे मैं व्हेन आई सॉल्व अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, और उसके बाद मुझे कई बार बहुत खुशी होती है. और व्हेन आई सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, आई फील रियली हैप्पी. उसमें मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, यश नहीं मिल रहा है, कीर्ति नहीं, बट आई फील हैप्पी. इट कनेक्ट्स टू दिस आइडिया ऑफ सच्चिदानंद. That is what I want. नहीं, यहाँ पर ऐड करता हूँ. देखो हमारे यहाँ बार बार हर जगह, चाहे उपनिषद में, अन्य सारे ग्रंथों में, स्वाध्याय में प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, अध्ययन में प्रमाद मत करो. ये हमारा बेसिक चीज है कि ज्ञान जो है ना प्राप्त करने का हर समय प्रयास करते रहो, है ना. भगवान गीता में कहते हैं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते. ज्ञान ही है जो मुझे पवित्र करता है. तो उसके अलावा ऐसा चीज, इसलिए हमारा समाज पूरा ज्ञान के ऊपर आधारित, नॉलेज के आधार पर है. विद्या हम डॉग पर है जी. जिस तरीके से अयोध्या में राम लला के प्राण Bringing to you live visuals of Prime Minister Narendra Modi. As we know, he is currently making his southern reach in Tamil Nadu today, and he's just arrived in Rameshwaram. Earlier we know that Prime Minister was also visiting Trichy, where he visited the Sri Swaminatha temple, and today he's now in Rameshwaram to pay a holy visit to the Sri Ramanatha Swami temple. And as we all know, Prime Minister Modi's outreach to southern India is extremely significant, because through these temple visits that he's already made, not just in Tamil Nadu but also Andhra Pradesh, Kerala, Maharashtra, he's trying to unify the entire nation in the run-up to the grand Ram Mandir consecration ceremony, which will be taking place on 22nd of January. And this temple run of the Prime Minister is only as a part of the build-up to that grand Pran Pratishtha ceremony that will be taking place today. Prime Minister has reached Rameshwaram.
just a while ago. He's also all set to perform darshan and puja at the Ramanatha Swami temple. For more details, let's quickly go across to Purnima, who's joining me live on the newscast. Purnima, take us through what is Prime Minister's schedule now in Rameshwaram after his visit to Trichy. Well, as you can see, Prime Minister is en route to the Ramanatha Swami temple here in Rameshwaram, and this is you can see heavy police presence here. Prime Minister Narendra Modi right now is en route to this temple and is receiving a grand reception en route to the temple. As you can see, any time now Prime Minister will arrive. After Prime Minister reaches the entrance of the Ramanatha Swami temple, he will take a snan and then will be escorted inside. There will be a special puja and darshan, after which there will be Ram Katha in 8 different languages, following which there will be bhajans in different languages, and it will be in praise of Lord Ram. So this is the schedule of Prime Minister Narendra Modi. 3 hours after he reaches the temple, this is the plan of action, and then tomorrow Prime Minister will leave for Dhanushkodi, which is about 25 kilometers from Rameshwaram. So this is the plan of action, and this Ramanatha Swami temple here also has an Ayodhya Connect, a Ramayana Connect. The idol was made by Sita using sand when Hanuman had gone to the Himalayas to get the shivling. Because the auspicious time was in fact getting over, they started worshipping the linga, which is a form of Shiva, which was made by Sita using the sand. So and then when Hanuman brought it back, they were not able to move the shivling that was made by Sita. So the linga here was made by Sita, worshipped by Lord Rama, and that's the significance of this temple, and that's the Ramayana Connect. All right, Purnima, very interesting to have highlighted that bit about the Ramayana and the Ram Connect with all the temples that Prime Minister has been visiting of late. Do throw light on how this is also part of Prime Minister's very inclusive outreach that he's been making to southern India. We all know that Prime Minister, the Bharatiya Janata Party, whether it is also including the VHP and the RSS, their own base north of the Vindhyas has already been cemented, and in an election year now, what and how significant is Prime Minister's southern reach as far as visits to Tamil Nadu, Kerala or even Andhra Pradesh and Maharashtra are concerned? All right, we'll try and reconnect with Purnima, but as I was highlighting, Prime Minister has been making conscious efforts to sort of make that southern India outreach, and important to highlight that this is a perfect combination that has always worked like a winning formula for the Bharatiya Janata Party. When you talk about Prime Minister's temple runs, his spiritual sojourns as well, teamed with the kind of developmental schemes that the Bharatiya Janata Party has been launching. It has been expanding the canvas of its best-selling combination, which is a formula of cultural nationalism, which is teamed with a beneficiary bonanza, and all that, as we know, is also being made to seek a third term in office by running these 2 parallel mass outreach campaigns, and that is being fronted by Prime Minister Modi at the moment. Those visuals that we are bringing to you are live from Rameshwaram. Prime Minister Modi currently in a roadshow in Rameshwaram. He is all set to visit the Ramanatha Swami temple, as our correspondent Purnima was also highlighting that this is going to be another temple which also is going to be Prime Minister's homage to Lord Ram in the build-up to the grand consecration ceremony. Let me also tell you what Prime Minister's earlier schedule was. At around 11 a.m. Prime Minister participated in a program at Sri Ranganatha Swami Temple in Tiruchirappalli in Tamil Nadu just a while ago. Prime Minister also listened to various scholars reciting verses from the Kamba Ramayana in the temple. He was seen in a shawl and in a dhoti,
Vedic recitals happened. The Prime Minister, as you can see on the right side of your window, seeking blessings of Lord Vishnu, because remember, the Ranganatha Swami temple in Trichy is a temple devoted to Lord Vishnu, and the Ramanatha Swami temple, where he is now in Rameshwaram, is the one in fact devoted to Lord Ram. And at the Ranganatha Swami temple, Prime Minister Modi also was greeted by an elephant. He sought blessings of the elephant as well. As you can see, Prime Minister over there clad in a dhoti and shawl. This is a massive, huge temple where Prime Minister was, and now he's already in Rameshwaram. As I was highlighting earlier, we've seen Prime Minister make temple runs not just to Tamil Nadu, but as we all know, this is the third visit to Southern India that Prime Minister is making in just the last few days. Let's also tell you what's been on Prime Minister's agenda when we talk about the kind of hard-selling schemes that are also part of the religious cultural formula that's being pitched by the Bharatiya Janata Party. We've seen the BJP's focus on Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh. These are also states where, remember, the BJP picked up the least number of seats in the last two Lok Sabha polls. In Maharashtra this time, the BJP is going to be up against a united opposition. Of course, we know that seat sharing has also been a topic of discussion over there. Henceforth, the Prime Minister making conscious efforts to make a southern outreach to the south of India, as we know how the cultural popularity has sort of cemented the BJP, RSS, VHP base in the north of India. As you can see already, that's taking place, whether it is Rajasthan or states like Uttar Pradesh. We will also be witnessing on Monday the kind of clout that the BJP and the RSS, this entire Sangh Parivar, has in Ayodhya on 22nd of January, on the day of the consecration. But in fact, in the build-up to that consecration ceremony, we've already seen how those rituals are panning out, and the opposition's already been placed on the back foot with the kind of popularity that the Ram Mandir is already garnering, goes by the number of visitors that the Mandir is getting. It's in fact now a Mandir which has global appeal. People all over the globe have been following that. And so Ram largely has been viewed as a god which has more appeal in North India. But now, as you can see, Prime Minister is visiting all those temples, making an outreach to people from Southern India as well. We've seen how Ram has now become a pan-India figure. He's become a god which the entire nation has been worshipping. As we've seen how much the kind of contributions have poured in for the Ram Mandir. We've seen laddus come in from Hyderabad. We've seen all kinds of tributes coming in for Lord Ram from all over the nation. सनातनी है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं, सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में बहेंगे। बहुत अच्छी लाइन, कुछ लाइनों को जीना है। आप तो खुद शब्दों के बहुत धनी हो, और न्यूज 18 के जो एंकर्स को मैं सुनता हूं, मैं अमीश देवगन जी को भी सुनता हूं, सब लोगों को सुनता हूं। आपका एक जो है ना, वो एक लाइन तो हम सबको इस पे चलना है मेरे भाई बहन, कि राम की गंगा में हम सब बहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम की गंगा में बहना है तो समझ लीजिए मर्यादा की गंगा में बहना है। क्या बात है। राम की गंगा में बहना है तो सत्य की गंगा में बहना है। राम की गंगा में बहना मतलब प्रातः काल उठ के रघुनाथा, क्या बात। मातु पिता गुरु ना महिमा। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, आपको अपने माता और गुरु के पैर छूने की जो बात करते हैं, वो राम कैसे आपसे अलग हो सकते हैं।
जेही पर जेही कर सत्य स्नेहु, सोते ही मिला ही न कछ। वाह वाह वाह। राम जी कहे हैं कि जिस पे आपका सच्चा प्रेम है, वो दोस्त हो, वो जीवन साथी हो, वो आपको मिल के ही रहता है। तो राम की गंगा में हम सब बहेंगे, फिर तो सब कह सकते हैं कि राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहिए। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। बाबा बहुत अच्छे, बहुत सुंदर म्यूजिशियन बुला रखे हैं आप। हम लोग का और जो जोश आ गया, जोश और बढ़ गया। और आपको सुनाना होगा, ऐसे नहीं जाने देंगे इनको। नहीं, आपके आने से हमारा जोश बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो इनके लिए एक बार जोर से बोलिए जय श्री। नहीं, हमने हाँ, क्या बात है। देखिए एक बात आपसे बताऊं, तो खड़े हो गए तो खड़े ही रहते हैं। हाँ जी, ये ऊर्जा ऐसे निकल के आई है ना। खड़े हो गए तो खड़े रहते हैं। वैसे भी अभी रामलला भी खड़े ही हैं 5 वर्षीय। और क्या सूरत है। देखिए अभी गाना तो हम लोग पहले गा दिए थे, लेकिन गाने की एक लाइन ऐसा मिला है, हमने तो मूर्ति नहीं देखी थी। वो क्या लाइन है? भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी मूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। क्या बात है। अब एक बार और सुना दीजिए। ये गाना, ये शब्द हम लोग पहले गा चुके हैं, और मूर्तियां जब देखली हैं तो हमके लागल कि बाप रे, तो रामे जी लिखवा दिले बड़े। भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी मूरत जग में देखी। ये जो भैया गमछा ओढ़े हैं, जो टीका लगाए हैं, कुछ लोग इस टीके से भड़क जाते, कुछ लोग इस गमछे से सरक जाते। शायद सरक जाते शब्द ठीक नहीं है, कुछ लोग इस गमछे से सनक जाते। लेकिन याद रहे कि जो सूर्य का रंग है, जो अग्नि का रंग है, उससे कहां तक बच के जाओगे। बनाना होगा जब भोजन, इसी भगवे को जलाओगे। वहां कैसे बचोगे? आंच कैसे आएगी? सूर्य की आंच है, सूर्य की आंच या अग्नि की आंच। तो भगवा रंग पहचान हमारी, सूर्य अग्नि सम भगवा धारी, जितनी मूरत जग में देखी, राम लला की सूरत प्यारी। धर्म के मार्ग पे सब दुख सहेंगे, राम के थे जोर से राम के, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। राम के थे राम के हैं, हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी, पहले कहते थे दादी से, पहले कहते थे दादी से, दादी से कहते थे ना। दादी कहती थी बाबू
तनी रामायण सुना दो, तो हम दादी को रामायण सुनाते थे। अपने नहीं भी सुनना होता तो पढ़ते जाते थे। मंगल भवन मंगलहारी, नवमी तिथि शुभ मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित प्रिय बीता। सुनते थे? हाँ सुनते थे, पढ़ते थे। मध्यकाल अति शीतल घामा, पावन काल पावन जन्म लोक विश्व, दादी को सुनाते थे। अब दादी को भी सुनाएंगे। क्या बात है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं सोचता हूं कि इसमें कौन धर्म आड़े आता है? जो कहना है वही करना है। इसमें कोई धर्म आड़े आता है क्या? अब ये कोई अखिलेश जी को समझाए। अखिलेश भाई आए तो मेरी भेंट नहीं, मैं उधर मैं आज उनसे मिल लेता, क्योंकि हम लोग तो बीजेपी वाले हैं। हम पार्टी के नेता के आधार पे नमस्कार बंदगी बंद नहीं करते। जो लोग आज भटके हुए हैं, कल राम जी उनको रास्ते पे ला देंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रविशि नगरी की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत अच्छे, क्या बात। ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन लोगों के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत प्यारे हैं। देखिए हम लोगों ने जरा इसको एक चौथा काला दीजिएगा, 5 से 4 कर दीजिए। ये सुरों का युद्ध है। देखो, रामचरितमानस में एक शब्द आता है, और जैसे ही कहा शैलेश लोढ़ा जी आ गए। हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। स्वागत उनका। शैलेश जी सभा बांध रहे हैं, मनोज तिवारी जी राममय हो गए हैं, आप भी आ गए। देखिए राम युग में ये तो अभी तो हम लोग ऐसे ही, ये धुल और तिवारी ही थे, एक लोढ़ा भी आ गए हैं। और बिना लोढ़ा के राम जी का प्रतिष्ठापना नहीं हो सकता। तो हम इस भाव के साथ एक हम लोग गीत, जब जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बार जिस दिन शिलान्यास हो रही थी, तो मैंने उस दिन एक गीत गाया था, और मैं सभी लोगों को, जितने इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में बोलते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, कब जाओगे भैया? तो बोलते हैं हम उसके बाद जाएंगे। हमने कहा इसका मतलब आप राम जी की उस मूर्ति में प्राण नहीं डालना चाहते हो? वो कल भी नहीं चाहते थे कि राम जी की मूर्ति में प्राण हो, वो आज भी नहीं चाहते हैं कि राम जी की मूर्ति में प्राण हो। क्योंकि राम का मतलब मर्यादा, राम की मतलब सत्य, राम का मतलब राजा कैसा हो, राम का मतलब शिष्य कैसा हो, राम का मतलब संतान कैसी हो, सब कुछ है ना जी। और वो आदर्श भी है ना कि हम सबको भी वैसा ही होना चाहिए। हम, मेरे हिसाब से राम जी, आपने पूछा ना कि राम क्या है, हमारे लिए राम जी मानव व्यवहार की दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है, ऐसा मैं राम जी को देखता हूं। क्या बात, मानव व्यवहार की। इसीलिए हमने उनसे कहा, कभी एक बात कही, हम लोग आजकल एक भोजपुरी में गीत गा रहे हैं, अमित हो जाए या पांचवा नहीं, पांचवा, अच्छा पांचवा कर दो भाई। ये हरियाणा के हैं, मैं बिहार का, पूर्वांचल का, और मैं दक्षिण भारत का। आप दक्षिण भारत के। और हम लोग गीत गा रहे हैं, अरे अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आइल। आइल आइल आइल।
भोजपुरी। हाँ। कि अवध में बाजे खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने के आए, कई बरिसन के कठिन तपस्या राम भगतन के रंग है लाए। देश के राम राम के देश राम के महिमा बा न्यारी, ईंट ईंट पे राम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। और फिर आते हैं, ये आपके नाम में क्या लिखा है? अयोध्या पर्व राम युग। तो राम युग के बाद फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बाद फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बाद फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। अवध में बाजे अनक बधाई, घड़ी मंदिर दर्शन के आए, कई बरसन के कठिन तपस्या राम भगतन के वाले आए। देश के राम राम के देश राम के महिमा बाजारी, ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। और एक बहुत अच्छी लाइन है, पत्थर पत्थर पूजे वाला भू पर साज रहल बा। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहल बा। राम विरोधी की छाती पे डंका बाज रहल बा। राम विरोधी के छाती पर डंका बाज रहल बा। पत्थर पत्थर पूजन वाला भू पर साज रहल बा। राम विरोधी के छाती पर डंका बा। और एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण बा, कि हजारों रावण पे पड़ गईल, अकेले बजरंगी भारी। गाइए अब हमरा से। हजारों रावण पे पड़ गईल। सलेश भाई आइए पहले तो सलेश आइए। ये शैलेश लोढ़ा जी, हम लोग जब महाराष्ट्र में रहते थे तब से भैया को ये बड़े मित्रता निभाने वाले लोग हैं। चाहे इनकी ख्याति कितनी भी हो जाए, ये मित्रों को नहीं भूलते। तो हमने कहा है शैलेश भाई जी, कि हजारों रावण पे पड़ गईल, अकेले बजरंगी भारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। ओ हजारों रावण पे पड़ गई, अकेले बजरंगी भारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, जयकारा श्री राम लिखल बा। राम युग के बा फिर बारी, त्रेता युग के तैयारी। राम युग के बा। इस लाइन के साथ हम लोग एक लाइन और जोड़ रहे हैं। अब वो किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे। हाँ। किसके आभारी हैं हम लोग? भगवाधारी मोदी जी का सारा भारत आभारी। अब आप इसको भोजपुरी में गा दीजिए। भगवाधारी मोदी जी का सारा भारत आभारी। ईंट ईंट पे नाम लिखल बा, लोढ़ारा श्री राम लिखल बा। राम जुग के बा फिर बारी,
त्रेता युग के तैयारी, राम युग के फिर बारी, हमारे गुरुजी त्रेता युग के तैयारी। हमारे गुरुजी आए जी, हमारे गुरुजी भी हैं। तो आप हमें परम पूज्य रितेश्वर जी महाराज जी हमारे गुरुजी भी हैं। उसी समय आ गए। मनोज जी, अमित जी, आपने तो समा बांध दिया और इस समा को आगे ले जाने के लिए शैलेश लोढ़ा जी हमारे साथ अब यहीं रहेंगे आप। हम नीचे चलते हैं। हमने आपको बेटन थमा दिया, यहाँ से आप लेके जाइए। और देखिए सही बात है कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है। जहाँ जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है, उसी अयोध्या जाना है। बहुत जोरदार तालियां मनोज तिवारी जी के लिए, अमित धूल जी के लिए बहुत बहुत आभार और स्वागत कीजिए शैलेश लोढ़ा जी का। मेरा स्वागत तो आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मनोज जी भाई हैं, हमारे मित्र हैं, ये सांसद हैं, बड़े लोकप्रिय सांसद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कलाकार कितने गुणी हैं। तो मैं चाहता हूं वो मनोज तिवारी जो भीतर से अद्भुत गीतकार है, कवि है, गायक है, अभिनेता है और नेता है, न जाने कितने रोल कर रहे हैं, इनके लिए जरा जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए मनोज तिवारी जी। बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी। लेकिन आपसे अनुरोध है मनोज तिवारी जी, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर बने रहें, क्योंकि न्यूज 18 आपको धन्यवाद करना चाहता है। कृपया मंच पर बने रहें और उसके लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी अरुण पांडे जी को, सीनियर एडिटर न्यूज 18। मनोज जी आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारे, न्यूज 18 आपका धन्यवाद करना चाहता है। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम कल्याण वाला, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया कल्याण वाला, राम सिया राम सिया बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अयोध्या के वासी राम, रघुकुल के कहलाए राम, पुरुषों में है उत्तम राम, तो जोर से बोलो जय श्री राम। अयोध्या पर राम युग के संवाद में अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनके कई रूप हैं। वो कवि भी हैं, हास्य अभिनेता भी हैं और लेखक भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी शैलेश लोढ़ा जी का। कृपया मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। शैलेश लोढ़ा जी हमारे बीच में पहले से उपस्थित हैं और उनके साथ सेशन को आगे बढ़ाएंगे अमन चोपड़ा, सीनियर एडिटर न्यूज 18 और मेरी सहयोगी अपर्णा। जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत कीजिए। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया राम। A kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front, and this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है। दिस इज फ्री सर्विस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ राइड till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them in fact lined up here in the behind me just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting, the modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but I can see a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January when the temple opens for public viewing.
Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। अंदर ही चलेंगे? हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से Thank you for staying with our live and rolling coverage on the Ram Mandir. Now remember, as far as the consecration ceremony that's all set to take place on Monday is concerned, several invites have been sent to dignitaries, celebrities, intellectuals and seers as well. And my colleague Swastika Das spoke with Dr. Tony Nadar, a renowned neuroscientist and spiritual guru on Ram Mandir, and about being invited to Pran Pratishtha ceremony. Listen in. India has always been special to you. You've been visiting this country since 1978, I believe. Now, on the 22nd of January, there's going to be a historic moment with the inauguration of Ram Mandir. This has been a special ambition of you as well. Talk to us about that. Well, Ramayana for me has been not only a story, of course, it's a real thing, and it is real also on the level of the laws of nature. It's real on the level of the physiology. I've written a book about Ramayana, how it is actually part of our development and the human physiology. So for me, Ram is about Ram Raj. It's about creating like a heavenly life on earth. And what is that? That is when everyone is fulfilled from inside, independently really of the work they do. The Mandir is a symbol of Ram. If we take it only as a physical structure, then it has only that value. But if it is really to create a society in which everyone, no matter what their belief, no matter where they come from, no matter their education, are able to live their full potential and be happy in what they are doing, then we have created a heavenly life on earth. And that is the most attractive thing that every one of us has to aim at. Have you been eagerly waiting for this day, for the inauguration of Ram Mandir? Very much so, and I'm very honored to have been invited to attend, and we look forward to be there hopefully. And that's all I have for you in this newscast. Thank you so much for watching. Do stay tuned for all the latest news and updates coming in from Ayodhya. And with that, it's a wrap from my end. स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम सिया उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी, तो ये फ्री सेवा है। दिस इज फ्री सर्विस फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टेक अ राइड
till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January, when the temple opens for public viewing. Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है, और टेस्ट वाले और जितने श्रद्धालु आएंगे उनके लिए है, और वो अंदर ही चलेंगे। हाँ, अंदर ही चलेंगे। जितने लोग बाहर से आएंगे उनके लिए फ्री सेवा होगी। फ्री सेवा है जी। तो ये फ्री सेवा है. This is free service for anybody who wants to take a ride till the new Ram temple premises from January 23rd. These new battery carts, and there are many of them, in fact, lined up here in the behind me, just before the Ram temple entry, which will be used by pilgrims here to go to the Ram temple. And the battery carts also eco-friendly, non-polluting. The modern green vehicles which will be used, and it will be, I think, a pleasure to drive them also. If we can't drive them, but as I can see, a very, very comfortable ride for people who are informed, because it's quite a walk till the Ram temple, and people can easily go in this once these battery carts start running from the 23rd of January, when the temple opens for public viewing.
Behind me is the path which goes to the Ram temple premises, and if you don't want to walk till the Ram temple premises, these battery carts will now take you inside the Ram temple. This walk of almost a kilometer till the Ram temple will be easy with these new brightly saffron colored battery carts with Lord Ram's picture right in front. And this will the disabled, anybody who is not able to walk, anybody who's old, even normal people, if there is space, can take these battery carts and go right up till the Ram temple. And we have the excited people here who are waiting for them to start. They will start maybe by tomorrow. तो ये कहाँ से कहाँ चलाएंगे आप? जय श्री राम। तो कैसे मदद करेंगे लोगों की से आप? सर, हमारे स्टेट बैंक ने ये राम जन्मभूमि को दान में दिया हुआ है और टेस्ट वाले Namaste, Jai Hind, and welcome to yet another conversation around Ram Mandir for India, but with somebody who's not just a personal favorite of mine as an author, but he's also a lovely human being, and it's good to sit one-on-one and not via virtually. So, should I say Jai Shri Ram or Jai Baba Bholenath? Jai Shri Ram. Or should I say Namaste? Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. You must remember, Lord Ram was also a devotee of Lord Shiva. Lord Shiva. So, but let's start there. See, when you say Ram and Ravan, both were Shiv Bhakts, correct? And Ravan is counted amongst the foremost of Shiva Bhaktas. What was different between the two of them? Good question. I think one of the key differences was in the devotion that Ravan had towards Lord Shiva. There was a lot of ego. I don't know if you remember that story. There was one thing where Ravan decided that Lord Shiva should not live on Kailash mountain. He has to live with me. Yeah. In Lanka. Now, okay, there's some love and devotion in that. I don't deny that. But the arrogance, that he asked Lord Shiva that, you have to come. He said, no, I'm happy with my wife out here. He actually picked up that full mountain and was trying to, take it back. That's where the Shiv Tandav Stotram exactly. happened. Yeah. Now, that shows arrogance, right, in devotion. Whereas Lord Ram, I think one of the key traits that he had, despite such tremendous capability, was his humility and calmness. Think of the way he worshipped Lord Shiva at the Rameshwaram. The calmness and humility, that he had. I remember there was a documentary I was shooting once called Legends of the Ramayan, which was Ram Vangaman Path. And we stopped at Lanka, where again Lord Ram had prayed to Lord Shiva for cleansing him of the sins of killing all these people. Again, the humility that he had. And to me, that's something that we can learn from Lord Ram, the value of humility. So, Ravan had capabilities, but his ego was a curse to not just to those around him, but to himself also. Whereas Lord Ram, because he was humble, he was an inspiration to everyone around him. You spoke about the entire Ram Rath and the Ram Yatra, the whole thing from Ayodhya all the way to Sri Lanka, right? The Vanagaman and all of that. So, what did that convince you of? Was this a myth? Was this Kalpanik? Or is Ram real? Look, it's like this. Look, I'm not a scholar. We need proper scholars to research this. The real scandal is this has never been researched properly, right? But just as a lay individual, as a storyteller, as a public intellectual, whatever you want to call it, there are things that I found and that our entire crew found, which actually shocked us. Like, for example, you would have read also in the Valmiki Ramayana, Valmiki ji had said that in Chitrakoot there was an underground river. Now, when you read that, I'm sure you must have thought, at least I thought, कि यार underground river, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. What is this? We actually in Chitrakoot, we found a cavern with a river, with a tiny river, a stream flowing underground. And we actually shot out there. This there in the documentary, right? And you really can't. And then we got a geologist along, and he was trying to explain कि भाई पानी आ कहाँ से रहा है, जहाँ कहाँ रहा है. And there are various other things like this which showed that Valmiki ji was actually describing actual places. So is it Ram Setu or not? Well, actually we showed that in the documentary as well, and this was released a year and a half back. So, there are, like for example, we were told that there are stones which float. Correct. Right? On the sea. And again, everyone has stones that float, like, yeah, sure, I'm not really so sure. Okay, we found stones at Rameshwaram. Again, we had a geologist, right, out there, explaining it to us.
You've heard of coral, of course. Yes. You know, and when coral die, they dry up and become rocks. And because of the very nature of coral, they are very light rocks because they are porous inside, but they are very strong. Right? They can be load bearing. So in Rameshwaram, for example, this geologist took us to churches that had been built there during a colonial era, okay, where these stones had been used. And these stones were strong enough, they were load bearing for these churches. But they were so light that such a big rock, I picked it up, just like that. Okay. Right? And these stones are found only in that area. Now, the point is this needs scholarly research. That's all that I'm saying. There's enough things in there. So if churches were built, then it's Adam's Bridge. How is it Ram Setu then? That Adam's Bridge is very clearly, the British came up with that name. But the point is that parts of the Valmiki Ramayana, you can clearly see evidence of it. What I would request is scholars should study it and then tell us, that is this true or not. At least I find enough evidence to think that perhaps the core of the story was, it did take place, and to me I find that very inspiring. That Lord Ram, was in a way our ancestor, and we should be worthy of that blood. I find that very inspiring. As an author and someone who's diving into history, plus also doing a certain level of objective research, did you ever question this fact that why are Mahadev, Durga, Ganesh, Ram so integral to Bharat and also beyond? There must be kuch to reason hoga na? Have you ever been able to put a finger on? Because on the other hand, people would say, and from there we'll come into the book, the latest one, but people would say, this is all somebody's figment of imagination, you're just fanning the flames. How would you respond to that? Have you ever been able to put a finger on why these people and these deities, these entities continue to be among our consciousness and amongst our culture thousands of years down the line, if not lakhs? I'd made this speech recently at the Oxford University, in the Oxford Union debate. And we were debating, this is the same one that Dr. Shashi Tharoor had spoken at the British Rajwan. So there was a debate on whether God is a delusion or not. And I was obviously on the side saying, God is not a delusion. We won the debate. Not bad in Oxford University, quite left-wing place. You can imagine the audience. But the point that I made was that the Hindu conception of God is very different from the Abrahamic conception of God. And there is of course a Nirgun Nirakar God who exists outside of the universe. But we also believe that the divine comes close to us to work as a role model for us, to work as an archetype for us, to help us evolve. Because the true journey is for us to discover the divine within us. Correct. That's what it's the root of Aham Brahmasmi. And I am Tattvamasi. God, Tattvamasi, you are that. Or Namaste, I bow to the divine within you. This thought that there is a divine in every single one of us, and our spiritual journey is to discover the divine within, is at the heart of all the dharmic religions. And so therefore the gods work for us like role models. Lord Ram works on the role model of the Maryada Purushottam. Sita Ma works on a different role model. Lord Shiva works on a different role model. Lord Krishna works on a different role model, which is why they connect to us so much. Because all of us find the archetype that we get inspired by. So those of us who are slightly anti-elitist and rebellious, as I am, we naturally get attracted to Lord Shiva. And that is the path for us to discover the divine within. I think this is why all our gods and goddesses animate us so deeply. And it's also the reason why our culture has remained alive. This is the latest book. I've not plugged it in so far because we're building up to it. And he's called it Idols, but it's all about Murti Puja. Idols, Murti, Vigraha, Pran, Pratishtha. Many would say what's happening on the 22nd of January, a lot of them are calling it consecration, whereas it's not. The place is holy already, so it's Pran. So what's the difference? And why the need to write this? Look, consecration is a Western concept where a place is made sacred, right? And what is the philosophy at the heart of that?
that the universe, the world, is actually not sacred. It's a product of original sin. Because what is sacred, the divine, is outside of the universe. The earth is a product of the original sin. All of us human beings are carriers of the original sin. So consecration means at least this part you make it sacred. That's not the dharmic way. The dharmic way is that everything is already divine. You and I are divine. The animals, birds, trees, the earth, everything is already divine. So it's not that we make that place divine or we make the murti divine. We essentially bring the force of Lord Ram into that murti. And when you say that you are infusing life via particular vidhi and vidhan into a vigraha or into a murti and turning it into a vigraha, a living deity, but which is achal, it is one place. You mention it also in your book. So are you expecting people to take that jump and say, take it in the name of faith? Good question. Part of it can be you choosing to follow it on faith. Part of it is actually use real life examples. There are many of us who sadly may have lost one or both parents, right? Many of us keep their pictures with us at our homes and everywhere, and at least most Indian kids will not do something like smoking in front of their parents or drinking you won't do that. There are many you will find even in front of the pictures of their parents they will not do it, or they pass by the pictures of their parents or those they idolize and look up to. Could be their brothers-in-law, could be their father. They'll touch the feet. Now someone can say, bhai ye to picture hai, what's wrong with you, right? But your emotions are invested in that picture. You draw strength from that picture. It's your devotion which gives that divinity into that picture. Right? And what happens in a temple, in a vigraha, is that over centuries, millions of devotees put their faith, put their energy, their jagruti, their astha into that vigraha, into that murti. And then when you go out there, you get the benefit of that too. You'll find that there are temples you go to, for some reason, they just deeply just connect with you. There's no logic to it, it just does, right? Because it just happens that you resonate with that murti at that point of time. So there is that. So you're saying there is a science also in this, because the energies and the frequency match. That's a belief in the dharmic way. So, for example, this is school physics. You remember when an army marches over a suspension bridge, they break step. You know that, right? Yeah, correct. Why do they do that? Because when they are marching, if their frequency matches the natural frequency of the bridge will start resonating even more strongly. Right? And then the bridge might break, people will fall, now they may drown, etc., etc., right? It's the same thing with a murti. It's the same thing with being in love. You know, you meet someone and there's that strong resonance, right? वही इसलिए कहते हैं दिल के तार जुड़ गए. अब ये तार हैं कहाँ? वो frequency matching is a scientific. It's something that you just feel, right? So there's a Sankat Mochan temple in Kashi. I'm not the kind who cries very easily. But at the Sankat Mochan temple, the morning aarti is at 4:30. I just आंसू आ गया. It all just comes out. But you also say that a lot of our deities are vigrahas, Ishta Devata. So you lean towards or gravitate towards somebody and eventually even move on. So you hold on to somebody, but you also start to, it's happened with me personally. But you also say that this is perhaps a manifestation of some of our own qualities. Why do you say that? It's not just a manifestation of your own qualities. It's also what you're going through in life. Going through in life. Okay. My sister, for example, our entire family, we passed through very difficult 7-8 years in our personal lives. We lost a lot of people, some very tragically. It was a very, very difficult phase. And for all of us, bizarrely, the career kept going better and better. But the personal life, what is most important to us, we were really suffering. And there was no one to blame. It was just fate, hitting us. It's not that, that there was someone, we were fighting with someone or something. It's just cancer hits or heart. What do you do, right? There was this phase when my sister was
her husband, my brother-in-law, he fought cancer very bravely for 2.5 years, and my sister was very devoted to Lord Shiva, and for those 2.5 years, Mata was giving her peace, because she was just she was desperate, she was grief-struck, but she couldn't show anything in front of her husband, right? And they were both fighting, this terrible disease. She used to keep going to a Mata temple, and she would just cry continuously for half an hour. All her desperation, so the outpouring of emotion happened with Shakti. It was and like not with Mata Shiva. was just helping her, and then she would come back and then and get into the battle once again. And she said this, that her husband, she lost her, and we lost him in 2018, and then she found herself drawing back to Lord Shiva. It's like the Mother Goddess was there, and there was just, at that point of time, that is what she needed. And that's the entire point, that you get the God or the Goddess who can help you at that point of time. And if that gives you the strength to go through life, I don't see what's wrong with it. In fact, I find it something very beautiful. So the best part is you've written it in a very conversational style of family, from friends, doctors. So there is a scientist, there is a cop, there is a educator, husband, wife, all of this. Then they're it's written in very conversational style. But somewhere through the course, did you realize that there is a lot of science to our philosophy and also our faith? Because I remember Immortals had a yantra that you had used, and you make a mention of it here also, and I was wondering if it would be answered. So you've done a little bit of a plug of Amish also, it's smartly, but it's a balance. Our way of life was a balance of science and spirituality. You don't actually have to pick one or the other. And this is a paradigm that the West tries to thopo on everyone else. We need to reject that paradigm. It's not that you have to reject science to be a religious person, or it's not that you have to start breaking temples to prove that you're a scientist. That's kind of stupid. And in our way, you can find a balance of both. And it comes towards the end. It's not right at the beginning. It's towards the end. And the reason why we put this book as a conversation as well, because if we wrote it like a textbook quoting Sanskrit, it would just scare people, right? What happens with a conversation is that it just comes across to you in an easy, relaxed way. It's like a drawing room conversation. And you have also given chat breakers. Yeah. So yahan par I can also go get myself something and take a break from the book, internalize it, and then come back and sit down. Correct. And we followed what was actually the Upanishadic traditions. The Upanishads, practically all our Upanishads, are structured as conversations. They are not structured as textbooks. One, it becomes much easier to absorb. Secondly, you can show different points of view. Because in this, if you notice, we don't try and say this is the right point of view, you better believe it or you'll burn in hell. We don't make that point. There are different people expressing different points of view. You're working on a documentary. What is that about? And through the course of understanding the entire fight, struggle, etc., have you been able to figure out why is it that Ram Lalla has to prove his legitimacy even in the court of law in a Bharat that is steeped in Astha and respects all religions? Look, this documentary is essentially the story of the Ram Janmabhoomi temple from the beginning to now. So from the birth of Lord Ram till now. And we go through the entire piece and how different groups look at him from across castes, across communities, Hindus, Muslims, transgenders, right? The lessons were, for me, the following. One, the fact that it was proven in court. I think Chief Justice Bobde in our documentary put it perfectly, that this in a sense becomes a role model because there are other disputes like this across the world. I'm sure you're aware of the dispute of Hagia Sophia and various others, because remember there were pagan temples across the world, idol worshipping temples, they were all destroyed largely by European Christians and Turkic Muslims. And then there were fights between European Christians and Turkic Muslims, and things were, destroyed or built over. Now this is across the world. Yeah, even in Latin America, so many. These are wounds of history. And these wounds of history have to be addressed. If you address them through aggression and violence,
it just leads to an endless cycle of violence, counter-violence, right? But if you address them through truth, through proof, through debates, as was done here, then you hopefully solve that problem to the satisfaction of everyone. Because when the evidence proves it, even one of the litigants is convinced. Right? And you have a solution where everyone is happy. And we go through the court case as well in this documentary, all the evidence that was presented. And you'll notice that the people who presented the evidence on the side of Ram Lalla were Hindus and Muslims, by the way. K.K. Mohammed Saab, his work actually helped. And he made this very beautiful sentence in this line in the documentary, I'm paraphrasing. He'd said that I'm an Indian Muslim. Babar and Mir Baki were foreigners. What do I have to do with them? वो हिंदी में कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या. If you go there and stand, whether it is Gyanvapi, whether it is Ram Janmabhoomi, or whether it is Krishna Janmabhoomi, or even at Qutub Minar, Vishnu Stambha, it's all there. Point is, why does that have to be what is visible to the naked eye? Why does that have to be proven in